आउटस्टैंडिंग रहे। आजम खान की फॉर्म को अगर आप देखें तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ मैच विनिंग प्लेयर, और वो जो उसकी फ्लो बनी हुई है कि वट एवर इज रिमेनिंग ही फिनिशिंग्स द जॉब एंड दैट ऑल्सो इन स्टाइल। सो आई थिंक अनवर अली के आने से, जिस तरह कल वो आखिर में खेले, कराची के पास वहाँ पर पावर है जहाँ पर टीमें पावर ढूंढती हैं मिडल में। और एबटाबाद के लिए ये अच्छा है कि फ़खर जमान की फायर पावर के साथ, जो कि पिछला मैच बहुत आला खेले, दे हैव कामरान गुलाम एंड सजाद, टू अदर। एक तो नया लड़का सजाद ज़ाहिर है इस टूर्नामेंट की कह लीजिए कि फाइंड है एट द टॉप ऑर्डर, और कामरान गुलाम वी ऑल नो कि ही कैन पिक अप द पेस एंड कैरी ऑन लाइक दैट। तो दोनों टीमों के पास एक्स फैक्टर्स हैं। ये सारे प्लेयर्स हैं, अमाद आलम बॉल और बैट के साथ, दानिश अजीज, अनवर अली का आपने जिक्र किया। ऑफ कोर्स इनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे मौजूद हैं, इसलिए ये लोग हॉप स्किप एंड जंप करते हुए अपने फाइनल बेस्ट 11 को तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। अभी मेंशन करते हैं कराची वाइट्स के बारे में। होम टीम है और इनके पास ऑफ कोर्स जिस तरह की बॉलिंग कल सोहेल खान ने की, शाहनवाज ने जिस तरह से बॉलिंग स्टार्ट की, आरिफ याकूब हाईएस्ट विकेट टेकर मिडिल में हैं। उसके अलावा इनके पास दानिश अजीज का फैक्टर है जो कि अब पिछले कोई 3-4 मैचेस से विकेट्स लेके दे रहे हैं इनको। बिल्कुल, आई थिंक अगर हम स्पेसिफिकली कराची की बात करें बॉलिंग की, आरिफ याकूब हैज़ बीन अ रेवलेशन। बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं, फ्लाइट के साथ बॉल स्पिन करते हैं, और रॉन्ग वन भी बड़ी अच्छी है, और हमने देखा कि अभी तक बैटर्स उनको पढ़ नहीं पाए हैं क्लियरली। उसके साथ नंबर 1 पे वो हैं, तो नंबर 2 पे सोहेल खान है, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। और एक विकेटें धानी ने बहुत नहीं ली, लेकिन जो धानी अब बॉलिंग कर रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस में, लाइन लेंथ अच्छी है, द बॉल इज़ डूइंग अ बिट। जो पिचेस अब यूज़ हो रही हैं सिंस द नॉकआउट्स, उनमें पेस एंड बाउंस है, वो भी इनकरेजिंग है। और थोड़ा बहुत ग्रिप हमने देखा, दानिश हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव। वो आते हैं और वो कराची को फर्स्ट चेंज पे विकेट भी ले देते हैं, रन्स नहीं देते। सो आई थिंक कराची वुड फील वेरी कॉन्फिडेंट विद देयर बॉलिंग। ओके, अब बात करते हैं एबटाबाद की। एबटाबाद के पास भी है ऐसा फायर पावर। जॉइंट सेकंड हाईएस्ट शहाब हैं। शहाब की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है बॉल के साथ, नए बॉल से उन्होंने बड़ा कुछ करके दिया है इनको। फिर यासिर शाह का एक्सपीरियंस है उनके पास, हम बॉलिंग की अभी बात कर रहे हैं। फिर आई डोंट नो अगर खालिद उस्मान अवेलेबल होंगे कि नहीं, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन जो उन्हें यूटिलाइज नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी, शायद कामरान गुलाम भी कर सकते हैं बॉलिंग, बट देव लुक्ड गुड एंड एज अ यूनिट, ओवरऑल बॉलिंग यूनिट देव डन वेल। और जैसे कल उन्होंने पेशावर को टिकने नहीं दिया। देखिए, दे हैव ग्रोन टुगेदर एज अ यूनिट। शहाब जो है अच्छी बॉलिंग किया उन्होंने, बड़ा इम्प्रेसिव था कि लास्ट में जो यॉर्कर्स का उन्होंने प्लान किया ऑफ स्टंप से बाहर, और जिस तरह पेशावर को डेथ ओवर्स के अंदर उन्होंने रोके रखा, और आखिर में दे डिडंट लेट देम गेट टू द 220 जो एक टाइम पे लग रहा था, तो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। यासिर शाह फर्स्ट चेंज पे खुद आते हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं, विकेट भी लेते हैं। आई थिंक खालिद उस्मान खेलेंगे, अभी मैंने उन्हें वार्म अप्स में देखा एंड ही वाज डूइंग एवरीथिंग, सो ही इज फिट। अब फिटनेस का इशू नहीं है। सो आई थिंक दोनों टीमें काफ़ी इवनली मैच्ड हैं अगर आप देखें, और दोनों के पास 5 से 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन फॉर्म लग रहे हैं। हमने अभी जिक्र किया बॉलर्स का, तो फायर पावर बहुत सारी है दोनों के पास। हाईएस्ट विकेट टेकर आरिफ याकूब और जॉइंट सेकंड हाईएस्ट शहाब, दोनों मिले कुछ टाइम पहले महक से। वैसे तो कहा जाता है कि बैटर्स यूजुअली अपनी टीम के लिए मैचेस जितवाते हैं, लेकिन हमने जो हमारे साथ इस वक्त 2 बॉलर्स मौजूद हैं, उन्होंने हमें दिखाया है कि बॉलर्स भी अपनी टीम को मैचेस जितवा सकते हैं। 2 प्लेयर्स इस फाइनल के जो टीम्स हैं उसके बॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और दोनों जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर्स हैं। सबसे पहले शहाब, आप मुझे बताएं कि आपने कल हमें फाइवर लेकर दिखाया अपनी टीम के लिए, और आपने अपनी टीम के लिए बहुत आसान कर दिया था, उनके लिए सेटअप कर दिया था कि वो चेस आसानी से कर सकें। तो थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं कि थ्रू आउट इस नेशनल T20 में अपनी बॉलिंग की जर्नी के बारे में। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमीफाइनल के लिए तो हमने स्पेशल प्लान किया था, कोचेस के साथ एक दिन पहले मीटिंग किया था, बैठ के बात की कि यार इनके लिए कौन सी जगह पे बॉलिंग करनी है और कहाँ से इनको आउट करना है। तो ये मिल के प्लान किया था कोचेस के साथ, और उसी प्लान के हिसाब से बॉलिंग की तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अच्छा, आरिफ जो कराची के लीड विकेट टेकर हैं, आरिफ ये आपका पहला T20 नेशनल T20 है, लेकिन आपने ऐसे बॉल के साथ परफॉर्म किया है जैसे आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो। कल भी हमने देखा कि आपके बॉलिंग फिगर्स, आपने 3 विकेट्स लिए और सिर्फ 10 रन कंसीड किए, और उसके साथ साथ आते साथ ही आपने विकेट्स दी। तो आप अपना थोड़ा सा डिटेल में बताएं पूरे जो नेशनल T20 है, अपनी बॉलिंग जर्नी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं माशाल्लाह से हमारे ड्रेसिंग रूम में हम लोग की टीम में काफ़ी फ़र्स्ट क्लास और पाकिस्तान प्लेयर हैं, तो मुझे
इतना मुश्किल नहीं हुआ इस वजह से कि उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारे कोच ने और हमारे ये जो सीनियर प्लेयर हैं उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और कॉन्फिडेंस दिया, तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा इजी हुआ खेलना। और डेब्यू में मैंने 4 आउट किए तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और मैंने बाकी फिर एंजॉय करता रहा अपनी टीम के साथ। वेरी नाइस। चलिए आप दोनों के लिए अब एक आखिरी सवाल है। आज सबसे बड़ा दिन है, फाइनल का मैच है, क्रूशल मैच है, तो शहाब सबसे पहले आप बताएं कि आप अपनी टीम के लिए बॉल के साथ कैसे आज डिलीवर करना चाहेंगे, क्या प्लान है आपके माइंड में? बस प्लान तो सिंपल है, जैसे सेमीफाइनल में किया, आगे भी कोचेस के साथ फाइनल के लिए भी प्लान किया है और मैनेजमेंट की कोचेस की तरफ से फुल सपोर्ट है। वो बस यही कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो और बस प्लान के हिसाब से खेलो। और आरिफ, यही सवाल आपके लिए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बस सिंपल जो मुझे जो इस तरह टास्क दिया जाता है, जो हमारे कोच वगैरह बोलते हैं और कप्तान जिस तरह जो कंडीशन होता है उसके हिसाब से फिर प्लान करते हैं हम। चलिए, well, very well both of you so far and all the best for today. Thank you. One is 31 years of age, one is 23 years of age. I want you to choose who is who. Well, I don't need to because दोनों टीमों के लिए दोनों ही फुली फायरिंग है, दोनों आउट कर रहे हैं, दोनों चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, दोनों पोटेंशियल मैच विनर्स हैं। सो द गुड न्यूज़ इज दैट बोथ ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। दोनों एक आध 2 विकेट्स का फर्क है एंड आई थिंक आज जैसे हम नॉकआउट्स की बात करते हैं, आज फाइनल है, जो आज अच्छा खेलेगा दे विल बिकम द चैंपियंस, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, अब चलते हैं पिच नंबर 8 की तरफ। पिच नंबर 8 आज की वो पिच है जिस पे फाइनल खेला जाएगा, काफी प्रॉमिस है। चेकआउट करते हैं, शाह फैसल क्या बताएंगे। You could not have asked for a better evening for this big final. It's absolutely gorgeous here in Karachi. And for this big game, we got pitch number 8. But before talking about tonight's pitch, I have to give credit to the curators here. They have done a sterling job. They produced pitches day in, day out that provided plenty of entertainment. So hats off to them for their hard work. Coming back to this surface, it's an absolute beauty. There's hardly any cracks on it. There's no grass, if any. It's been rolled in quite nicely. It's a beautiful looking pitch. Just the first game of the day, so there's a hint of moisture, not a lot, but you consider the conditions will change in the evening like we saw last night. There will be some dew. So probably the captain that wins the toss will like to bowl first and chase when that dew comes, despite it being a pressure game and a knockout game. It's a bit tricky thing. We haven't seen any dew apart from last night in the Super 8 and then in the semi-final. So is it going to be dew today? We are not sure. There's a bit of breeze. You had to look at the pitch. What do you make of it? And then of course the info. I think definitely pitch में कोई cracks ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं. So that means कि compact है, tinge slight moisture कह लीजिए कि इसमें होगा. Early on हमने देखा रात में movement होती है, लेकिन अभी थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई. जब हवा चलेगी तो फिर dew नहीं आती, और अगर हवा बंद हो जाए तो फिर चांसेस है ड्यू आने का। इन्होंने स्प्रे भी काफी किया। ग्राउंड्समैन ने बताया कि they've done 2 rounds of spray, जो कि ड्यू स्प्रे कहलाता है, वाटर बेस्ड होता है, and it just helps the dew trickle down to the base and not affect the surface as much. But we'll talk more about that. टॉस के बारे में बात होगी तो ये अब obviously दोनों कप्तानों पे है what they want to do. Well, the lights are on, the camera is set, and we are all ready for the final battle for the trophy, where resilient Abbottabad will take on the home side, Karachi Whites. I've got the captains with me, Asad Shafiq leading Karachi Whites and Yasir Shah leading Abbottabad, alongside Iftikhar Ahmed, who will be officiating this match. You've got the coin? Heads is the call. It's tails. क्या करेंगे यासिर भाई? क्यों बॉलिंग करेंगे हम? बॉलिंग करेंगे। सरफेस थोड़ा सा रेस्टेड है, आपको लग रहा है कि अच्छा कैरी करेगा? ये कि यहाँ पे ये कि ड्यू फैक्टर भी आता है, क्योंकि कल मैंने देखा तो ड्यू भी बहुत ज़्यादा था, तो इसी वजह से पहले बॉलिंग और विकेट भी फ्रेश विकेट, तो इंशाल्लाह अच्छे होगी। थोड़ा ब्रेव कॉल है क्योंकि एक बड़े मैच में जो कि फाइनल है उसमें चेस करने जाना है, स्पेशली कराची के अगेंस्ट जिनकी बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रेटजी है? मेरे ख्याल में तो कराची की बॉलिंग और बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल बैटिंग स्ट्रेंथ है उनकी, तो कोशिश हमारी यही है कि इंशाल्लाह 160 की डिपेंड करें, उनको 160 तक आउट करें, तो इंशाल्लाह करेंगे। फास्ट बॉल इज सॉर्टेड एंड थोड़ा सा लगता है कि स्पिनर्स में मिडिल ओवर्स में प्रेशर आता है आप लोगों पे। ये कि यहाँ पे बॉल ग्रिप होता है, नए बॉल पे तो स्पिनर्स का बॉल ग्रिप होता है, बाद में फास्ट बॉल अच्छी बॉलिंग करते हैं, हमारे फास्ट बॉल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। चलें, ऑल द बेस्ट। कोई चेंजेस है आपकी साइड में? खालिद उस्मान खेल रहे हैं आकिब की जगह, एक चेंज। थैंक यू। थैंक यू।
ड्यू फैक्टर को देख के और फाइनल को देख के हैप्पी हैं बैटिंग फर्स्ट में? जी बिल्कुल, देखिए हमारा भी यही प्लान था कि अगर हम टॉस जीतते तो हम लोग पहले बॉलिंग करते, क्योंकि ड्यू फैक्टर हम जो कल भी मैच खेले हैं उसमें भी उसने अपना पार्ट प्ले किया है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद द बैटिंग फर्स्ट एज वेल, क्योंकि बड़ा अच्छा सरफेस लग रहा है और फाइनल एक प्रेशर गेम होता है। अगर अच्छा टोटल हम करते हैं तो ऑब्वियसली अंडर प्रेशर फाइनल में खेलना आसान नहीं होता। एबटाबाद के फास्ट बॉलर्स अर्ली ऑन अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपकी बैटिंग पे नजर डालें, पावर प्ले उस तरह जा नहीं रहा जैसे आप चाहेंगे बैटिंग में? जी बिल्कुल, एक दो मैच ऐसे हुए हैं जिसमें उस तरह से पावर प्ले जो है वो नहीं गया है जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे अपने प्लेयर से। लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो अपने डे पे और अपने टाइम पे जो है वो कोई भी मैच चेंज कर सकते हैं और पैचेस में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इशू है, लेकिन आज के दिन नया दिन है, नई टीम है, नया मैच है, तो आई होप कि आज जो है वो हम अपना बेस्ट प्ले करें। स्पिनर्स अच्छे हैं आपके पास, थोड़ा सा लगता है कि वो अंडर यूज हो रहे हैं बॉलिंग, पेस बॉलिंग की वजह से? नहीं, कल जिस तरह का मैच था जो मैंने आपको बात की कि ड्यू फैक्टर था तो उसकी ऐसे बॉलर्स को ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी, तो मेरी बात हुई थी फास्ट बॉलर का, फिर थोड़ा स्लो वन चेंज ऑफ फेस जो है वो अच्छा काम कर रहा था, तो हम इसलिए हमने फास्ट बॉलर्स पर ज़्यादा लाइक किया। फ़खर जमान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी उनके अगेंस्ट? जी बिल्कुल, फ़खर है जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, जैसे बैटिंग करता हुआ है, बड़ा अच्छा प्लेयर है। लेकिन हमारे पास जो बॉलिंग है, जिस तरह सोहेल खान बॉलिंग कर रहा है, शाहनवाज दानी एक्सपीरियंस बॉलर है और ये अपने डे में किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। कोई चेंजेस आपकी साइड में? नहीं, हमारी कल वाली सेम टीम खेल रही है। All the best, thank you so much. Well, the news from the final is that Abbottabad has decided to ball first. चलिए देखते हैं, नजर डालते हैं इन दोनों की टीम्स पर। और अभी बताया कराची वाइट्स के कप्तान ने कि कोई चेंज नहीं है, जो कल सेमीफाइनल खेली टीम वही है और इनको आज ऑफ कोर्स पहले बैटिंग करनी होगी। देखिए सभी चिप इन कर रहे हैं इस टीम में, तो क्यों चेंज करेंगे? आई थिंक यही उनकी बेस्ट 11 है, इसी में प्लेयर्स इन फॉर्म है, उनके मैच विनर्स हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट बैकिंग ईच अदर। और अगर एबटाबाद पे नजर डालें तो एबटाबाद ने एक चेंज किया है जो एक्सपेक्टेड था और अच्छी बात है कि खालिद उस्मान फिट हो गए। देखिए ये इनके एक मेजर प्लेयर हैं, विद द बॉल विद द बैट, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं और इनका वापस आना डेफिनेटली इनके एक्सपीरियंस में भी एज मिलेगा और मिडिल ओवर्स के जो स्पिनर्स की बात की वहाँ पर भी बड़े हैंडी हो सकते हैं। और फ़खर जमान आपको मालूम है कि वो पिछले मैच में जिस तरह की फॉर्म दिखाई है तो कराची चाहेगा कि वो ज़्यादा देर रुके नहीं विकेट पे। तो अब क्योंकि फैसला कर लिया है चेस करने का और ड्यू को काफ़ी जो है इन अकाउंट लाया जा रहा है दोनों कप्तानों की तरफ से, फाइनल है, क्या लगता है कराची क्या रखेगा माइंड में, कितने स्कोर करें? पहले बैटिंग आ गई है। आई थिंक दे वुड लव टू स्कोर अबव 170 रन्स एट लीस्ट, क्योंकि ये ठीक है फाइनल है, बट देन कीपिंग द ड्यू इन माइंड यू हैव टू थिंक अबाउट एन एक्स्ट्रा 20-30 रन्स, क्योंकि ड्यू में इतना फर्क पड़ता है, फील्डिंग में भी पड़ता है, जैसे उसने असद ने कहा बॉलर्स के ग्रिप में मसला आता है और बैटिंग आसान हो जाती है। खुर्रम मंजूर रमाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। खुर्रम ने कल ऐसा लगा पावर प्ले में ही 178 बनाने वाले हैं वो। अच्छा स्टार्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। आई थिंक पहले 6 ओवर्स, क्योंकि यहाँ पे बॉल मूव अराउंड भी करता है, तो अगर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं तो बाकी बैटिंग के लिए आसानी हो जाती है। चलिए सलमान, थैंक यू सो मच एंड इट्स बीन वंडरफुल हैविंग यू with me on the show before the start of the game. Is down to the final and may the best team win and we'll take you guys upstairs. फाइनल टाइम इन कराची। क्या कराची जो पिछले 2 दहाई से इस ख्वाब को देखता आ रहा है, 5 मरतबा फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा है, नेशनल T20 टाइटल को जीतने का, वो अगले 3 घंटे के बाद इस ख्वाब को पूरा कर पाएगा, या फिर एबटाबाद जो कि पहली मरतबा इस लेवल की क्रिकेट तक पहुंचा है, जिसका ख्वाब इनके शहर के लोगों और आसपास मर्दान, सवात और इस पूरी वादी ने देखा है, क्या वो पूरा हो पाएगा? ये सब आज आप तक पहुंचेगा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां पर यासिर शाह की क़यादत में एक शानदार कारकर्दगी दिखाई है इस नौजवान टीम ने पहुंचने के लिए, और उससे पिछली रात में पेशावर की जगरनॉट को शिकस्त दी है और उसके बाद अगेंस्ट ऑल ऑड्स इस फाइनल तक क्वालिफाई करने में कामयाब रही है। और अगर कोई एम्बॉडीमेंट है इस नए डोमेस्टिक सिस्टम को, पुराने रीजन को दोबारा से अपने गले से लगाने की, तो वो एबटाबाद है। लेकिन उसके साथ साथ खुर्रम मंजूर जिन्होंने ठंडा गर्म, तेज़ धूप, गर्मी, दुनिया भर की बैटिंग, ये सब कुछ करके देखा है। 140 मैचेस ये T20 में खेल पाए हैं, 4000 के करीब इनके रन अप्रोच कर रहे हैं, 29 50s और 4 सेंचुरीज इन्होंने इस पूरे प्रोसेस पे बना रखी हैं। घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन आज कराची के इस ख्वाब को पहली मरतबा पूरा करने के लिए उनकी कारकर्दगी अहम रहेगी। कल राइट फ्रॉम द गेट गो उन्होंने तेज़ खेलने की कोशिश की थी। और दूसरे एंड पे मौजूद हैं नौजवान अम्माद आलम, जिन्होंने इस सीज़न में वेल एंड ट्रूली अपने आप को इस्टेब्लिश किया है ओपनिंग बैट्समैन और एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ। 13 मैचेस में अब तक इन्होंने 300 से ज़्यादा रन्स बनाए, 2 50s हैं
लेकिन जब ये कवर्स की जानिब स्ट्रोक खेलने के लिए जाते हैं तो कराची क्या दुनिया रुक सी जाती है। दूसरी जानिब आएंगे एबटाबाद की जानिब से बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए इमोशनल और नौजवान और एक परफेक्ट पोस्टर बॉय एबटाबाद की, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि उनकी यूथ के लिए, आदिल नाज, जिन्होंने इस 21 साल की जवां उम्री में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है और गेंद को वो खास तौर पर राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर की जानिब लाते हुए और अपने बाउंस से मुतासर करते हुए दिखाई देते आए हैं और आज एक मरतबा फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 12 मैचेस में अब तक 12 विकेट्स हासिल कर पाए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है और एक नई टेक ऑफ वो अपने करियर को दे सकते हैं इस मैच में खेलने के बाद और एबटाबाद के लिए एक अच्छी कारकर्दगी दिखा के। तो सब कुछ सेट है फाइनल के लिए। एम्पायर इम्तियाज इकबाल ने पीछे जाने मुड़ के देखा है जहां पर कराची अपनी आखिरी चंद चीज़ों को तरतीब के साथ वापस लेके जा रहा है, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में भी सब कुछ तैयार है और मेरे साथ मौजूद हैं मरीना इकबाल। शुक्रिया अकील। अच्छा मैच होगा ये एबटाबाद के लिए, ऑब्वियसली पहली दफा फाइनल्स में आए हैं। कराची बहुत एक्सपीरियंस साइड है, लेकिन पावर प्ले जो है वो काफी हद तक डिफाइनिंग मोमेंट रहेगा। खूबसूरत मूवमेंट हासिल की पहली गेंद पे खुरम मंजूर ने कल आते ही एक प्लान के तहत खेलने की कोशिश की थी जिसमें वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे पावर प्ले को अपने हक में मोड़ने की, और आज क्या स्ट्रेटजी है ये शायद अगली 3-4 गेंदों में यहाँ हो जाएगी मरीना। बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग हम देखते आए इन दोनों नौजवानों की जानिब से, आदिल और अकील आकिब जो हैं वो दूसरे एंड से आई एम श्योर कि शेयर करेंगे नया बॉल। एक्सपीरियंस इनके पास भी बहुत ज़्यादा है, इस टूर्नामेंट में 12 मैचेस खेले हैं, उस तरह पोटेंशियल दिखा नहीं पाए, लेकिन आज फाइनल है, बड़ा दिन है। एक और मरतबा अच्छी मूवमेंट और ऑफ द विकेट उन्होंने शानदार अंदाज से मूव किया, बल्कि दूसरे एंड पे पकड़ लिया था, ऑलमोस्ट डाइव ना लगाई खुरम मंजूर ने, लेट स्टार्ट किया था, माद आलम की कॉल थी, इन दी एंड पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन पहले रन के लिए बहुत रिस्क लिया खुरम और कराची ने। अहमद खान फील्डर थे और मेरा ख्याल अगर ये डायरेक्ट हिट हो जाती तो शायद खुरम मंजूर सीधा डगआउट आ जाते, क्योंकि बल्ला उनका बहुत दूर था, हवा में था, बहुत बड़ा मार्जिन था, बहुत बड़ा मार्जिन था, एक बड़ा झटका लग सकता था कराची को, क्योंकि ये बैड कॉल थी, अच्छा जज नहीं किया था इस रन को खुरम मंजूर ने। स्क्वेयर को थर्ड मैन पर प्रोटेक्शन लिया, माद आलम के लिए कवर्स खुला पड़ा है, खतरनाक अंदाज से चेस करने के लिए गए थे, इस मरतबा गेंद नीचे रही तो वेरी रहना पड़ेगा बैट्समैन को 2 बाउंस के लिए, जो कि इससे पहले माद आलम अच्छा पसंद करते हैं गेंद को पेस के साथ अपने बैट तक लाना। इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि जैसे मैं बात कर रही थी, आदिल बहुत अच्छी बॉलिंग इन्होंने पिछले मैच में भी की, अच्छे रिदम में अच्छी लाइन और लेंथ को हिट कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात जो प्लानिंग कप्तान ने दी है उन्हीं लाइंस के ऊपर उन्हीं फील्ड प्लेसमेंट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये इम्तिहान ज़रूर रहेगा अहमद, खुरम और अमाद के लिए। जी हाँ, शॉर्ट फाइन लेग पे फियाज मौजूद हैं, साथ फखर जमान स्लिप पे, लेकिन इसकी वजह से कवर्स का रीजन ओपन है और अमाद पसंद करते हैं वहाँ पे ड्राइव करने के लिए, लेकिन ये प्रेशर वाला गेम है और अमाद अपने आप को आधा तो एस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जहाँ पर उनको शायद ये चांस मिला है, अगर साइम अयूब इस टीम का हिस्सा होते तो अमाद आलम को यहाँ पर खेलने का मौका ना मिलता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप कितने तैयार रहते हैं, इसकी जीती जागती मिसाल है अमाद, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 50s बनाई हैं, यहीं से अपने आप को ट्रूली इस्टेब्लिश किया है, 300 से ज़्यादा रन उन्होंने इस टूर्नामेंट में गैदर किए हैं, एवरेज भी अच्छा और स्ट्राइक रेट कमाल का, और ख़ास तौर पर अगर आप कवर्स की जानिब शॉट देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। लेकिन दूसरी जानिब बादल नाज का ये पेस और स्विंग है, शानदार बॉलिंग, कप्तानी की भी दाद देनी पड़ेगी, जेन्युइनली ये इन स्विंग करते हैं आदिल और अच्छी लेंथ से कर रहे हैं, रूम भी नहीं दे रहे, अच्छी मूवमेंट इन्हें मिल रही है। सरफेस की बात हुई थी टॉस पे, यासिर ने कहा कि अच्छा सरफेस लग रहा है, इम्प्रोवाइज और एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे इसके ऊपर से अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ्स को देखते हुए, तो ये अच्छी कप्तानी है एक बैटर के लिए। अगर आपने एक गैप छोड़ा हो जो उनका पसंदीदा हो तो वो एक इच ज़रूर रहती है कि मैंने यहाँ से शॉट खेलनी है, और आसान नहीं होगा इन स्विंग बॉलिंग के अगेंस्ट वो शॉट खेलना। बेहतरीन ओवर, राइट ऑन टारगेट एबटाबाद के लिए आदिल नाज का, एक बिना किसी नुकसान के कराची। तो 62 मैचेस की ये कशाकशी, जिसके बाद फाइनल तक हम पहुंचे हैं, 2.5 हफ्ते तक ये मुकाबले जारी रहे और आज क्लियरली अब तक का सबसे बेहतरीन क्राउड है और मजीद बहुत जगह मौजूद है नेशनल बैंक स्टेडियम में। और अगर आप दाखिले के वक्त मरीना नोट करती हैं, अभी भी बाद में अगर आप बाहर जाके देखते हैं तो अच्छे लोगों की तादाद की आमद मुतवक्के है, जो कि कम से कम 3-4 हज़ार तक होनी चाहिए।
परफेक्ट कंडीशंस हैं। आजम लोकल फेवरेट हैं जिन्होंने कल के दिन जिस अंदाज से बैटिंग की, और फिर फ़खर जमान का आना बाकी है। एक अच्छा मुकाबला मुतवक्के है इन दोनों फाइनलिस्ट के दरमियान। और दूसरी तरफ से खालिद उस्मान लग रहा है कि बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं, जो कि एक और इंटरेस्टिंग कॉल है यासिर शाह की जानिब से। आई थिंक अच्छा होगा ये, क्योंकि स्ट्रगल करते हैं आ रहे हैं। खुर्रम उठाकर खेला है पहली गेंद पर खालिद उस्मान के खिलाफ, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। ये इंटरेस्टिंग कॉल है। खालिद उस्मान को ना सिर्फ एक आज टीम में शामिल किया, बल्कि दूसरे एंड से यूनिवर्सिटी रोड से वो पहले ओवर फेंकने के लिए भी आए। विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, बहुत टर्न नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा कि अमाद आलम कैसे देखते हैं। स्किड होता है इनका, बॉल एंगल से बॉल करते हैं, क्रैम्प करते हैं, रूम अवेलेबल नहीं होता। एक्सपीरियंस बहुत है और इसीलिए फाइनल के लिए इनको ऑप्ट किया आज। बैकफुट एक दफा फिर इसको कुछ देर हवा में खेले थे। अब्बाबाद की टीम में ये वाहिद तब्दीली है जो कि खालिद उस्मान की सूरत में आकिब असीम का ऐसा नहीं है। और फाइनली हाथ खोलने का मौका मिल गया, डांस किया, बैकफुट पे रवाना किया गेंद को पहले चौके के लिए। दिल का शॉट खुर्रम का, फाइनल का पहला चौका। ये एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते आ रहे थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज नया दिन है और ज़रूरत है खुर्रम की। लेकिन बैकफुट पे हल्का सा रूम जरूर क्रिएट किया था क्योंकि एंगल से बॉल करते हैं, लेकिन लाजवाब टाइमिंग। फिर रूम बना के खेलने के लिए गए, लेकिन अब टाइमिंग का फुकदान रहा। बहुत रूम दे दिया था और अपने से दूर रहकर भी खेले। थोड़ा ऑन द मूव भी थे, पिछली शॉट में बेस स्टेबल थी। खालिद उस्मान सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहे, बड़ी तेजी के साथ अपने पहले ओवर से नब्ज आजमा हो रहे हैं। और एक और जो गेस्ट के लिए ज्यूरी ओपन रहेगी मरीना, वो ये कि क्या ड्यू आज आएगी। और मुझसे हालांकि आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं इसको खुद ही से गेस कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि अब तक की जो सूरत लग रही है ड्यू का फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा। एक मरतबा फिर इन्फोर्स किया शॉट को, बड़ा मुश्किल चीज है फील्डर के लिए, लेकिन मिस कर गए। रोक लेना चाहिए था। इन दी एंड लगता है कि नजरें हटाई और गेंद बाउंस करते हुए ऑकवर्ड अंदाज से गई फील्डर के बाएं जानिब से। शहाब ना रोक पाए। बैक टू बैक चौके मिले, 2 11 रन से नुकसान के। बॉलिंग में ये महारत रखते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करना पड़ेगा अदर बॉलर्स को भी। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि जज करने में गलती करके टांगों के बीच में से ये गेंद के बहुत लेट आए थे कलेक्ट करने। एबटाबाद अपना पहला फाइनल जरूर खेल रहा है, लेकिन फाइनल है, इट्स टाइम टू डिलीवर। और फील्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना। अच्छा, अगर ड्यू की बात करते हैं मरीना, तो जो दिन में खासा खुश्क मौसम था, लेकिन शाम में जो कि पिछले 2 दिनों से हो रहा है कि बहर अरब की जानिब से हवा चलना शुरू हो जाती है, जो कि लामहला ह्यूमिड होती है। और उसकी वजह से जब ये ठंडा और गर्म मौसम एक दूसरे के साथ मुलाकात करता है तो इस बात का इम्कान रहता है। लेकिन जैसे सिकंदर जिक्र कर रहे थे इस प्री मैच में कि ऐसी स्प्रे की गई जो कि नलिफाई करेगी इस ड्यू के फैक्टर को। विकेट मिल गई है अमाद आलम को और उसका पूरा फायदा उठाया है। देखते जाइए, और अब गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई। ये लम्हा रुक सा गया जब अमाद आलम खेले अपने पहले चौके के लिए। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक था, ज्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, गेंद को आने दिया अपने करीब, सिर्फ हाथों की और कलाई की ताकत से लाजवाब टाइमिंग हासिल की। यहाँ पे गलती आदिल ने ये की कि एक तो गेंद बहुत आगे था और आउटसाइड ऑफ टर्म जब भी आप ऑफर करेंगे विथ किसी भी टॉप ऑर्डर बैटर को, तो वो बाउंड्री हासिल करने में कामयाब जरूर होगा। नौजवान है आदिल नाज, लेकिन वेवर्ड हो गए थे डिलीवरी में। ड्यू की आपने बात की थी, हम मौजूद थे ग्राउंड स्टाफ के साथ और वो यही हमें आगाह कर रहे थे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा फैक्टर आ गया था, एकदम अचानक से ड्यू आ गई थी सेकंड इनिंग्स में, तो स्प्रे काफ़ी हद तक आज हुआ हुआ है। और उन्होंने भी कहा था कि अगर अंपायर्स अलाउ करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं रोप से उस चीज़ को भी ड्यू फैक्टर को कम करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश यही है कि जितना कंडीशंस को न्यूट्रल किया जाए दोनों टीम्स के लिए उतना कर सकें ग्राउंड स्टाफ। आदिल नाज को अभी भी स्विंग हासिल हो रही है, लेकिन अपनी लाइन में बाहर निकले और उसी बर्दाश्त में पकड़े गए। अमाद आलम ने इस मरतबा खतरनाक अंदाज से खेला और आउट हो जाएंगे। खराब शॉट का इंतखाब किया, बड़ी विकेट एबटाबाद ने पहला ब्लड ड्रॉ कर लिया। अमाद गए, फखर थे जिन्होंने कैच किया, बहुत ही अच्छा ग्राउंड कवर किया अपने दाएं जानिब और वो ऐसे कैचेस ड्रॉप नहीं करते। अमाद आई थिंक कि फाइनल के प्रेशर में फॉल कर गए। ये शॉट एक बार फिर खड़े खड़े खेली,
यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा एबटाबाद को या आदिल को, और पहला नुकसान उठा बैठे। एक बार फिर खड़े खड़े खेला, सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, और अमूमन ऐसी शॉट्स ऑन साइड पे जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं, लेकिन इस बार सीधा हवा में ही ये गेंद गई क्योंकि ज़्यादा बेस थी नहीं, ना ही स्पेस को यूटिलाइज कर पाए। पहला नुकसान अहमद आलम की शक्ल में 5 रन बना के वापस 15 पे 1 कराची वाइट्स। पांचवी मरतबा कराची फाइनल तक क्वालिफाई करने में कामयाब रहा है और पांचवी ही मरतबा कराची ने इस टूर्नामेंट को होस्ट किया, जो कि भरपूर लेगेसी रखता है। 2 दहाई से टूर्नामेंट जारी, लेकिन ये बात आप में से कईयों के लिए शायद उछम्बे का बायस हो कि कराची एक स्ट्रॉन्ग टीम होते हुए, जिसकी फेमसली क़यादत की शाहिद आफरीदी ने भी, और सुहेल, खुरम मंजूर, ये तमाम इस टीम में खेलते रहे, जिसके बाद ये दोबारा आई है खेलने के लिए पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में। एक मरतबा फिर इसके पास चांस है कि वो जीत पाए, और उमैद बिन यूसुफ कैसा परफॉर्म कर पाएंगे या हम रहेगा। आज उनके लिए एक बड़ा दिन है, लेकिन इसके साथ साथ बदले बदले नजर आए इस टूर्नामेंट में। इम्प्रोवाइज किया उन्होंने, मिडिल ओवर्स में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया अपने ट्रेडिशनल तीसरे नंबर पे। ओ खूबसूरत स्विंग, आदिल नाज ने बांध के रख दिया है। बैटर्स को विकेट हासिल करने के बाद और भी खतरनाक दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब किए किराए पे पानी फेर दिया इस ओवर थ्रो ने। कराची कबूल करेगा बोनस के 4 रन, दोनों हाथों से कबूल करेगा। आई एम नॉट श्योर कि इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ही तेज़ रन दोनों ने कंप्लीट किया था। रिकशे किया विकेट से और 4 रन के लिए जाता गया ये गेंद। आफाक ने कोशिश ज़रूर की थी, बट बैकअप भी हमें नज़र नहीं आया, लेकिन बैकअप कुछ कर भी नहीं सकता था। ये देखें, बहुत सरप्राइज ज़रूर हुए थे, वो पहुंच गए हुए थे, बल्लेबाज पहुंच गए हुए थे, और रिकशे होके ये 4 तोहफे में दिए रन्स कराची वाइट्स को। सीधा खेले, और इतना सीधा कि एक और ऐसा शॉट के देखते जाइए, नॉन स्ट्राइकर एंड पे इसने बीट किया, पीछे कोई रोकने वाला नहीं था। भरपूर कुव्वत वाला चौका। आज एक बार फिर अलग मोड में नजर आ रहे हैं खुरम मंजूर। आदिल को किसी खाते में नहीं ले रहे, क्योंकि अच्छी बॉलिंग वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर गलती की। लेंथ गलत थी और पेस अच्छी थी, जिसकी वजह से पावर जनरेट करने में कामयाब हुए। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि सीधा खेलने गए, अटैक करने गए। सीधा जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे कनेक्शन अच्छा हासिल होगा। पावर प्ले का जिक्र मैंने ज़रूर किया था आसिफ शफीक से टॉस पे, क्योंकि वो स्ट्रगल करते आ रहे थे, लेकिन इनका खुरम मंजूर का यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन जितना लंबा ये खेलेंगे उतना प्रेशर एबटाबाद पे रहेगा। कुछ मूवमेंट थी शायद साइड स्क्रीन के ऊपर बालकनी पे, लेकिन अब मुतमईन खुरम मंजूर अगली गेंद के लिए। और एक मरतबा फिर इनफोर्स करके शॉट खेलने के लिए जा रहे थे। कल से बदले बदले हैं खुर्रम, और अब भी क्रीज पर मौजूद हैं। कामयाब ओवर मुकम्मल, लेकिन रन पड़ गए इसमें आदिल को। 14 रन दिए 25 पे। खालिद उस्मान इनको आज वापस प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इनकी अगर आप गौर करें, आंख पे बॉल लगा था, ये शायद ज़्यादातर शायकीन नहीं जानते। नेशनल बैंक में ड्यूरिंग फील्डिंग इनको लगा था। खुरम मंजूर मौजूद हैं 15 पे। अमाद एक पहला झटका, कराची को 5 रन बना के वापस। उमैर अभी भी साथ हैं खुरम के। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, इसलिए मेहनत दरकार होगी एबटाबाद की जानिब से, जिन्होंने टॉस जीत के इनको पहले दावत दी है बैटिंग की। असद हैं, दानिश बहुत अच्छी फॉर्म में। आजम खान कभी भी मैच का पांसा पलट सकते हैं। अनवर अली और सुहेल खान हमने झलक देखी थी कल इनकी, कंटिन्यू करेंगे। खालिद उस्मान एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और एक सवाल इनके जहन में भी कुल बुलाता रहेगा कि किस टारगेट की जानिब इनको लेके चलना है। गो के ड्यू के फैक्टर की बात की गई है, लेकिन उसमें एडेड शायद 20 रन इनको हासिल करने हो। बड़े विकेट हासिल किए अमाद की सूरत में, जो कि गेंद उनके ख्याल के मुताबिक शायद ज़्यादा उठ के आई। इससे पहले गेंद ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रही थी, लेकिन पूरा स्विंग मौजूद नहीं था, ना वो विड्थ थी जिसके तहत ये ओपन और शॉट के लिए चले जाते, जिसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। शॉर्ट आर्म शॉट रहा। ख्याल होगा कि दोनों फील्डर सर्कल में मौजूद है, तो बिहाइंड स्क्वायर शायद इसको निकालने में कामयाब हो जाते, लेकिन रूम नहीं था, इसीलिए बैट पे मिडल भी नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट है एबटाबाद के लिए, पहले भी ये सुना
4 रन्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल रहे हैं खुर्रम मंजूर, बिल्कुल भी किसी बॉलर को सेट होने का मौका नहीं दे रहे। एक बार फिर रूम बनाया, प्री मेडिटेटेड शॉट थी ये, क्योंकि खालिद उस्मान एक ही एंगल से गेंद अंदर लाते हैं, इसलिए रूम बना के शानदार तरीके से एलिवेशन हासिल की और एक और चौका अपने नाम किया। तजर्बे से मुकाबला खुर्रम मंजूर इसको अपने हक में बोल रहे हैं। तीसरी मरतबा उन्होंने शॉट को अटैम्प्ट किया, तीनों स्टंप्स को एक्सपोज करके गैप खुद क्रिएट किया अपने लिए। कवर्स की बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, वाइड और लॉन्ग ऑफ पर अब एक फील्डर प्रोटेक्शन के तौर पर है, लेकिन मिड ऑफ पे कोई नहीं था जिसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और जितनी कुव्वत उन्होंने जनरेट की शॉट में। ये मुसलसल ऐसा शॉट है, कल की शाम से लेकर आज तक लगा है कि खुर्रम मंजूर कल आउट तो हुए थे, लेकिन उसी मूड और मोशन में आकर उन्होंने एक मरतबा फिर स्टेडियम में ज्वाइन किया है। और कल वो पेस का मुकाबला कर रहे थे ऊंचे शॉट्स के लिए, और आज उन्होंने खालिद उस्मान और दूसरे एंड से आदिल नाज को आड़े हाथों लिया। दो तीन इनिंग्स से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारने जा रहे हैं शॉट्स खुर्रम मंजूर। अमूमन ये थोड़ा टाइम करते हैं, अपनी कुव्वत का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। खालिद उस्मान का तजर्बा इस मरतबा काफ़ी साबित हुआ है, उन्होंने स्टंप्स की लाइन को बरकरार रखा है और अगर बार बार आप एक्सपोज करेंगे तो यू मिस आई हिट उनके हक में जाएगा। खतरनाक अंदाज से जी रहे हैं। लंबा चेज है फील्डर के लिए, सिर्फ एक रन हासिल कर पाएंगे खुर्रम, स्ट्राइक भी उनके पास रहेगा। कराची वाइट्स 32 के नुकसान पे। A slight hold up there, but 32 for 1 after 4. Moving at 8 and over. Karachi Whites after being asked to bat first. So Sikandar, 4 overs so far in the big final, and it's a reasonable start. I think both teams will be happy with this. Karachi with the run rate of 8, definitely they would want more in the power play, and the other team have the wicket of young Ahmad Alam, who has been very impressive in this tournament. So not much to differentiate, but about the pitch, if you see, there has been some swing available, and Ahmad Alam is there, the young boy, the very impressive young boy. And well, once again falling to a pre-planned stroke, and this is where Ahmad Alam just needs to believe in his own ability, because if the ball is there, he will get runs. This is something that he tried to manufacture even before the ball had been delivered, and that is not the way to go, young man, because you are too good to think like that as a batter. He seemed a bit caught up in that shot. He's not it's just maybe also the pace, because usually he flicks that and he has a good pickup shot. Yes, we have seen him play that, but where premeditation creates problem is that if you think about a stroke even before the ball has been bowled, and if the ball isn't there, then you end up looking messy, and that is what happened here. He got caught up in that position, but the ball wasn't there to play such a stroke. So they will need Khurram to carry on tonight. Last night he was on fire, and in
the one over that he played, I think he was looking to get 25 or 30 in that over. I'm not very sure this recent love affair of his with the horizontal bat, trying to whip everything on the onside. I know it's not about what I like. But it's just we've seen a little more conventional of him. Now he's trying to do a lot of improvisation, trying to bring in that T20 jumping around in the box kind of skill and aiming more behind the square on the onside. Sometimes we've seen him bat so well in front of the wicket and suddenly he comes up with a reverse and more often than not throws the wicket away. No run there. The bowler was quickly up to the ball and dot ball it is at the end. Yes, Sikandar, when you get to a position where obviously it's going down the hill towards the end of your career, and nowadays everywhere, here and there on television, all the experts talking about innovative cricket, modern cricket, intent, and that can get to you even if you are experienced. So in case of Khurram, I think he's trying to live up to all that, but he has far more ability playing conventional cricket to get runs than to go too much out of the box. No foot movement, just an outstretched arm with that bat swinging outside the off stump. Trusting more hand-eye coordination rather than you talk about covering the line. Yes, had that left foot gone towards the ball, he would have been in a better position either to punch it or cut it. But once again, that limited feet movement of the top order players is not something that is encouraging. Obviously, Adil is bowling a decent line, but no swing there, nothing from the pitch or in the air that will disturb batters. So he just needs to go behind the line. Once again, not much of a movement. Yes, the ball came back in, but the batter very limited with his feet. One other advantage of moving towards the line of the ball is, or going behind the line of the ball, is that if it's not outside the off stump, then you can work it towards the leg side because there is only mid-on and mid-wicket here in front of the wicket. The one man is behind on short fine leg and the other is on the square leg boundary. So plenty of open spaces there. It's a good over by Adil so far. 4 dot balls, 1 leg by, so he's been terrific. It's his third over and he has picked up that 1 wicket of Ahmad Alam, giving away only 15 runs, keeping the Karachi batters in check. And at the moment, it seems as if the power play is tilting towards the Abbottabad team because there's only 33 on the board with the loss of 1 wicket, and we are just with 7 deliveries to go in the first power play. He comes down the wicket and then checks the length. We'll keep strike with that single. 5 gone, 34 for 1. Fayaz Khan to the attack inside the power play. He'll bowl his left arm from that University Road end. 2 for 33 is best. Early days into the T20 career.
inside 10 matches to his name. And he's all set and ready to bowl left arm over. Yes, once again, good line and good length, giving no room to the batters to free their arms, bowling within the stumps. And that has been the pattern of the fast bowlers we have seen in this power play from Abbottabad. And I think they've got a decent plan up their sleeve. And this plan, obviously, if Karachi want to negate this one, they will have to take a few risks, create their own length, maybe come down the pitch, maybe give themselves room and play it over the infield. At the moment, nothing of that sort. He thought he'd made room for himself to open up that offside, that cover area, and then live it with himself to missing that. Totally exposing his stumps and relying on smashing it like this. Like the length he's bowling, Fayaz. The ball is on the rise when it is coming in contact with that bowler, and also keeping it within the stump, so not allowing much room. The batter has to improvise and do what Khurram tried. There again, it's an identical ball, identical approach from Khurram. Yes, and that makes sense. He moved away, he got the length, got the room, but both times he was unable to connect. So the intent is there, it's just the execution that is not happening for Khurram. The bowler is also providing him the length that Khurram wants. He's just missed two deliveries where he could have had them both going towards the boundary. There's one fielder which is in middle of deep point and third, and a fine third standing along with the keeper. Yeah, finds the fielder. Now the frustration creeps in. 3 times he's attempted to break free through that cover point area, and he hasn't been able to. Yes, if we go back to the game between Peshawar and Abbottabad, we saw their players in the power play not miss a single ball where they did not rotate the strike. And here, yes, the boundary balls are not coming, but rotation of strike matters because all the infield fielders, they're coming from the edge of the circle. So there's plenty of singles available, but there is no intent. This one is pulled, this one is in the gap and will be a boundary. So finally Khurram gets one through and gets 4 runs. So Karachi moved to 39 and much needed boundary because the power play, it hasn't belonged to Karachi so far. It's good that their wickets are intact, but not many runs. Yeah, the only problem is he's got a boundary, yes, but he's taken 4 deliveries to get that in the power play. Now the last ball of the power play. Not that much will change the way Khurram will approach even after the 6 overs are done. He'll still go and try and attack. Probably that's the role given to him as the opening batter. Cuts that one. That looked like a boundary the minute it left the bat. It just knew it's found the gap. Yes, cut hard. Absolutely smashed this one. No chance for the deep fielder and any other fielder to even move. And it reached the boundary before any fielder would have realized. Right from the meat of the bat. Once again giving himself room and this time connecting. So the power play is finished. 43 are Karachi with a loss of 1 wicket. Signal, that's the end of the power play. Field will open up. You'll allow more than 2 outside the 30-yard circle. And the cap has come for Khurram, which means spin will be in operation. Khalid's bowled well, 2 overs, none for 17. Good crowd in. Final Sunday, home team. And a lot of action. Yes, a very charged crowd making a lot of noise. Definitely they all want Karachi to win, being the home team. And Karachi have played some wonderful cricket in this tournament.
and especially the crowd have loved it when Azam Khan has been on song. Whenever he steps in, we see them shouting, and immediately we see some grip as Khalid Usman bowls the first delivery. Tentative. Umair bin Yusuf so far hasn't been very smooth in his batting in this outing. This one is going straight on with the arm, and Umair seemed to have no clue which way the ball was going. Khalid Usman has started off well with the first two deliveries. In the other 2 overs that he bowled before, he's given away 17. You can see that bruised eye. He's got a couple of stitches. Got hit by the ball on the eye in one of the round games, so he missed out on the semi-final, and he's brave enough to come out and play his role in the 11 today for the all-important final match for Abbottabad. We're talking about Khalid Usman, of course. Yeah, he is. You can see that. Yesterday he was wearing shades in the night and was wondering why. We have been teammates, me and Khalid Usman, for Wabda, and he is a brave heart, no doubt about it. He's a champion cricketer, and even with the stitches, he'll be all out giving his best for his team. He will try his best. This one has been driven off the back foot for a single. And Karachi have the firepower coming in the shape of Azam Khan and Anwar Ali. We saw both of them last night put up a brilliant partnership and finishing the game. It's just that they will need some sort of platform and momentum from any of the batters above, and these two have taken enough time now that they are well settled, and I think they now need to look for a boundary and over. 7 gone, 46 for 1. So the big final began, and walked in Khurram and Ahmad Alam, and Khurram punching one, and then another drive through mid-off, and then Ahmad Alam with his elegance, but then some premeditation leading to his wicket. Then Khurram hitting the ball hard a number of times, pulling one. Then there was a cut stroke now on your screens, and Abbottabad keeping things tight. So power play, basically, let's say that it was kind of a 50-50 power play. Karachi not losing many wickets, and Yasir Shah and his team not allowing many runs. So we are into the 8th over now. Karachi definitely looking for some momentum, and Khurram and Umair, they have to kick on now. Straight and rewarded. That's more like it. Attack the bowler on his very first ball. Yes, this stroke batter only plays when he trusts the pitch, because it wasn't right up to him. He used his feet, trusting the pitch and the bounce, and then he went through with the stroke. Beautifully executed by Umair bin Yusuf, and that is now positive. Now they need to be sensible. Yes, that's it. Got one boundary, now rotate strike, get 8 or 9 for the next 5-6 overs, and then the platform will be there for the remaining batters to come in and launch. You were discussing about how Karachi should approach a boundary every over, but somehow the way we saw that last power play over where he's trying a particular thing and it's not working and he's getting a lot of dot balls. So I'm very much game for your concept. Look for that boundary, but don't absorb dot balls in trying to get it. Rotate the strike also, because your net run rate at the moment is almost 7. Gotta keep it somewhere around 7, 8, and not be too fussy about it. Yes, you can't just look for boundaries every ball. Yes, if the ball is there, go after it. But if it's not, then if you've got one boundary, primarily you should be focusing on rotating the strike, because that way you'll get risk-free 8 or 9 runs. And then the opposition will start to get under pressure. Now this one is going down the leg side, just distracting the batters from running the one, and did not succeed in that.
but after the 4 of the first ball, they've only got 5 so far in the 4 balls. And this is something that needs to change to 8 or 9 or maybe 10 or 11 in an over. Khurram is struggling a bit for some reason. His right knee took a bit of treatment. End of the over, 6 of it, 52 for 1 after 8. मतलब ठीक है मत खालिद भाई मत खोटे तना नहीं 8 ओवर्स 52 एक खिलाड़ी आउट। एक बड़ा जबरदस्त मैच चल रहा है। फाइनल दोनों टीमें मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि अपर हैंड हासिल किया जाए किसी तरह, लेकिन कोई भी टीम 1 इंच भी देने को तैयार नहीं दूसरी टीम को। अच्छी इनिंग्स खेली अभी तक खुर्रम मंजूर ने। उमैर बिन यूसुफ अब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम को बढ़ाया जाए। स्लॉग स्वीप, गैप में 4 रन। जोरदार स्ट्रोक खुर्रम मंजूर का। ऑफ स्टंप के बाहर से उन्होंने गेंद को लपेटा और गैप हासिल किया। यही खास बात है तजुर्बे की, बड़े मैच में बड़ी इनिंग्स खेलती है खुर्रम मंजूर। सेम शॉट, लेकिन इस मरतबा फील्डर की पहुंच में आ गई बॉल और 1 रन। खुर्रम मंजूर बिल्कुल एक हिकमत अमली के साथ खेल रहे हैं और जब से स्पिनर्स आए हैं उन्होंने अपना गियर चेंज किया है। बहुत लंबी बैटिंग है कराची की, अफोर्ड कर सकते हैं अटैक करना, कुछ विकेटें भी गंवाने को अफोर्ड कर सकते हैं। विकेट्स के एक्सपेंस पे रन बनाना इस स्टेज पे वो थोड़ा सा अफोर्ड किया जा सकता है। अच्छी तादाद तमाशाइयों की आज आई हुई है। जो 2 स्टैंड्स तमाशाइयों के लिए खोले गए हैं वो तकरीबन भरे हुए हैं आज के फाइनल के लिए। इस मरतबा रूम दिया, विकेट की दूसरी जानिब गए और फील्डर देखते रह जाएंगे। खालिद उस्मान पे पूरा प्रेशर डाला है यहाँ खुर्रम मंजूर ने। लाजवाब बैटिंग, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये एक्स्ट्रा कवर पे। दूसरी या तीसरी बार उन्होंने ये अपने आप को जगह दी और रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर पे एक्सिक्यूशन बहुत अच्छी है। पहले थोड़ा सा स्क्वायर खेला था और इस बार एक्स्ट्रा कवर के राइट साइड पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं खुर्रम मंजूर। ये देखिए अपने आप को रूम दिया, सिर्फ उन्हें एक्स्ट्रा कवर का फील्डर बीट करना था दायरे में और मिड ऑफ के फील्डर की पहुंच से दूर। लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए 1 रन पूरा कर लेंगे खुर्रम मंजूर। कुछ अपने डगआउट की जानिब इशारा किया है। पता नहीं चल रहा कि घुटना है प्रॉब्लम या क्वाड का मसल खिंचा है, काफी तकलीफ में लग रहे हैं। मैर ने अक्लमंदी से गेंद को गैप में फेंक कर 1 रन हासिल कर लिया। महंगा ओवर खालिद उस्मान का 12 रन आए इस ओवर में। 9 के बाद 64 पर 1। आज की शाम बहुत सुहानी और ये बेहतरीन वक्त है टपाल टी मोमेंट के लिए। और आज इस लाउंज में काफी गहमा गहमी है। जिस तरह का फाइनल चल रहा है उसके बाद 1 कप चाय का तो बनता है। एमरेस्ट से अच्छी कंडीशंस हो नहीं सकती है क्रिकेट मैच के लिए, और वो भी फाइनल के लिए। आप नीचे ग्राउंड में खड़े हो तो जो खुशगवार एहसास होता है तो यकीनन प्लेयर्स के लिए और देखने वाले तमाशाइयों के लिए भरपूर लुत्फ का बायस है। लेकिन खुर्रम मंजूर तकलीफ में है और वो जो आप बात कर रहे थे ये घुटने से ज्यादा मुझे कॉर्ड का ही लग रहा है मसला। हाँ, कॉर्ड का मसल मेरा ख्याल से जब ये डॉक्टर अगर आप देखें स्क्रीन पे जब वो थोड़ा सा दबाते हैं तो काफी तकलीफ में नजर आ रहे हैं।
डॉक्टर निसार कराची की टीम के साथ इस वक्त फिजियो। अच्छा लग रहा है इतने तमाशाई देखकर, और हर उम्र के तमाशाई। जब अपने आप को कैमरे में देखते हैं तो काफी खुश होते हैं, और शायद कोई लिक्विड या फ्लूइड मंगवाया था खुर्रम मंजूर ने। ये इस चीज की भी निशानी है कि क्रैम्प भी हो सकते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से कॉर्ड या मसल इंजरी से बेहतर है कि क्रैम्प्स ही हो। कराची टीम यही दुआ कर रही होगी, क्योंकि क्रैम्प से रिकवर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर कोई मसल इंजरी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए मूवमेंट, और फिर बाद में फील्डिंग भी करनी है। कराची में मौसम सरमा की आमद है। आपको तमाशाइयों में कहीं ना कहीं जैकेट्स पहने हुए तमाशाई भी मिलेंगे, कि हवा काफ़ी ठंडी है। लेकिन इस फाइनल को अगर देखें तो एबटाबाद को ज़रूर एडवांटेज था टॉस जीतने का, और उन्होंने जो फैसला किया, शायद असद शफीक भी यही फैसला करते। लेकिन यहाँ अमर, आपके ख्याल में अब जो प्लेटफॉर्म एक सेट हो गया है, 9 ओवर्स हो चुके हैं, क्या अच्छा स्कोर होगा इस बड़े फाइनल के लिए विकेट को, कंडीशंस को देखते हुए? इस पे बात करेंगे अहमर, लेकिन आज एक बड़ा जबरदस्त मैच हुआ एशिया कप अंडर 19 में। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों ने इंडिया को 8 विकेटों से हराया। बहुत ही डोमिनेटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस थी। पहले बॉल के साथ 259 रन पर महदूद किया इंडिया को। जीशान ने पहले मैच में 6 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद दोबारा 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उबैद ने 2 विकेटें हासिल की, और उसके बाद अज़ान अवैस ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी बनाई। कप्तान साद बेग ने उनके साथ लाइन को अबूर किया, उन्होंने भी निस सेंचुरी बनाई। जबरदस्त खबर पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स की जानिब से। ऑलराउंड क्रिकेट में काफ़ी फतूहात पाकिस्तान के लिए। ख़वातीन ने अभी न्यूजीलैंड में सीरीज जीती है T20 की, और अब ये अंडर 19 के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए। और यहाँ जो रीजनल डोमेस्टिक सीजन है उसका ये आखिरी दिन है, और ग्रैंड फाइनल कराची की टीम को दाद देनी होगी कि तीनों फॉर्मेट्स में वो फाइनल में पहुंचे। फर्स्ट क्लास में भी, लिस्ट ए में भी, और अब T20 में भी। लीजिए, उमर निकले क्रीज से बाहर और गेंद गई बाउंड्री से बाहर। लाजवाब। ये उनके कॉन्फिडेंस और फॉर्म की गवाही है ये शॉट। कदमों का इस्तेमाल किया अगेंस्ट द स्पिन, जबकि बॉल तक पहुंचे नहीं थे पूरी तरह से, लेकिन फिर भी वेंट थ्रू विद द शॉट। ये कॉन्फिडेंस है उनका, और एक्सिक्यूशन बहुत अच्छी, 6 रन हासिल। ये दूसरी दफा हमने देखा उमर कदमों का इस्तेमाल करते हैं, गेंद की पहुंच से दूर रह जाएं, फिर भी अपना शॉट खेल जाते हैं। इस मरतबा उन्होंने अलबत्ता अपना शॉट चेक किया और सिंगल लिया, जो कि एक अच्छी हिकमत अमली है। अपनी इनिंग्स के मोमेंटम को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। शायद पहले बैटिंग करने वाली टीम अमूमन जो 160-70 का टोटल पिछले मैचों में कर रही हो, शायद कुछ उससे 10-15 रन ऊपर देख रही हो। अच्छी बॉलिंग, यासिर शाह फॉलो किया उन्होंने खुर्रम मंजूर को, जो थोड़ी सी ब्रेक के बाद अब ज्यादा कंफर्टेबली मूव कर रहे हैं। गैप मौजूद है एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से खुर्रम के पास ऑफ साइड पर। जोरदार पुल शॉट, लेकिन रन एक ही आएगा। हाफ वे स्टेज पर कराची जा पहुंची 74 तक, और एक खिलाड़ी आउट। खुर्रम मंजूर बहुत ज्यादा जो है वो कदमों के इस्तेमाल पे यकीन नहीं रखते, ब्रूट फोर्स पे रिलाई करते हैं और बहुत जोर से शॉट मारते हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर्स ये देख लीजिए आप, अगर 13 रन के एवरेज से खेलेंगे तो कहीं 200 रन का मार्जिन आज हासिल कर पाएंगे, और 184 एक काफ़ी ऐसा स्कोर है कि जो आज कराची को हासिल करना चाहिए बड़े मैच में, ताकि प्रेशर डाल सकें एबटाबाद की बैटिंग पर। जी हाँ, और उसके लिए उन्हें 11 रन बनाने होंगे पर ओवर। यहाँ से विकेटें हाथ में हैं, आजम खान भी अभी हैं, अनवर अली अच्छी फॉर्म में हैं, दानिश अजीज भी अच्छी फॉर्म में हैं, सोहेल खान बिग हिटर, असद शफीक भी। उनका क्या रोल होगा इस मिडिल ऑर्डर में, ये बहुत क्रूशल होगा। अब एबटाबाद के
कामयाब तरीन बॉलर शहाब आ गए हैं बॉलिंग क्रीज पर। जबरदस्त क्राउड है आज के फाइनल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ये अब, जहां शहाब अब बॉलिंग करने आए हैं। खालिद उस्मान ने बॉलिंग का आगाज किया था, बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। स्विंग पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती मेरे ख्याल से एबटाबाद की टीम। शुरू में जैसे हमने देखा सुहेल खान, उससे पहले गुलाम मुदस्सिर नई बॉल से स्विंग हासिल की उन्होंने काफी, लेकिन एबटाबाद ने स्पिन को तरजीह दी है स्टार्ट करने के लिए। काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा है शहाब का। और स्विंग की बात आपने की, आदिल नाज करते हैं नया बॉल और वो गेंद को स्विंग कराते हैं। बाहरी किनारा और 4 रन। थर्ड का फील्डर दायरे के अंदर विट दी यहां पर शहाब ने, और खुर्रम मंजूर को बिल्कुल भी सेकंड इन्विटेशन की जरूरत नहीं। प्रेशर में डाला है बॉलर को और इसी की जरूरत होती है। पहला बॉल था ये शहाब का, थोड़ा सा रूम भी बनाया उन्होंने और बॉल में विथ भी थी, जहां मारना चाहते थे वहां तो नहीं गई, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतरीन। शॉट के बाद फील्ड में भी तब्दीली हुई। मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर आ गया। बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर बाउंड्री के बाहर चले गए। शहाब शायद एंगल करेंगे अक्रॉस, लेकिन लेंथ आगे रखेंगे, यही उनकी कोशिश होगी। शॉट बॉडी के ऊपर फॉलो किया खुर्रम मंजूर ने, आपको जगह देकर वही ऑफ साइड की जानिब खेलना चाह रहे थे। और आपने बात की नई बॉल से स्विंग, एबटाबाद की हिकमत अमली नहीं रही। एक एंड से वो फास्ट बॉलर कराते हैं, लेकिन ये शहाब जो हैं, आपको याद होगा जब T20 क्रिकेट में पाकिस्तान का उरूज था तो उमर गुल ऐसे बॉलर थे जो 11वें 12वें ओवर में आया करते थे और एक एंड से वो इनिंग्स क्लोज किया करते थे। शायद वही हिकमत अमली है, क्योंकि हमने हमेशा शहाब को पुरानी बॉल से बॉल करते देखा है और विकेटें भी उन्होंने काफी हासिल की हैं इस टूर्नामेंट में। उमर गुल की आपने बात की, बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर उनकी जो है वो रेपुटार में थी और इसकी वजह से जो है बहुत ही कामयाब डेथ बॉलर थे, खासतौर पे T20 में। ये रैंप और दिल स्कूप से पहले का ज़माना है, तकरीबन उसी टाइम पर वो भी इजाद हुई, तो फिर यॉर्कर की इफादियत कदरे कम हुई। लेकिन यकीनन उमर गुल बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर थे अपने टाइम के हर फॉर्मेट में, लेकिन T20 में उन्होंने ये रोल स्पेशलाइज किया। जो आखिरी 10 या 8 ओवरों में वो बॉल करने आते थे और एक एंड से पूरा स्पेल कर जाते थे। खुर्रम मंजूर और शहाब का मुकाबला दोबारा शुरू होने को है। क्रीज में डीप गए, फील्डर मौजूद है लेकिन उनके सर के ऊपर से, और इसके साथ ही खुर्रम मंजूर की निस सेंचुरी बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी होने का सबूत दिया एक मर्तबा फिर खुर्रम मंजूर ने। वेल प्लेड। 30th 50 है उनकी ये T20 क्रिकेट में। बहुत ही शानदार बैटिंग आज, जब कराची को बड़े मैच में फाइनल में जरूरत थी तो उन्होंने जो है ये देखिए ये थोड़ी सी फिर रूम दिया और थोड़ी सी बॉल शॉर्ट, इस पेस पे जो है इस लेंथ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी खुर्रम से बॉल बचाना। 65 यार्ड की बाउंड्री है जहां पे ये बाउंड्री गई। इस मर्तबा आउट हो जाएंगे खुर्रम मंजूर। अहमद खान ने ये कैच लिया, शॉट रिपीट करना चाह रहे थे, इस मर्तबा बॉल ज्यादा स्क्वायर चला गया और एबटाबाद को जरूरत थी इस विकेट की। एक मर्तबा फिर शहाब ने ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया। या पहले उन्होंने काफी स्क्वायर लेग की तरफ पिछला शॉट खेला था, इस बार मिड विकेट की तरफ ज्यादा बॉल थोड़ा सा और स्लो आया शायद और सीधा फील्डर के हाथ में। शानदार इनिंग्स खेलकर वापस हुए खुर्रम मंजूर, उन्होंने बनाया 53 रन और कराची वाइट्स 86 पर 2। नया आने वाली खिलाड़ी आजम खान, बहुत शानदार बैटिंग की थी उन्होंने सेमीफाइनल में और ये देख के बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और
कराची की टीम को भी एतमाद उन पे बढ़ता जा रहा है कि अब वो न सिर्फ एक हिटर के तौर पे जाने जाते हैं बल्कि एक बैटर, प्रॉपर बैटर के तौर पे जो मैच जितवा सकते हैं आपको, उसके लिहाज से जाने जा रहे हैं। 293 रन इस टूर्नामेंट में, 48 की एवरेज और 155 का स्ट्राइक रेट। ये एवरेज और स्ट्राइक रेट का कॉम्बिनेशन मिलाएं तो इससे बेहतर हो नहीं सकता। क्या लाजवाब टूर्नामेंट रहा है और आज की शाम कराची उम्मीद करेगी कि वो फिर उनकी रात साबित हो। और अच्छा फैसला असद शफीक का भी, बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली दिखाई उन्होंने खुद आना था स्टेज पर लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, आजम को भेजा क्योंकि जैसे अमर ने कहा आजकल आजम सिर्फ हिटिंग नहीं करते बल्कि इनिंग्स को लेकर चलते हैं। तो यहाँ से उन्हें अपॉर्चुनिटी दी है कि आप, टाइम है आपके पास। अच्छी गेंद, थोड़ा सा स्क्वायर ऑन हो गए थे आजम लेकिन बाहरी किनारा लगती हुई गेंद गई खालिद के पास। और अच्छा कामयाब ओवर शहाब का, 12 रन जरूर आए लेकिन विकेट भी, 86 पर 2 कराची। कराची में की बैटिंग लाइन में दानिश अजीज, अनवर अली और सुहेल खान भी काफ़ी बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। इन सब की मौजूदगी में देखना ये होगा कि किस तरह का टोटल। ये खुर्रम मंजूर की विकेट, थोड़ा सा शॉर्ट बॉल स्लो आया इस बार, मजबूर हो गए कि उसको थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ खेले इंस्टेड ऑफ स्क्वायर लेग, जैसा कि उन्होंने पिछली बॉल पे छक्का मारा था और सीधी फील्डर के हाथ में गई बॉल। अच्छा जज किया अहमद खान ने। हमने देखा है इस तरह के कैचेस काफी छूटे हैं जो खाली बैकग्राउंड में से आते हैं तो फील्डर्स को बॉल पिक करने में मसला हुआ। कप्तान यासिर, उमैर का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया आजम के आने के बाद। आजम की अप्रोच जनरली इस टूर्नामेंट में रही है कि वो शुरू में आकर अपना थोड़ा सा टाइम लेते हैं और उसके बाद फिर बड़ी हिट लगाने की तरफ जाते हैं। अगर बॉल नहीं मिले, शॉट बनाने की कोशिश नहीं करते इनिंग्स के अर्ली स्टेज में। 3 फील्डर ऑफ साइड पर दायरे में, 2 स्वीपर्स, डीप कवर और लॉन्ग ऑफ। यासिर ने कोशिश जरूर की लेकिन रन ना बचा सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा शाह फैसल, ये थोड़ा सा असेस करते हैं बाकी, जैसा कि हर अच्छे बैट्समैन को करना चाहिए। सिचुएशन को असेस करते हैं, विकेट को देखते हैं, 2-3 बॉलें, फिर भी आम बैट्समैनों से थोड़ा सा कम वक्त लेते हैं। और ये शायकीन आजम के आने से ग्राउंड में एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और ये 4 रन मिस जज कर गए फील्डर। यासिर बिल्कुल भी खुश नहीं है, ऐसा लगा कि शायद एक ही रन यहाँ पर बनेगा, शायद गेंद फील्डर ने पिक किया नहीं और पहले दूसरी डायरेक्शन में चले गए और जब उन्होंने अंदाजा लगाया तो गेंद से दूर रह गया। अब उन्हें बुला दिया गया है डीप पॉइंट पर। देखते हैं, काफी मायूस कुन फील्डिंग रही यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल मिस जज कर गए। काफी आहिस्ता है और डाइव को भी मेरे ख्याल से मिस टाइम किया। वजह तौर पर कप्तान खुश नहीं थे इससे। फाइनल में खास तौर पर इतने बड़े मैच में हर कप्तान ये चाहेगा कि उनके फील्डर्स टॉस पे हों। आजम खान जब हिट लगाएं तो गेंद ग्राउंड में नहीं रुकती। लाजवाब स्ट्रोक आजम का, आड़े हाथों लिया यासिर को। ये जोन नहीं है जहां पे आजम को बॉल की जा सकती है। थोड़ी सी फ्लाइटेड बॉल थी और मुंह पे गिरा ये बॉल और शानदार हिट। अच्छा कमबैक यासिर का। थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई फील्डर्स में और रनिंग में लेकिन कोई नुकसान नहीं। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम। 100 रन भी मुकम्मल हो गए यहाँ पर कराची के 12 के बाद 100 पर 2।
attack. 100 already up, 2 down. Khurram, Ahmad openers back in the hut. But Umair and Azam, they will take over now, especially Azam. It's a very crucial wicket for Abbottabad. If they want to contain them under 160, that's what Yasir Shah mentioned at the toss. They need to take Azam out of the equation. Eight overs to go and 100 already on the board. That's a good going. Crowd is coming in. I'm being told there are long queues outside. They want to come and support the side in the all-important final. The home team, a Sunday evening, a nice weather, and why not? Great to see so many people coming in, and they would love to watch this man on your screen. And if he can get a big score and smash it all around the park, then they would love it, and that's the role that's been given to him. He was sent in the 11th over up the order ahead of Danish Aziz and the captain himself. Slices that one to third, and Khalid Usman is the fielder there. So what we saw from yesterday were quite a bit of dew. Don't know if it's going to be any today, a bit of breeze, but they'll have to keep that cushion in mind. If there's dew, they'll probably want 15-20 extra runs on the board. And if you say 15-20 extra, ideally 180, wow. But somewhere around 170s would be a fight. Yeah, and for that they need Azam. For as long as he can stay, he can score. I did have a chat with Yasir, and I did mention that they do struggle in the middle overs, but he said he will rotate his bowlers wisely because he understands that there aren't any spinners apart from him. Yes, Khalid Usman is back in the hut, but again, when Azam is on the pitch, I think there is very minimum margin of error. Because the problem with him, he has huge range of shots. He's very technically sound, plus the power, immense power that he generates. Spoke to him yesterday, and he was of the opinion saying that he's practicing a lot to hit big against fast bowlers. He said there was a bit of word around that I'm very good only against spin bowling. But he's been working hard. We saw how he handled Bilawal Bhatti yesterday. Some very clean power hitting. He's had a good CPL, and of course, riding on that, he's come into this. He's the mainstay of that lower middle order to act as a catalyst to their score when required, whether they're batting first or second. I don't know what that appeal was for. The good thing about Azam mentioning that he is working against the fast bowlers, that firstly indicates that he understands there is a weakness. Again, just shifting over, premeditated. Just allowed the ball to come very near to him. And secondly, if you see that Bilawal Bhatti is over, you'll understand that he's trying to work out on his hitting abilities. But when you see the selection of shots, he manufactures cricketing shots. That actually allows him more clarity and also minimum of the risk for maximum results. He found the gap. Beautifully done. Riding top of the bounce. Picked it up early and played it way in front of the square for 4. Yeah, he injects so much power into the shots that the ball just races onto that carpet. Look at that. You feel that it's just a pull shot. But the ball, the way it travels, I mean, it's just amazing. The boundary rider on the onside is struggling to get to it. There, he's hit it hard into the ground. And look at that. It's just rolling and racing away. It's got some serious power and spin on it. Yeah,
Sikandar, don't forget that the other day we were dissecting his bat and he uses around 2.14. There, what a catch! What a catch! Only a catch like that can dismiss Azam Khan. Kamran Ghulam flew to his right, airborne, and he's taken the catch that would bring them back, seriously back into the game. Oh, Abbottabad wanted that. They wanted that. Azam Khan, the big one, just warming up. And you cannot keep Kamran Ghulam out of the match. A blinder. Huge, huge upset for Karachi. Yes, that's the signal. He understands that now the crowd will go silent, and he has silenced Azam Khan. Look at that for a catch. Diving to his right, that ball was seriously traveling, and catch has taken this side back into the game and sending shockwaves into the Karachi dugout. Exactly pin drop silence. Azam couldn't believe it that that ball didn't beat Kamran Ghulam. Out for 14, 108 for 3. We saw that yesterday as well. The moment Azam walked out, the crowd was chanting his name, and he got out. It was pin drop silence. But they still are backing their home team. Still a lot more batting to come. Karachi shouldn't be worried, but that X factor has been taken out of the occasion. It was a gamble by Asad Shafiq. Didn't really pay off, sending Azam up the order. Now the captain out himself at non-striker. Brand new over. Strategies and plans will now have to change. They will try to bat as deep as possible and then bring in Anwar Ali when required. We know what Anwar Ali is capable of. He did that yesterday. Finished the game off with quite a few balls to spare, around 14 of them if I'm not wrong. A lot of numbers which support why he is the captain and why he's been around for such a long time. He would be the best man to understand how he wants the game to proceed from here on for his side. What a catch. Really. That kind of catch not just dismisses a batter, it also just injects so much energy in your team. You start believing that, oh wow, okay, this is a final. Yeah, immense pressure all around. They're playing the home side in their hometown. And then he brought up that blinder. Yasir Shah is a good fielder himself. He was surprised and he was ecstatic about that catch. He was standing well down. Have a look at that. This is the real time. Is this traveling? He's just traveling. The timing of that dive, the way he went after the ball, and just amazing. Azam, I think he wasn't in a solid base position. That's why he did struggle it. The weight was neither forward nor on the back foot. But anyways, that was a blinder. Much needed effort in the field by Abbottabad. That run rate is around 8. Yesterday they were scoring around 9 through and through, which helped them to get to that 178 with 14 balls to spare. $14 gone, 114 for 3. Captain Yasir Shah, 4 overs, none for 35. Here in big numbers, lots of them. We'll need a lot of tea. More than that jug there with that lady. We'll need a larger one because we've got a big crowd here. Everyone wants to enjoy a nice hot cup of tea. Tapal for the final. Fakhar Zaman, he would enjoy when he gets that bat in his hand. He did that yesterday, and his side would hope that he can fire the way he did.
Suddenly you can see very animated Yasir Shah, the belief. They know that they can crush and bring that opposition down right now because they're in the rebuilding phase. Gets Fayaz back from a different end. He just bowled that one over, none for 9 from that far end, and he was taken off. Only captain Adil and Khalid have completed their 4-over spell. So it's down to Shahab and Fayaz to bowl the remaining 6. Pulls away. Now Karachi knows that remaining 6 overs are fast bowlers. They can use the pace. I don't know how comfortable and confident is Yasir Shah about Kamran Ghulam with the ball. He hasn't used him. But if the ball is gripping and there's some turn and the Karachi Whites are finding it tough to score against spinners, then you could always explore. But explore him now somewhere, not in the 19th or 18th over. Yeah, right now he'll have a lot of cushion. Obviously, just need to do a little bit of rebuilding for Karachi with Asad and Umair now. This is the time if he wants to just go through his overs. Upish and gone. I thought for a moment he lost that in the light because that was hit straight and flat. But that's the end of Umair bin Yusuf trying to attain a boundary. But what he's done, there's only one boundary rider on the offside and he's picked him. Watch the gap. That's usually what coaches tell you. That's usually what the best batters do. Don't watch the fielders because back of your mind, you know where they're standing. Straight to the man. Park really didn't have to move an inch. Have a look at that. Easy pickings. Another one down. The pressure is now mounting back on Karachi Whites. Abbottabad, they are roaring high. Umair gone. He was well settled, got the start, but really couldn't continue. 36 for him. 4 down on 115. Danish Aziz, bit of a shuffle in that batting order, sending Azam up. Now they're back to that usual. Key role for Danish now. We'll create that platform along with the captain and then let Anwar Ali do what he does best. He's been in good form. He got a man of the match. Player of the match award for ball and bat. Today you probably ask him to put in a quick fire 30 somewhere. He can hit the ball hard and big, so you've got to understand and take more strike than Asad Shafiq, who will be the anchor for a bit. Yeah, but the problem is that Danish doesn't have the luxury of time. He needs to quick fire because Asad, both are new on the crease, but this is the catch. Again, just the hands. Really couldn't really control the shot. You can see the bat path. It wasn't upish or downwards. Straight to the man. They are delighted. High in the air, chance again, chance again. What a catch. They are catching their way to the final. Again, something that they've created. The fielder running in hard and making sure he gets his hands underneath it. This is really good work from the Abbottabad fielders, backing their bowlers up. And once again, the Karachi batters, well, using the long handle but picking on the fielders in the deep. Second catch for Ahmed. Karachi White batters are now trembling. But you have to give credit to Abbottabad. Their body language, they're dominating. They're doing everything right. They might have a look at it, but I think that he picked it up really nicely. It ran and he had to cover a few meters. Look at that full-blooded dive.
And yeah, you have to give credit to them. First time in the finals, and they are bringing some challenge to Karachi Whites. Asad Shafiq, he tried to get out of his shell. Wasn't really necessary. Should have played that anchor role and helped Danish to go for the big shots. And then he had Anwar and probably Suhail, but he is back in the hut now. I think umpires are going to have a look again. I think. No, he's back. Anwar Ali now has immense responsibility. He won the game with the bat the other night. He has to repeat that, but has to take more calculated risk. These are the numbers so far. 150 for him, but look at that strike rate. That is what he's known for. Some challenge is up for Karachi Whites at this stage. Over a span of 10 balls, Karachi have lost 3 wickets. Azam, the captain, and Umair bin Yusuf. Suddenly the game has changed. We aren't that good of a luck for Karachi, are we? We came in, we got Azam Khan and then the captain, Umair bin Yusuf. 10 balls, 3 wickets. I can feel you, Sikandar. It's not over. Wait and watch. End of the over. 116 for 5. Abbottabad is known for doing the homework. They are strategically aware and tactically as well. And that's what Yasser mentioned. You need to stay away from Anwar's bat. But how things turned around for Abbottabad. 3 wickets, quick succession. They're jubilant. Let's have a look at that. The turn of events. 3 wickets, quick one. First, brilliant catch. Kamran Ghulam sends off Azam Khan, who was just warming up. He was trying to take up the challenge. Next goes Umair bin Yusuf, straight to the deep fielder in the cover. No worries there. And the captain trying to accelerate. Brilliant catch yet again. Abbottabad is on toes tonight. It wasn't his day, but I think he will give it to Kamran Ghulam. The kind of catch that was taken, that was a hard hit shot in that zone, and that's a specialist position, backward point. Not everyone can be there to anticipate how quick the ball is coming and how it comes off, and it's usually spinning hard if it's cut. High and beats that fielder. Danish Aziz gets a maximum using the pace of the ball. That could be a bit of a disadvantage because Yasser only has quicks left now till the end. Talk about field placement. He had the man at the deep, but it was really well timed. It carried all the way. Short and wide. The setup was there. But some luck for Danish, I'll say, because they've got deep point. They've got deep cover and both are really close in, so they are aware of those flying cut shots. Yeah, with pace on offer, you got to back yourself that you can clear the boundary. Swing hard. That's better, just keeping it close to the body. One thing for sure, between the two, Anwar Ali and Danish Aziz running between the wickets. One is rapid. The other one is not a big fan of taking singles. You figure out who's who. I think it will become apparent in some time. But Shahab, well, what's plan Yasser has given to him? It's a very calculated captain, a thinking one, proactive, and so far everything has paid off.
he'll be crouched. It's the way his stance is. Yesterday he finished it off in style. Today you can see it's the final, the stage of the game. He knows he takes the chance, but then you got to look in your dugout and you say, you don't have many after me. So you changed your mode. You're also looking at the big screen and you're saying it's 15.3. So I've got enough time. If I get 12 balls somewhere, 10 balls, I think I can do some impact, some damage. $124 for 5 in the 16. If you look at the projection here, if they go 9 and over, 162 won't be that happy. Need 11 and over, or maybe a little more. So you look for maybe 2 big overs somewhere. Going to be a tricky situation if Yasser decides to try Kamran Ghulam, because Danish, he can dominate spinners. Anwar would probably lean more towards fast bowlers because he can go deep and then just get those long levers coming in for the Yorker's delivery. He can put them away. But now with Fayaz, two available, and also Shahabs, he's the only one option. Come on, AK-48. Single to keep the strike. 16 gone, 126 for 5. पहले 6 ओवर में अगर कराची ने अपनी उड़ान भरी थी तो उसके बाद ये शाम रही है एबटाबाद के नाम, जिन्होंने 73 रन बने दिए लेकिन 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल की हैं, जिसमें आउट करने के बाद अमाद आलम को सेट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, उमैर बिन यूसुफ, आजम और कप्तान असद शफी को वापस भेजा। ये आखिरी 4 ओवर की शुरुआत है जिसमें अब तक तो 10 रन बने हैं, लेकिन चाहिए कराची को इससे कहीं ज़्यादा, और आइडियली आने वाले टेल एंडर से बड़ी हिट्स की भी ज़रूरत है। आदिल नाज से 4 ओवर मुकम्मल करवा दिए, जो कि एक बड़ी कॉल थी, लेकिन लिव अप किया इस यादगार शाम में एबटाबाद के कप्तान की कॉल पे। 23 रन देकर 2 विकेट्स हासिल किए, और अब ये मुद्दा आन पड़ा है फयाज पे, जिन्होंने 2 ओवर में 11 रन दिए हैं। वो भी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेट्स हासिल किए हैं। बड़ी हिट चाहिए, अनवर अली ने ऐसा बहुत किया है, कल भी किया, मजीद भी चाहिए। तेज रन लेकर दूसरे एंड पे जाएंगे, लेकिन क्या स्पिरिटेड फील्डिंग की आज एबटाबाद ने, और अपने यहाँ पर पहली मरतबा फाइनल तक पहुँचने का हक अदा कर दिया। सो फार सो गुड एबटाबाद। कैचेस भी बड़े प्लेयर्स के कैचेस जो कि मैच के नतीजे पे असरअंदाज हो सकते हैं। आजम खान का कैच कामरान गुलाम ने किया, और फिर दोबारा वो एक्शन में नज़र आया। बाउंड्री लाइन पे भी उन्होंने कैच किया। वर्सेटाइल फील्डर, पहले दायरे के अंदर फिर बाउंड्री लाइन के ऊपर। तो इस फील्डिंग ने ही असल में एबटाबाद की वापसी की है इस गेम में, क्योंकि विकेटें आती रहीं तो फील्डिंग टीम का हौसला बुलंद रहता है, और इस तरह जब आप डिसमिसल हासिल करते हैं तो फिर पूरी टीम का हौसला बढ़ जाता है इस तरह की शानदार फील्डिंग से, और वो नज़र आ रहा है एबटाबाद की बॉडी लैंग्वेज में। होम टीम नर्वस लग रही है। ये गेंद थी जिसको उठाकर खेल सकते थे दानिश, लेकिन कंसिडर करेंगे इस मौके को हाथ से कि निकल गया। मौजूद थे यासिर शाह, जिनके सर के ऊपर से खेलना चाहते थे शॉर्ट फाइन लेग पे, लेकिन चूक गया, और एक और मौका रहेगा। और ये जो विकेटें, अमाद आलम पहले आउट हुए, बड़ी उम्मीदें थी इनसे, लेकिन बड़े मैच में फखर के हाथों वो पकड़े गए। और यहाँ पर एक और कैच, अहमद ने कैच किया खुर्रम मंजूर को, और ये वो लम्हा था जो शायद मैच टर्निंग भी साबित हो सकता है। और फिर उसके बाद उमैर बिन यूसुफ जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो भी बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए, और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। कैचिंग जो है इस टूर्नामेंट में हमने देखा है गाय बगाए इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन आज की रात तो
जो कैचेस हमने देखे हैं प्रॉब्ली वो बेस्ट कैचेस थे। ये देखिए फ्लैट हिट, ऐसे कैचेस को करना आसान नहीं होता और आफाक थे ये। इसके बाद कामरान गुलाम फिर एक्शन में नजर आएंगे। आफाक अहमद, कामरान गुलाम, हर तरफ से उन्होंने क्राउड पर सन्नाटा जारी किया है, जो कि आज सबसे बड़ी तादाद में आया है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। इससे पिछली गेंद वाइड कर दी थी, लेकिन स्टंप्स की लाइन में बेहतरीन अंदाज से आए। दूसरे रन के लिए भागने का मौका है और पलट के वार करने में कामयाब हो जाएंगे। बड़ा लंबा सफर तय करके आना पड़ा। शॉर्ट फाइन लेग पर दायरे के एज पे थे, जहां से जब तक पहुंचते 1 को 2 में बदलने में कामयाब रहे। यासिर जो कि अपनी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की थी लेकिन जमीन बोस हो गए। स्लाइड करते हुए उन्होंने गेंद को फेंका, गेंद उठाते ही डाइव किया आगे की जानिब, शायद वो अपने रिब्स पे लैंड किया ऐसे। ये देखिए शायद इंटेंशनल था भी नहीं। 1 रन भी कंसीड किया और इसके साथ अब थोड़ी सी उन्हें हेल्प चाहिए होगी। लेकिन अकील बात करें इस फाइनल की, तो जो स्टेडियम का माहौल है वो गर्मासा गया है, जिस तरह क्राउड आया है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो एबटाबाद ने अपनी गेम को लिफ्ट किया और ऊपर नीचे 3 अच्छे कैचेस पकड़ के बिल्कुल कराची की टीम को इस वक्त प्रेशर में डाला। जो 170-180 का टारगेट था उससे थोड़ा दूर लग रहे हैं अब। इन्होंने लगता है पहले ही मिठाई मंगवा ली थी। अभी ना ईद का माहौल है ना कोई खुशी की खबर, लेकिन अभी देखना होगा कि कोई पर्सनल न्यूज़ थी या उसकी वजह से, और उसके बगैर उन्होंने इस सेलिब्रेशन को देखने का फैसला किया। और दूसरी तरफ आज बड़ी तादाद में कराची आइट्स ने आकर 4 चांद लगा दिए, जो कि आज ना सिर्फ ये कि मियादाद और हनीफ मोहम्मद इनक्लोयर जो कि इससे पहले ओपन किए गए थे, बल्कि उसके आगे अगर आप चलते जाएं तो वहाँ पर हर तरफ आपको कम से कम 4 स्टैंड्स तक ये लोग दिखाई देते हैं। और जिस हिसाब से आए हैं, कोई फ़खर जमान का फ़ैन है, कोई आज़म का था जिसको मायूसी हुई, कोई सुहेल खान का होगा जिसको कुछ देर में पेस देखने का मौका मिलेगा, जिसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा वंडर्स को, और दूसरी जानिब ये अनवर अली के फ़ैन भी हो सकते हैं। लेकिन एक शानदार शाम है और बेहतरीन सेटिंग है, मज़ीद जगह भी मौजूद है और ये इस चकाचौंध के पीछे 63वां मैच है शाह फैसल, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा, और दोनों में से जो भी जीतेगा वो पहली मर्तबा इस ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब होगा। सो ऑल टू प्ले फॉर। वकील, जिस तरह हम टॉस के वक्त ग्राउंड में थे, जो पुरफिजा माहौल था, जो मौसम था, वो अब क्राउड के आने से वो भी एक मुकम्मल समा बन गया यहाँ पर। फुल टॉस ऑफर कर दिया लेकिन डिप करी थी गेंद, पीछे भागे, नहीं रोक पाएंगे। कीमती चौका दानिश के लिए, स्लो वन थी, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी, लेकिन अपनी टॉल रीच का फायदा उठाया दानिश ने, अहम चौका हासिल किया, अपने पहले 4 रन खेले। बिल्कुल फ्री भी मिल गई थी, स्लो डिलीवरी बैक ऑफ द हैंड, लेकिन फुल टॉस। ऑफसाइड पे ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ दायरे के फील्डर को बीट करना था बैकवर्ड पॉइंट पर, और ऐसा ही किया दानिश ने। ये बाउंड्री कराची को जरूरत थी, जैसे मैंने कहा विकेटें ऊपर नीचे गिरने से लग रहा था कि थोड़े से नर्वस हैं। बाउंड्रीज के आने से इनका एतमाद बढ़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। बाउंड्री पे मुख्तसर है कवर्स में, और एक मरतबा फिर उसी तरफ खेलने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर अब तैयार थे इसको हासिल करने के लिए। अगर बॉलर्स पे निगाह डालते हैं जो कि बाकी मौजूद हैं, तो यासिर शाह, खालिद उस्मान, आदिल नाज तमाम अपना कोटा मुकम्मल कर चुके हैं। शहाब निस्बतन महंगी साइड पर रहे हैं, उनके 2 ओवर बाकी हैं। फ्याज को मजीद 1 ओवर करने के लिए मैं कामयाब रहा था, बड़ी तादाद में, गो कि वो स्टेडियम शहर से बड़ी दूरी पर वाक़ है, लेकिन वहाँ पर जनूबी पंजाब के लोगों ने आकर 4 चांद लगाए। रावलपिंडी के स्टेडियम में हमेशा से एक अलग ही मज़ा आता है कि चांद लगाए। रावलपिंडी के स्टेडियम में हमेशा से एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि एक्शन के हर कोई बहुत करीब होता है। वहाँ पर लोगों को इस मैचेस को देखने का मौका मिला अब से 2 साल पहले। इसके अलावा फैसलाबाद में मुझे याद है कि जो सुपर 8 राउंड खेला गया था, जिसमें कराची फाइनल में पहुंचा था और रावलपिंडी की टीम ने फतह हासिल की थी, वो भी एक बड़ा टूर्नामेंट लेके गया था। लेकिन ये अहम है कि यहाँ पर आके लोग एंजॉय करें, हर उम्र के लोग, गो के कल शायद कुछ के एग्ज़ाम भी हों, लेकिन इसके बावजूद उन सब बच्चों ने आके यहाँ पर 4 चांद लगा दिए और एक यादगार फिनिश के मुंतज़र।
8 की एवरेज से अगर रन्स बनाए तो 24 रन 160 तक पहुंचा देगा कराची को, इससे ज्यादा की ख्वाहिश होगी। और शहाब की खासियत रही है गेंद को मूव कराने में कामयाब होते हैं, अपना एंगल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जो एंगल है उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो मैं 160 की बात कर रहा था वो एक मिनिमम होगा यहाँ कराची के लिए। ये देखिए गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन भी है इनका, इसलिए रिवर्स स्विंग भी हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप 160 की बात करें तो आप ध्यान में रखें कि कराची के पास सुहेल खान जैसा बॉलर भी है जो नई बॉल से बहुत ही लाजवाब बॉलिंग की है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। खराब लाइन पे गेंद कर दी है लेकिन आउट हो गए। इस बेजरत सी डिलीवरी पर अनवर ने अपनी विकेट थमा दी। शहाब की विकेट हासिल करने का सिलसिला जूं का तूं जारी। कराची को एक और धचका, अनवर गए। मैन विद द गोल्डन आर्म शहाब, यहाँ की कोई खास डिलीवरी नहीं थी लेकिन जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं एक विकेट उन्हें मिल गई और अनवर अली खुद को बदकिस्मत गर्दानेंगे क्योंकि जैसा कि ने कहा बेजरर डिलीवरी थी और अगर कुछ ना लगता तो ये वाइड मिल जाती। फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर था, ज्यादा बैट लगता तो 4 मिल जाते, लेकिन जब आपकी किस्मत अच्छी ना हो तो एक बिल्कुल फाइन एज लगा और सज्जाद ने बाकी का काम तमाम किया। अनवर चल दिए 4 रन बनाकर, कराची 136 पे 6। सुहेल खान आए तो हंसते मुस्कुराते हैं बैटिंग के लिए, लेकिन उनसे अब कई बड़े हिट्स की ज़रूरत है जो कि वो खेलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अब मुश्किल सफ़र हो गया अचानक से कराची के लिए। अगर आपने इस वक्त देखना शुरू किया है तो इब्तिदा में टॉप ऑर्डर में 2 बड़ी कंट्रीब्यूशन खुरम मंजूर और उमैर बिन यूसुफ की मौजूद थी। आज़म एक चौका और एक छक्का लगा चुके थे, वो तमाम रेसिपी बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद से ये जो वादी बन के एबटाबाद वालों ने जिस अंदाज से परफॉर्म किया है, सुहेल खान को उसका जवाब देना पड़ेगा। बड़ा तजर्बा इनके पास, 45 का बेस्ट, 127 के करीब का स्ट्राइक रेट। लेकिन जिस अंदाज से एबटाबाद खेल रहा है कराची में, महसूस ऐसे होता है कि अपने वादी एबटाबाद में मौजूद हैं। तो उन्होंने फतह कर रखा है अब तक इस ग्राउंड को शानदार फील्डिंग के साथ और अपने बेहतरीन बॉलिंग चेंजेस के साथ। यासिर शाह ने कप्तानी भी अच्छी और वही बात फिर कि जो फील्डिंग एफर्ट्स थी उसने पूरी टीम को उठा दिया। और आजम जैसे प्लेयर को जब आप आउट करते हैं तो वैसे ही आपका हौसला बढ़ जाता है। और जिस तरह का वो कैच था, मेरे ख्याल वो मैच टर्निंग मोमेंट साबित हो रहा है अभी तक। गेंद एक मरतबा फिर हवा में गई, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे और आउट। शहाब ने हैट्रिक पे आने का ये मौका हासिल कर लिया है। 2 गेंदें 2 विकेट्स, कराची डाउन और एबटाबाद होम टीम के खिलाफ टॉप पे। एक्शन मैन सुहेल खान बैट से कोई कारनामा नहीं दिखा पाए, थोड़ा सा जल्दी बैट का रुख उन्होंने मोड़ दिया। शहाब का जो एंगल है जो छोड़ता हुआ उन्हें जा रहा था उसको बिल्कुल वो समझ नहीं पाए और एक आसान सा कैच चला गया फखर के पास। ये देखिए एंगल सीम थी जो कि बॉल दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई जा रही थी। सुहेल खान इसको खेलने में नाकाम रहे और फखर जमान ने एक आसान कैच लिया। पहली बॉल के मेहमान साबित हुए सुहेल खान, कराची लड़खड़ाते हुए 136 पर 7। और इसी के साथ ये अहम मौका है कि अब शहाब इस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर बन गए हैं। 24 विकेट्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं और तीसरी विकेट के साथ वो हैट्रिक भी मुकम्मल कर सकते हैं। जब आप एबटाबाद का ख्याल जहन में लाते हैं तो एक तरफ वो खूबसूरत वादी, लेकिन दूसरी तरफ जफाकश लोग जो कि अपनी मेहनत के साथ उन जगह को आबाद करके रखते हैं। लेकिन आज ये एबटाबाद के बेहतरीन पोस्टर बॉय हैं आफ्ताब इब्राहिम, जो कि नौजवान बैटर हैं, 21 साल। इनको अपनी बॉलिंग से काम करना पड़ेगा लेकिन शोहरत रखते हैं ये लेट ऑर्डर में आकर डोमेस्टिक से पहले क्लब क्रिकेट में बड़े शॉट्स लगाने की। सिर्फ एक हैट्रिक हुई अब तक इस टूर्नामेंट में जो कि लाहौर के निसार ने हासिल की थी। शॉट थर्ड मैन पर थे इससे पहले यासिर, जो कि अब फ्लाई स्लिप की पोजीशन पे आ चुके हैं। इसके साथ साथ फखर जमान मिड ऑन पे हैट्रिक डिलीवरी। गेंद जारी है और चौके के साथ एंटी क्लाइमेक्स हासिल करने में कामयाब रहे। खूब दौड़ लगाई थी फील्डर ने लेकिन कीमती चौका हासिल किया कराची ने। रिएक्शंस देखें आप शहाब का, फखर जमान का। शायद वो इन स्विंगिंग यॉर्कर करने के लिए गए थे लेकिन बॉल लेग स्टंप की जानिब निकल गया और फाइन लेग का फील्डर ऊपर, तो आफ्ताब को
मौका मिला और 4 रन, हैंडी 4 रन, एक रन इस वक्त अहम है इस फाइनल मैच में। अच्छा कूल हेड दिखाया नौजवान आफ्ताब ने। नेक्स्ट टाइम हाफ वॉली जरूर थी, लेकिन बाकी का काम उन्हें करना था और खूब से किया उन्होंने। आफ्ताब लेफ्ट हैंडर है, उनके सामने ऑन साइड पर छोटी बाउंड्री मौजूद है। क्लब क्रिकेट में इस अंदाज के शॉट लगाते रहते हैं। अंडर 19 के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और जहां हम स्टोरीज की बात करते हैं, शाह फैसल वहां पर एबटाबाद की इन कहानियों के साथ साथ आफ्ताब बजाते खुद इस फॉर्मेट की एक जीती जागती मिसाल है। इनके बारे में बताया गया है कि इनके वालिद देख नहीं सकते, तो वो जो कुछ फॉलो कर रहे हैं जब से इनके फर्जंद ने क्रिकेट खेलना शुरू की, सिर्फ सुन के ही, और उनके कोचेज इनको बताते हैं कि वो किस अंदाज से खेलते हैं, किस अंदाज से बॉलिंग करते हैं, और वो जो ख्वाब जीने का, सक्सेस हासिल करने का एक बेहतरीन एम्बॉडीमेंट हो सकते हैं, उसकी सूरत में मौजूद है कराची के लिए। एक रन बन जाएगा और मुझे यकीन है अकील कि आपकी आवाज सुन रहे होंगे इस वक्त आफ्ताब के वालिद भी। सिंगल के साथ वही स्ट्राइक संभालेंगे। 18 के बाद 141 पर 7। ये दिलचस्प बात है कि अब तक एबटाबाद सेमीफाइनल तक पहुंचा, जो कि उनका बेहतरीन सफर था अब से 9 साल पहले के, लेकिन कराची 5 मरतबा फाइनल तक पहुंच पाया है, लेकिन वो एक मरतबा भी इस ट्रॉफी को जीतने में कामयाब नहीं हो सका। चाहे आप सुपर 8 के फॉर्मेट की बात करें या मजमूई तौर पर तमाम फॉर्मेट्स को मिलाकर टॉप ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन मौजूद थी। खुरम मंजूर ने 50 मुकम्मल की, अमाद आलम एक चौका लगा कर आउट हुए, लेकिन उसके बाद उमैर बिन यूसुफ की अहम इनिंग्स थी। आजम ने एक चौका और एक छक्का लगाया और वो मुड़ जाने वाला मोमेंट था, जिसके बाद से असद शफीक, अनवर, सुहेल, ये तमाम जल्द आउट हुए। अनवर और सुहेल पैर दर पैर डिलीवरीज पे, और उसके बाद अब चंद बड़ी हिट्स ही कराची को जगा सकती हैं, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट होगा। 12 गेंदें आना अभी बाकी, और गेंद मौजूद है फयाज के पास अपना आखिरी ओवर करने के लिए आएंगे पेविलियन एंड से। स्विंगिंग यॉर्कर की कोशिश एक मरतबा फिर। यहाँ पे कराची को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कम से कम 11 गेंदें वो पूरी खेलें। जिस तरह कल ऑल आउट हो गई थी पेशावर की टीम 19वें-20वें ओवर में। ये देखिए पिछले ओवर की विकेट्स, अनवर अली बदकिस्मत रहे, सोहेल खान जल्दी कर गए, लेकिन शहाब विकेटें लेना जानते हैं, इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं। ऑप्शंस क्या हैं बाउंड्री के लिए अब दानिश अजीज के पास, क्योंकि उन पे ही अब कराची की उम्मीदें हैं। कवर का फील्डर बाउंड्री पर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान बहुत ही कम गैप है। 2 फील्डर्स आपकी स्क्रीन पर थे और ये भी एक बड़ा गैप है, हालांकि डीप कवर पे यहाँ फील्डर मौजूद है। ऑफ साइड पर दानिश अजीज कहाँ बाउंड्री निकाल सकते हैं। लंबी बाउंड्री है, लेकिन वहां पर वो उसको कवर करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। स्लो वन का अच्छा स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, और आफ्ताब इब्राहिम नौजवान बैटर, उनके सामने ये उनका बड़ा इम्तहान होगा। दाएं हाथ से गेंद करने के लिए आते हैं, और चंद क्रिकेटर्स में से एक हैं जो कि अपनी बैटिंग के लिए बाएं हाथ का इंतखाब करते हैं, लेकिन दाएं हाथ से गेंद करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक हम देखते हैं तो एब्सोल्युटली ड्राई, तो कराची को कम से कम अब तक ड्यू के हवाले से तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो करना होगा वो उनके टोटल के साथ इनके बॉलर्स को करने का मौका मिलेगा। नई बॉल के साथ सुहेल खान का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी रन्स कराची यहां से बनाने में काम। कामयाब हो जाए, लेकिन वो बात की बात, ये 10 गेंदें बहुत ही क्रूशियल। ऊंचा खेलने के लिए गए हैं, लेकिन फील्डर के ऊपर से खेल दिया है। बड़ी तेज दौड़ लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, नहीं पहुंच पाएंगे। फखर भागे थे, कुछ देर कर दी उन्होंने, कुछ गेंद ज्यादा तेज, और दानिश का कनेक्शन भी खूब। 150 के करीब पहुंचा चौके के साथ कराची। अच्छा ऑप्शन चूज किया दानिश ने, कि 2 फील्डर्स थे जो ओवर के आगाज में जिक्र कर रहे थे कि यहां पे बाउंड्री मिल सकती है। हालांकि शायद बल्ले के बीचों बीच बॉल नहीं आई, लेकिन क्योंकि
दायरे के बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं थी और आउटफील्ड तो बहुत तेज है। जैसी बॉल पिच हुई फखर से दूर जाती रही। एक और बड़ी कारामद बाउंड्री यहां पे मिली दानिश को। तो 150 के करीब पहुंचेंगे। टॉस के मौके पे ख्याल था दोनों कप्तान का जो 160-165 का आमतौर पर टारगेट जहन में होता है 20 ओवर्स के मैच में, उसके करीब पहुंचने के लिए कामयाब होगा कराची। गो कि वो जो 180-190 का दबाव अगली टीम पे होता वो नहीं था, लेकिन मैच अभी भी बना सकते हैं इसे। और कल भी दोनों कप्तानों की जब हमने सेमीफाइनल्स में बात सुनी थी तो वो कंजर्वेटिव थे। हालांकि एक मैच में 170 चेज हुआ, एक में 178 चेज हुआ और आसानी से चेज हुआ। तो यहाँ रन कदरे बिलो पार लग रहे हैं, लेकिन आपको फिर सुहेल खान की ब्रिलियंस या आरिफ याकूब की ब्रिलियंस पे रिलाय करना होगा और फील्डिंग ऐसी करनी होगी जैसे एबटाबाद ने की है। अगर उनसे बेहतर नहीं कर सकते तो मुकाबला अभी बहुत बाकी है। जिस तरह दिलचस्प हमने क्रिकेट देखी है, अभी काफी क्रिकेट मजीद बाकी है इस मैच में। सीधा खेल के ऑलमोस्ट गेंद को कैच करने में कामयाब रहे थे इस सीजन के डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की अपनी आखिरी गेंद पे, लेकिन 150 रन मुकम्मल हुए। ये गेंद मजीद बाकी होगी इस ओवर में और अब आखिरी गेंद फेंकने के लिए आएंगे फयाज। 150 रन, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर है यहां तक पहुंचने का कराची को। वो 20 रन का ओवर जो T20 क्रिकेट में ज्यादा अनहोनी बात नहीं, वो यहां कराची को कहां से कहां पहुंचा देगी। हिट है शायद आफ्ताब के पास इस गेंद पर। रिवाइज करने में कामयाब रहे, कनेक्शन मिल गया है और गेंद जाती चली गई। आफ्ताब को एक मरतबा फिर हाथ खोलने का मौका मिला। दूसरा चौका लगाया नौजवान ने। एक ओवर बाकी 154 पे 7। लाजवाब क्रिकेट। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि फयाज फुल पिच बॉल कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में बहुत जल्दी आ गए थे। यहां से वो किसी भी लेंथ को मनूवर कर सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से गेंद भी मर्जी का मिला और अच्छा कनेक्शन हासिल किया। लगता है काफी प्रैक्टिस की हुई उन्होंने शॉट की और जब जरूरत थी ऐसे मौके पर एक्सिक्यूशन अंडर प्रेशर। लाजवाब बैटिंग आफ्ताब की। 19 के बाद 154 पर 7। इस कराची की क्रिकेट में वो शोहरत रखते हैं तो ना सिर्फ ये कि लेट ऑर्डर में बल्कि ऊपर आकर भी ऐसे शॉट्स खेलने की, लेकिन ये एक मुख्तलिफ स्टेज है जहाँ पे ऑलरेडी हम समझ सकते हैं कम से कम 6-7 हज़ार का मजमा इनके सामने है और फिर वो प्रेशर जो कि बिलियंस ऑफ पीपल उनको देख रहे होंगे लाइव, जो कि हीरो बनने का चांस है अपने होम टाउन के लिए। शहाब फिटिंगली जो कि टॉप विकेट टेकर हैं एबटाबाद के, वो आखिरी ओवर करने के लिए आएंगे। फील्ड जो कि लंबी बाउंड्री है कवर्स में, उसको रोक के रखा है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर की जानिब जो कि दानिश का फेवरेट एरिया है इनसाइड आउट खेलने के लिए वो रीजन खाली है और उसके साथ साथ मुख्तसर बाउंड्री पे प्रोटेक्शन पूरी मौजूद है। लॉन्ग और मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हुए। गेंद खड़ी हो गई है कि इसके नीचे आके कैच करने का मौका है और किसी और की परवाह नहीं की, खुद आए शहाब। 25वीं विकेट हासिल कर ली है। दानिश का फैक्टर खत्म। 8वां नुकसान कराची का। वाह, लाजवाब बॉलिंग यहां पर। इंपैक्टफुल बॉलिंग की है शहाब ने और जब भी उनकी टीम को जरूरत पड़ी विकेट की उन्होंने डिलीवर किया। एक मरतबा फिर बहुत ही जहानत से दानिश चलते हुए विकेटों के सामने आ गए थे। नो बॉल का तो इशू नहीं है, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा स्लिंगी आर्म है, लो आर्म है इनका और इनको नीचे घुसकर ऊंची एलिवेशन के साथ शॉट लगाना आसान नहीं होता। और यही दानिश अजीज को भी मालूम हुआ क्योंकि वो वापस जा रहे हैं। 22 अच्छा खेले 12 गेंदों पर सिर्फ। कराची 154 8 का आउट। और अब ये मरहला आन पहुंचेगा शाह फैसल जब जो एजाज हासिल किया है इनसे, यानी कि अब तक टॉप विकेट टेकर थे आरिफ याकूब, उनसे लीप फ्रॉक करके आगे जाने में कामयाब रहे हैं शहाब। वो नहीं को गेंद करने के लिए आएंगे और अगर तो वो दोबारा इस एजाज को हासिल करते हैं इस टूर्नामेंट में तो कराची के लिए कुछ जान रहेगी, वरना ये एक फिटिंग मौका है कि जहां पर इससे पहले के टॉप विकेट टेकर अपने सामने के उससे पहले जो सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करने वाले थे उनको गेंद करने के लिए आएंगे। शोहरत इनकी भी है, क्लब क्रिकेट में हर कोई इस अंदाज के शॉट्स खेलने के लिए जाता है, चाहे वो ये क्लब्स की हो या फिर मल्टीनेशनल का उन कंपनीज का टूर्नामेंट। बड़ी हिट चाहिए कराची को।
दो काम कर सकते हैं आरिफ शहाब को रोकने के लिए। एक तो अपनी विकेट ना दें और उससे इम्पोर्टेंट कि गेंद को टच करें और भाग जाएं, क्योंकि आफ्ताब अच्छा खेल रहे हैं। उनको ये 3 गेंदें हर हाल में खेलनी चाहिए। 2 गेंदें हो गई हैं और आफ्ताब नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। कराची के लिए आइडियल नहीं है ये। आरिफ को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, शायद आफ्ताब को स्ट्राइक पर लाएं और दूसरे एंड से खेल देखें। स्विंग में से एक मरतबा फिर और एक और मरतबा विकेट हासिल हो जाएगी। भागना शुरू किया था दूसरी जानिब से आफ्ताब ने, लेकिन दूर ही रह गए और डायरेक्ट जाकर स्टंप्स पे इस इंपॉर्टेंट विकेट को हासिल किया है। नवा नुकसान कराची का। बहुत ही खराब क्रिकेट यहाँ पर। बल्ला घुमाते रहे, उनका काम तो यही था कि शायद आफ्ताब को स्ट्राइक पर लेके आते। आफ्ताब ने इस चीज को रियलाइज किया, उन्होंने चांस लिया कि शायद विकेट कीपर थ्रो मिस कर जाएं, लेकिन सज्जाद की थ्रो डायरेक्ट विकेटों को जाकर लगी। आरिफ याकूब काम सही से अंजाम नहीं दे सके और उसका खमियाजा भुगता आफ्ताब ने। अच्छा यहाँ पे निशाना बांधा और सज्जाद ने ग्लव्स पहने रखे, लेकिन उसके बावजूद सीधा विकेटों से जा टकराई बॉल। आफ्ताब की अच्छी नजर आती हुई इनिंग्स अपने इख्तिताम को पहुंच गई। 154 पर 9। 3 गेंदें बाकी और कराची एक और हजीमत का सामना करने से बचने के लिए उनको इन 3 गेंदों को सरवाइव करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी हिट्स चाहिए। ऐसा किया है शहनवाज अली दहानी ने, कभी दुबई में कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन आज ये 3 गेंदें अभी भी मैच को वापस लाने में कामयाब हो सकती हैं कराची के लिए। ऑन साइड पर खेलने, जो कि टिपिकल टेल एंडर्स का शॉट होता है, कोशिश करते हैं। शानदार बॉलिंग दूसरी जाने, अपने पेस को चेंज कर रहे हैं और उनके ख्याल के मुताबिक कैच भी निकला था, लेकिन अंपायर को मुतासिर ना कर पाए। इमोशनल हैं शहाब, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं डेथ ओवर्स में। सेमीफाइनल में 5 पर और फाइनल में भी पूरा मौका है। अगर आप एबटाबाद का जायजा लें तो आप सेमीफाइनल में पेशावर को ऑल आउट करते हैं, जो टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम थी, और अब आपने कराची के 9 आउट कर लिए और तकरीबन उनको भी बोल्ड आउट करने चले हैं। यहाँ तो फिर दाद बनती है और चैंपियन टीमों का नॉकआउट मैचेस में इस तरह डोमिनेट करना वो चैंपियनशिप जिता देता है। बड़ी मुश्किल से कनेक्शन हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन ये थ्रो जाकर शहाब की ना लग सकी। पलट के अपने आप को मुज्तमा करके वक्त था, लेकिन वाइड गई थ्रो और अब आखिरी गेंद तक सरवाइव करने में कामयाब कराची। शहाब का निशाना थ्रो का अच्छा नहीं, कल भी यहीं से तकरीबन इसी डिस्टेंस से उन्हें चांस मिला था और वो मिस कर गए थे, और आज भी शाहनवाज धानी दूर दूर तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थे, लेकिन यहाँ इनका निशाना फिर चूक गया। लेकिन एक कीमती रन मिल गया कराची को। 155, एक बाउंड्री आए तो 160 तक पहुंच सकती है कराची, और कुछ अपने बॉलर्स को हौसला देंगे कि कुछ रन जरूर मौजूद हैं बोर्ड पे डिफेंड करने के लिए। कल उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की थी 33 रन देकर, और आज अगर ये हासिल करते हैं अपने आखिरी गेंद पर विकेट जाते जाते, तो करियर बेस्ट बॉलिंग 2 रातों में 2 मरतबा वो कर लेंगे एबटाबाद के लिए। लेकिन इसके साथ साथ बड़े शॉट को अवॉइड करना जरूरी अब तक कामयाबी के साथ किया है। आरिफ याकूब सामना करेंगे आखिरी गेंद का, और एक मरतबा फिर मिस किया, रन भी ना बने दिया। सोने जैसा कीमती आखिरी ओवर शहाब का। कराची की उम्मीदों पे अब तक तोस पड़ी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग का डिस्प्ले चाहिए होगा पहली मरतबा नेशनल T20 जीतने के लिए कराची को। 3 हवाई फायर आरिफ याकूब के, बल्ला ही घुमाते रहे और गेंद और बल्ले का मिलाप हुआ नहीं। कराची 155 पर सिमट गई 20 ओवर्स में। एक मौके पर यह स्कोर 170-175 के करीब लग रहा था, लेकिन एबटाबाद की फील्डिंग और बॉलिंग की दाद देनी होगी। अंडर प्रेशर जिस तरह उन्होंने अपने नर्व्स को काबू किया, उसकी दाद देनी बनती है, और अब उन्होंने अपने बैटर्स को एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है कि जाएं और ये 156 रन करें और चैंपियनशिप जीत लें। जिम्मा शाहनवाज धानी और आरिफ याकूब की जिम्मेदारी अब बनेगी सुहेल खान के साथ कि एबटाबाद को रोकें, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रहे हैं एबटाबाद। हल्का नीला कलर छाया हुआ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में एबटाबाद का, और ऐसे खेले हैं जैसे एबटाबाद ही की वादी हो। इब्तिदा से उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, एक तरफ से आदिल नास और दूसरी तरफ से शुरुआत की थी खालिद उस्मान ने, जिन्होंने जगह बनाई थी प्लेइंग 11 में।
हमाद आलम और खुर्रम मंजूर इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आए, लेकिन वहां से जो धचका लगा उसके बाद दरमियान के ओवर्स में उन्होंने रिकवर कर लिया था, लेकिन फिर विकेट्स पे विकेट्स और शानदार फील्डिंग के जरिए से एबटाबाद ने शिकंजा कसे रखा और अब उनकी टेल अप है। आधा काम उन्होंने कर लिया, सिर्फ मंतकी जाम तक पहुंचाना है सेंसिबल अप्रोच के साथ। नौजवान टीम एबटाबाद की यासिर शाह की क़यादत में हौसले बुलंद, पहली मरतबा जीतने के लिए नेशनल T20। और वजह तौर पे इस दाद के मुस्तहिक हैं एबटाबाद के बॉलर्स और फील्डर्स का तमाम सपोर्ट स्टाफ इस वक्त बहुत खुश। मैनेजर जाहिद सईद Well, he now becomes the leading wicket taker of this tournament after this first innings with his brilliant bowling spell here. I've got with me Abbottabad's Shahab Khan. Shahab, आपने 4 बहुत ज़रूरी विकेट्स लिए इस क्रूशल मैच में और आपने कराची की टीम को काफ़ी लिमिट किया रन्स लगाने के लिए स्कोर बोर्ड पे। जी बिल्कुल, इसके लिए प्लान किया था कि उनको कम रन्स नहीं देने देंगे, तो जो प्लान किया था जो प्लान किया था उसी प्लान पे बॉलिंग की और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अच्छा, कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस, और आज जो आपकी टीम थी उनकी फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन रही थी, तो एज अ बॉलर आप काफ़ी खुश होंगे अपनी टीम से फील्ड में। जी बिल्कुल, देखा जाए तो माशाल्लाह थ्रू द टूर्नामेंट हमारा फील्डिंग बहुत अच्छा हो रहा है और मैनेजमेंट भी बस यही कहते हैं कि आप में माशाल्लाह एबिलिटी है, लेकिन फील्ड पे काम करो और कैचेस, जैसे कि आपने कहा कि कैचेस विन द मैचेस, बस यही हुआ। अच्छा, लास्टली अब आप लोग चेस करने जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का क्या प्लान है, उसको कैसे देख रहे हैं? बस प्लान तो बैटरों को दिया गया है कि बस रन इतना नहीं है, इंशाल्लाह इजी चेस हो जाएगा जैसा हमारा बैटिंग लाइन चल रहा है। चलिए, well, very well bowled yet again and all the best for the rest of the game. Thank you. It's back to the comms box now. Thank you. गुड स्टफ शहाब, जो कि मैन ऑफ द मोमेंट है एबटाबाद के लिए। खुर्रम मंजूर और हमाद आलम शुरुआत करने के लिए आए थे बैटिंग की, और खालिद उस्मान के खिलाफ एक चौका ऑफ द बैकफुट लगाया और उसी सिलसिले को शुरू कर रहे थे, लेकिन हमाद आलम एक चौका लगाने के बाद चूक गए। उन्होंने गेंद को हवा में उठाया, फ़खर जमान कैच करने के लिए तैयार थे। फिर उमैर बिन यूसुफ और खुर्रम मंजूर के दरमियान के ओवर्स में बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, जिसमें हर तरफ के शॉट्स लगाने में कामयाब रहे। कदमों का इस्तेमाल भी, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर सबके खिलाफ वो चार्ज करते रहे, लेकिन फिर फाइनली ये ब्लड को ड्रॉ करने में कामयाब है। खुर्रम मंजूर की 50 के ऑलमोस्ट फौरन बाद, जिसमें ऊंचा खेलने के लिए गए थे उमैर बिन यूसुफ और वहां पर कैच लेने के लिए तैयार थे आफाक। उसके बाद आए आजम, एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन उनका यादगार कैच हासिल किया कामरान ने और कराची को खामोश करवा दिया। ये फिर वो मोमेंट था जिसके बाद कराची दोबारा प्रॉपर्ली उठने में कामयाब ना हो सका। शानदार फील्डिंग रही, कभी अहमद कभी आफाक, सब बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन कैचेस रहते रहे, और ये अहमद का मोमेंट था जिन्होंने डाइव करते हुए नाकाबिले यकीन कैच को अपने हक में मोड़ा। दानिश की रेजिस्टेंस भी दरमियान में मौजूद रही, जिन्होंने 12 पे 22 बनाया, लेकिन दूसरी जानिब अनवर अली जो कि बड़ी शॉट के इंतजार में थे, वो और अगली गेंद पर सोहेल खान पैदल पर आउट हुए, और उसके बाद से कराची दोबारा उठने में कामयाब ना हो सका। दानिश ने आखिरी लम्हा तक अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन आखिरी ओवर में जाकर वो भी आउट हुए जब शहाब ने अपने चौथी विकेट को हासिल किया इन स्टाइल, और यूं ये इनिंग्स अपने अख्ताम तक पहुंची। 155 रन तक पहुंच पाया 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 156 रन का टारगेट है, जो कि बनते हैं ऑलमोस्ट 7.25 रन पर ओवर के लिए। क्या कराची को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करनी पड़ेगी, एबटाबाद का पलड़ा भारी, लेकिन क्या होगा, कौन जीतेगा पहली मरतबा नेशनल T20? कुछ लम्हात में एक मरतबा फिर आपके साथ मौजूद होंगे, इसके लिए नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से।
Time for the chase. 156 to get at 7.8. You just feel maybe Karachi White's performance batting first is a bit half-cooked. They started off well, but the mid-overs, over number, well, somewhere around 13 to 16, they lost 3 wickets. Azam Khan, Umair bin Yusuf and Asad Shafiq back-to-back from 108 to 116. That was the moment where the game completely changed. And then some really good catching from the Abbottabad fielders. Great bowling. And you feel that Karachi Whites couldn't finish on a high. Just 1 run in that last over. So Abbottabad, 156 to win. They feel that they've got the game in their grip. All they need is Fakhr Zaman and Sajjad to fire in the power play and take control of the game straight away. If they allow Sohail Khan, Shahnawaz Dhani to get a wicket or 2, then the situation would be quite different. So it's all to play for, and maybe the first 6 overs will decide the fate of the game, trust me or not. The first 6 overs will really tell us which way this game is heading. Asad Shafiq has got to bring in all his experience out today to defend the score. And once again, I don't and I shouldn't take away anything from Abbottabad. Their bowling and more than anything else, their catching has been superb. So we're about to start the chase for Abbottabad, and it is Sajjad with 12 games, 441 runs, a mighty impressive average of 40, 550s to his name, and all the confidence to back all these stats up. And then on the other end is Mr. X Factor, Fakhr Zaman, nearly 6,000 runs, a decent average of 29, at a strike rate very destructive, 135 with 41 50s and 300s. So loads of experience and firepower at both ends for Abbottabad, and a lot of credit goes to their bowlers and their fielders, especially the way they caught, the way they were agile in the field. And now Karachi have a very moderate 156. And wickets will be the key for Karachi. To start off, Fakhr Zaman is definitely the one that they would like to have straight away. And who better than Sohail Khan with the new ball in this tournament? He has been one bowler who has made the ball talk and has stood apart with the swing bowling. There we go, the swing master. It'll be interesting to see this contest, Fakhr Zaman versus Sohail Khan. If Sohail can get that ball to curve into Fakhr, and the way Fakhr operates, this will be a moment of real contest between the two. Yes, talk about Sohail Khan and the swinging deliveries that we have been seeing and loving. Length will be very important. How he bowls this initial spell with the new ball, the length will be the key, because we have seen the ball swing, and if he can pitch it up against Fakhr, that is where he can possibly get the wicket and also be more destructive. But that would be something brave to do, to pitch up to Fakhr, who is in good form. But if the ball is swinging, you've got to take a chance. Very straight and getting that bit of shape coming into the left-hander. And it was pitched up in the driving zone. And Fakhr Zaman, he's also somebody with lots of experience. He knows that is his vulnerable area. Have a look at the pitch. You hardly find an apparent crack. It's all very well binded, rolled in, looks wonderful. But underlights early on, the ball does do a lot at times, especially when it's in the hands of Sohail Khan, and it is now. And for Karachi, it is a very, very important spell. Down the wicket, just meeting the ball early and putting it into mid-wicket.
Yes, use of the feet, and that is one way of negating any swing available to get to the pitch of the ball. Before it starts to do anything, you do your stuff, and Fakhar Zaman did that exactly. Coming down the pitch, came down a good meter and a half, and then from there he just flicked it. He knows he just cannot allow Sohail Khan to swing the ball. So both know what to do. Fakhar, where to disturb him. Yeah, pitching outside leg. Two different ways how we've seen openers handling that new ball. Here you see Fakhar coming down the wicket and meeting it early, negating any swing. Khurram, on the other hand, goes very deep and tries to get underneath the ball. Both of them trying to put them off their lengths. Yes, both, if you just see them standing, you can tell what they will do. Because Fakhar, with his feet very close together, there's a good chance that he'll step out. And with Khurram standing with both his feet quite apart, he will not move much. So as a bowler, you can predict who will do what. Yeah, it goes away this time. Some carry as well. Wickets will be the key. That is it. Power play, at least 2. Yes, Sohail Khan, he's swinging the ball, but needs it to be just closer to that off stump, and maybe the line a bit more closer to the stump and the length a bit fuller. And that can be the business area where slips or the keeper can come into action. Width will be good for the batters, so he needs not to provide the width. Oh, coming in now. Good over this. They end up with 6 for none. Wickets will be the key, and Karachi, if they want the result to be in their favor, they will have to pick up wickets, and that too on regular intervals, because the total isn't such that you allow the batters to go through till the 15 overs and then expect to win this game. That will be something which will be hard to do, and both teams know that. Both are experienced enough to know that the initial 10 overs, whoever wins, there's a likely chance that they will win the game. Shahnawaz Dhani will have to be careful against Fakhar Zaman. He's got pace. Any width he gives outside the off stump, with this kind of bounce available and what bounce he gets, Fakhar is going to go at it. So ideally, as long as he stays as close to his body, he'll be in the safe zone. Would have liked to see one short mid wicket as well for Fakhar, because he bowls short of length, and if he can bowl within the stumps, he can cramp up Fakhar, who likes to use his feet, but he also knows that Dhani is not somebody who likes to pitch the ball up. He will just keep banging in the ball short of length like he did this one. And when there is less room, Fakhar does not look comfortable at all. That's exactly where he wants to be, and he should be as a bowler against Fakhar. Sometimes you feel with Dhani that he will be getting some dot balls bowling in that area, and he wants to try something different, and that's when he gets hit. There, keeping him cramped for space. That is why I thought that an extra fielder on the leg side at short mid-wicket position can be handy, because if you're bowling this line and length, then through the covers is not something that will be seen often, unless the batter decides to move with his feet and, you know, he steps down the wicket like he did. But he also knows that Dhani is quicker in pace and shorter in length, so that exaggerated movement out of the crease will be kept in check. Yeah, there you go. Just no space to swing. Well, you talk about that short mid-wicket or someone, the captain will have to show some kind of, what's that word? That you have faith in your bowler. He's going to bowl in that zone and will take a chance, because if you're going to protect him, then you are losing out on an opportunity. Now, they've got a deep square as far as the person outside the circle goes, and he's got a very wide third.
Yes, in the last few games that has been the norm. But he has to think out of the box, because this wicket, this man, Fakhar Zaman, if he stays there any length of time plus the 10 overs, game will be decided. When you can build up on those dot deliveries, then you, as a bowler, know it that he's trying to search for a boundary that will extract a mistake. Fakhar, usually we see in the power play, he takes a bit of time. He will feel that he's faced, what, 7 balls for 5 runs, but then he starts getting his eye in, and then he will hurt you later on. So good to get him early. Fakhar doing the sensible thing there, not quarreling with the bowler. He bowls good line and length, he respects that, takes the single. He knows the initial onslaught matters a lot. And these two bowlers with the new ball have bowled brilliantly so far in the tournament, especially in the last few games. Sohail Khan and Dhani have been very accurate, and they've been among the wickets. And so Fakhar Zaman, he knows that he just needs 1 or 2 overs to get the momentum back, so he will not be in any hurry. So Karachi cannot just sit back and wait. They have to try and create chances and also take them. High in the air, will take some catching. You can't drop these. It's the final. The glove man under it, and he's taken that. Wow, a somersault, and that's a brilliant catch in the context of the game. Wow, Azam Khan, you beauty. That was a special take, running backwards. It was sky high, and the fielder definitely would have had trouble, but Azam Khan and his confidence that he went under the ball, and then he shouted at the fielder that it's going to be his catch, and finally ended up taking a brilliant take, giving Karachi their first wicket and putting some confidence back in his team. And Abbottabad have something to think about, because one of the men in form is gone. Well, I said it, 4 dot balls and a single. Fakhar didn't take the pressure, but the non-striker did. He felt the need to go for it, and what a catch this is. Very tough, running backwards, and then just to get all the force going into the ground, takes a somersault. Sikandar, I tell you, Moin Bhai will be a very proud father watching this catch, because he was a great athlete, and watching Azam do this, what he just did, running backwards and then this acrobatic take, and then how he stabilized himself, and also the pressure that would have been on him because he was running backwards and there was a fielder who was just standing his place. It's showing that he has a lot of confidence in his ability, and he has taken a very important catch, and these takes in a pressure situation in a game like final are never easy. So we have another experienced batter, Kamran Ghulam, in 72 games, averages 29, nearly 1500 runs, and a lot of good form in this tournament. And now his side needs him and Fakhar to provide them with some good start. It's going down the leg, yes, but he's getting that shape into Fakhar Zaman. Well, that was one catch. You need those catches to stay in this final. That's the last ball. Also the understanding from that deep third fielder to stay out of the way. Good decision. That wasn't an understanding. If anybody stands and watches Azam coming his way, he will definitely go somewhere else. That's not a good meeting point. That's a smart decision. Yeah, it's a life-saving decision. Stay out of harm's way. Oh, inside edge will be a boundary, but living dangerously. That was mighty close to that leg stump. Sohail Khan winning the moral battle there, but in the end results goes in the favor of Fakhar Zaman. He was very lucky to survive that, inside edging it. He has lost his wicket like this so many times in international cricket. Ball is swinging and it's also seaming a bit, and Sohail Khan
The man controlling the ball brilliantly from the last few games. Wasn't lucky on this occasion, but he will know that somewhere along the line he can pick up an important wicket. And if that is Fakhr, it will be great for his team. Still got that slip. Leading edge, but of course again doing a little too much. Yes, the ball is just landing on leg or maybe outside leg and going further away. So not a chance to be getting a leg before wicket from this line and length, but definitely is bowling well. Just needs a bit of adjustment to bowl it a bit more fuller, and this time he is definitely going down the leg side, and Fakhr is not easy against Sohail Khan. He doesn't know which way the ball is going. And that wicket that has fallen has also put some pressure, because we saw him use his feet, but now he will think twice before he takes a chance like that, because they just cannot afford to lose himself, and then more pressure will come on their young batters. That ball where he got that inside edge for a boundary, not only it swung, it hit the surface and came in. This is wrist. He's got protection there. Love to see that catch again. Sajjad was a big wicket. Shahnawaz Dhani. And he was nowhere in control of that shot. That was in the night sky for a long time. And there. It's a good start for Karachi. They've got one wicket, they're looking for other, they have to keep on taking wickets, but at the same time they've also squeezed the runs. So we are almost at the end of the third over, just one ball to go. It's only 13, and I'm sure Kamran and Fakhr will be hoping that they can see off these two new ball bowlers. So far we haven't seen any towels out, so that means no dew is there, not a sign of dew so far, which is good for Karachi, which will keep them in the context pretty even. What the wicket has done is that really taken that run rate down to 4.5. And he plans to keep it there again. If he starts a little further outside the off stump and then probably finish in the stumps. He's getting that swing, but it's going down. Yeah, 3 gone now, and it's 14 for 1. And against the full and swinging ball, Fakhr hasn't seemed confident. In fact, he'd been struggling against the full and swinging delivery. Just have a look at that ball coming in, and Fakhr completely missing the line. Lucky that the ball wasn't within the 3 stumps. And Sohail Khan just missing by minute margins. Bowling well, but just missing the target. I'd still give him one more over. Just the final, and the ball is swinging right now. They're not getting runs. Good captaincy, Sikandar. I don't know if that's going to happen. Depends on this man. The way the ball is doing a bit, and also off the pitch in the air, and Sohail Khan is in rhythm, I think they should go with one more over of him, because Fakhr hasn't got away the kind of start that he likes to, and he definitely is going to take a chance here and there. And now might be the time in the next couple of overs, something has got to give. They just cannot play the power play like this. And also, it's not a big score to get, so that you might not get to the final overs. It might be done and dusted much earlier. So you've got to use your resources right then when the side is not looking to attack. Yep, no. Yeah, both of them bowling good areas. Like any other batter, Fakhr also struggles with
no room when it's straight ball directed within the stumps, closer to his body. There are not many options that he has. Then he wants to go across the line, which against the new ball and Dhani's pace is not easy. And we know that Fakhr can be very, very destructive, but at the moment, Karachi have the rhythm. Both the bowlers bowling exceptionally well. Tries to make room, but no gap found out of Yaqub there. So those persistent lines from Shahnawaz Dhani in that previous over earned him the wicket of Sajjad. 4 dots, a single, and then Sajjad just felt the need that he has to get a boundary because he was at the non-strikers throughout the over. So you can replicate that. Again, he's got 2 dots. You've got to continue where you are, the way you play, the way you're bowling. If he's not scoring against you, you surely will be rewarded soon. There, he is gonna have a go at you. That's the moment you want. A sudden rush of blood there from Fakhr. Yes, all his options are power options. At times, you can clearly see that he thinks like a power hitter only. Because good lines, good batters will maneuver that with the use of their wrists or maybe opening the face of the bat, running one down to third man, rotating the strike, allowing the other batter to take over. But in his case, typical thinking like a power hitter. And he wants either big chunk of this ball. Good call from Kamran Ghulam for that single. Still a good over going on. So coming back, we've got 2 good balls left in our stint. Only the time will tell what changes would be coming in terms of bowling. But if he goes with Sohail and leaves that 1 over for the power play for another bowler to come, that'll be good. But if he brings in Aftab or someone, Fakhr will try. Well, for me, he should go with Sohail Khan because this match is not lasting the entire quota if the wickets are there. If especially if Fakhr is there 3 overs before he can finish the game. So now is the time. He's struggling, the ball is swinging, and Sohail is in rhythm. One more run. Yeah, I mean, one thing's for sure, they got to bowl them out. Unless and until they really keep bowling like this and take that required run rate to above 10. Right now it's 8.6. So the key would be get the wickets, 9 of them. Sometimes you feel maybe 155 in a final can be a score that you can fight with. They only got 1 run in that last over. Some really good bowling from Abbottabad bowlers, some brilliant catching. They didn't really allow them to score anything from over number 13 to 20. In 2 minds, then lets it go, thinking it's a wide. 4 overs bowled, 16 for 1, Abbottabad. ये आपको अक्सर नजर आएगा। आजम खान जान है कराची की और उनका होम क्राउड। जिस तरह की आज आगाज किया था, ज्यादा लंबा खेल नहीं पाए लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर हमेशा रहेंगे। सोहेल खान बहुत लुत्फ आता है जब भी ये बॉल करते हैं। थोड़ा सा लेग साइड पे स्ट्रे किया, 2 की कॉल है, काफी बड़ा गैप है, आराम से 2 रन बन जाएंगे। मैजिक डिलीवरी करना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर से आउट स्विंग, बॉल स्विंग जरूर हुआ लेकिन लाइन ठीक नहीं थी इस मरतबा। अच्छी कॉल है यस शफीक की। सोहेल खान प्रोलिफिक बॉलर हैं, कराची के एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छे रिदम में दोनों तरफ स्विंग करना जानते हैं, बैटर को रीड करना जानते हैं। और अभी कामरान और फखर का बल्ला उतना खुला नहीं है, अगर यहाँ पे एक और विकेट हासिल कर लेता है कराची तो शायद एबटाबाद के लिए मुश्किल होगी।
विकेट टू विकेट बॉलिंग सोहेल खान। और जो एक कंसर्न था मैच के शुरू होने से पहले कि शायद ड्यू आएगी या ड्यू का कोई इम्पैक्ट होगा, अभी तक सेकंड इनिंग शुरू हो चुकी है, अभी तक तो ड्यू के आसार नहीं है। यहाँ ये बताते चले कि जो एक स्प्रे होता है वो किया गया और अच्छी खासी मिकदार में किया गया है, जिसकी वजह से ड्यू आपको कम नजर आएगी। हवा भी यहाँ चलती रही आज कराची में, और इसके अलावा इनिंग्स ब्रेक में जो रस्सा है वो भी चलाया गया ग्राउंड में, तो फेयर कंडीशंस हैं दोनों टीमों के लिए। और सोहेल खान का रोल इंपॉर्टेंट है, जैसे मरीना ने कहा, एक स्लिप दे रखी है असद ने। थर्ड पीछे चला गया और पॉइंट आगे आ गया। अब रूम दिया और स्मैश कर दिया, इसे फील्ड को अबूर करने में कामयाब हो गए। थोड़ा सा बॉल स्विंग जरूर हुआ, लेकिन कामरान की अटैकिंग इंटेंट उन्हें गेंद के इतना करीब ले गई कि उसने ज्यादा असर नहीं किया। अच्छी गेम अवेयरनेस कामरान गुलाम की। इस गेंद से पहले इन्होंने थर्ड को पीछे भेजा और पॉइंट को ऊपर बुलाया और वहीं पे गैप क्रिएट हुआ। ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन 4 रन हासिल जरूर किए। कदमों का इस्तेमाल किया, अटैक किया और जो बॉलर का प्लान था उसको काउंटर किया। सोहेल खान को आप गुस्सा दिलाएं, वैसे गुस्से में रहते हैं, ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अच्छा कमबैक किया, मूवमेंट है, लेकिन वो जो इन द ईयर लंबा स्विंग सोहेल का हमने देखा था वो आज नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल कल की ही बात है, दोनों तरफ स्विंग अच्छा खासा कर रहे थे। यहाँ पे कैरी जरूर है, लेकिन वो स्विंग जो तंग करता है बैटर्स को वो नहीं है। और अगर सोहेल खान नहीं कर पा रहे तो शायद ही कोई और बॉलर कर पाए। एबटाबाद के बॉलर्स को शुरू में थोड़ा मिला था, आदिल को हमने देखा था अच्छा कट होके अंदर गेंद आया। ये जरूर है कि कल सोहेल खान ने यहाँ से पवेलियन एंड से बॉल किए थे, आज सामने के एंड से बॉल कर रहे हैं। वही इन स्विंग की तलाश थी, लेकिन बॉल उस तरह अंदर आया नहीं। लेकिन यहाँ पे कराची के ओपनिंग बॉलर्स ने एबटाबाद को ज्यादा दूर जाने नहीं दिया पहले 5 ओवर्स में। कराची ने भी बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया था पावर प्ले में, अभी ओवर बकाया है। थोड़ा कवर जरूर किया था आखिरी ओवर में, लेकिन एबटाबाद के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ये दोनों कामरान और फखर यहाँ पे सेटल भी हो जाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहें, एक आधी बाउंड्री अब हर ओवर में हासिल भी करते रहें, तो ओवर अटैक करने की जरूरत भी नहीं है। और बॉलिंग अच्छी हो रही है तो इतने सेंसिबल होना चाहिए आपको कि आप अपना प्लान चेंज करें। और जाहिर है कराची की बॉलिंग लाइनअप में आपको आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अनवर अली भी मॉल करेंगे, इसके अलावा आरिफ याकूब, दानिश अजीज, 2 स्पिनर्स हैं। इस मरतबा स्लोअर बाउंसर, फखर ने गेंद के आने का इंतजार किया और इसे राह दिखा दी बाउंड्री की जानिब। अच्छा शॉट था, अच्छा एडजस्ट किया पेस के साथ फखर ने। इस शॉट में आपको एक्सपीरियंस की झलक नजर आई। कंट्रोल किया एंड में, अपनी रिस्ट को रोल किया ताकि गेंद को नीचे रख सकें, क्योंकि बॉल राइज करता जा रहा था और यहाँ पे फील्डर सर्कल में मौजूद था, इसलिए ओवर हिट नहीं किया। ये एक्सपीरियंस है आपका। आखिरी गेंद पे 4 रन हासिल किया, अच्छा ओवर जा रहा था, अदरवाइज सोहेल खान का 27 पे 1। 5 में 27 पर 1। बहुत ही जबरदस्त शाम है यहाँ पे और ज्यादातर लोगों ने अपना डिनर कर लिया होगा। मरीना, आपने भी डिनर किया है और डिनर के बाद क्या होना चाहिए? डिनर के बाद ये होना चाहिए टपाल्टी। जिस तरह का यहाँ मैच चल रहा है, होम क्राउड, आपकी होम टीम खेल रही है, शानदार मौसम और टपाल्टी इस लुत्फ को दुबारा कर देती है। मैच का लुत्फ अपनी जगह, और जो ऑप्शंस की बात कर रहे थे अनवर अली ने इस टूर्नामेंट में, ये पहले इनकी एबटाबाद की बैटिंग लाइनअप देख लें। एतजाज और आफाक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पर फखर का रहना बहुत जरूरी है मिडल में। अनवर अली आ गए हैं अपनी नए हिकमत अमली के साथ, छोटे रनअप से अपने पेस को मिक्स करते हैं, वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी फील्डिंग, ऑकवर्ड बाउंस था, बहुत अच्छे से एडजस्ट किया यहाँ उमैर बिन यूसुफ ने। डायरेक्ट हिट पे इट्स ऑल हैपनिंग। बहुत ही ऊंची कॉल थी कामरान गुलाम की।
फखर एक और रन चुराना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी कॉल, लाउड कॉल, क्लियर कॉल। हलचल मची हुई है दोनों तरफ। ये एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा, उनके पेस ऑन ऑफर नहीं करते। आरिफ याकूब ने हिट ज़रूर की थी, ज़्यादा पेस ऑफर नहीं करते। कामरान गुलाम किस तरह अनवर अली को खेलेंगे, और स्पेशली फखर थोड़ा सा वेट करके शॉट एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए ये अच्छा मैचअप इन दोनों का रहेगा। क्या यही वक्त है जब फखर फैसला करेंगे कि अब वक्त आ गया है हाथ खोलने का? अनवर अली की पेस और टैक्टिक जो है काफी टेम्प्ट कर रही होंगी फखर को, लेकिन फिल वक्त वो सब्र करने पे आमादा हैं। और एबटाबाद जितनी देर फखर अंदर रहेंगे, एबटाबाद का डग आउट जो है वो पुरसुकून रहेगा। एबटाबाद को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा रिक्वायर्ड रन रेट पे भी, क्योंकि आगे जाके दानिश और आरिफ अगर इनको टर्न मिलता है तो ये आसान बैटिंग कंडीशंस होंगी नहीं, इसलिए इतना ज़्यादा मार्जिन ना छोड़ दें रन रेट में कि वो फिर कवर करना मुश्किल हो। इसलिए थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। फिर फील्ड को अबूर करने में नाकाम रहे। अनवर अली ने पैक्ड ऑफ साइड फील्ड रखी हुई है, लेकिन डीप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑफ साइड फील्ड, एक शॉर्ट थर्ड है, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, डीप में कोई फील्डर नहीं। सिंगल हासिल किया है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर प्रोएक्टिव होके कामरान सोचें तो हमने देखा है कि स्लोअर डिलीवरी पे अगर लेग साइड पे नज़र डाली जाए तो शॉर्ट मिड विकेट है और बीच में गैप बहुत ज़्यादा है फाइन और डीप मिड विकेट के। अगर आप शफल करके बेस अच्छी बना के तैयार रहते हैं अनवर अली के लिए, अगर वो लेंथ मिल जाती है तो आप उस पॉकेट को वहाँ से आप बाउंड्री हासिल कर सकते हैं। सेम फील्ड है लेफ्ट और राइट के लिए। अब फखर के लिए 5 फील्डर ऑफ साइड पर आ गए, डीप फील्डर्स ऑन साइड पर हैं सारे। ऑफ साइड पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है डीप में। कॉल की, खेलते ही दौड़ पड़े अमाद, थोड़ा सा बैक फुट पर नजर आए। आजम खुश नहीं है, एक रन अहमियत का हामिल है यहाँ पर। यहाँ पे ज़रूरी है जो आपके रिंग के फील्डर्स हैं, क्योंकि बाउंड्रीज आ नहीं रही, अगर आप बल्ले के ऊपर नज़र रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, अगर आप अच्छे फील्डर हैं तो आपको बैट स्पीड से अंदाज़ा हो जाता है कि जो बैटर है वो हिट के लिए जा रहा है या सॉफ्ट सिंगल के लिए। इसलिए ये रिंग के फील्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ पे नज़र रखना, क्योंकि अभी ये स्ट्राइक ही रोटेट करेंगे, शायद ही कभी चांस लें। मैच की सिचुएशन वो आ गई है कि दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डालकर खेल रहे हैं। पहले कौन पलक झपकाएगा इसका इंतजार है। पावर प्ले जाता रहा, 32 पर 1 एबटाबाद। बहुत जबरदस्त क्राउड आया है आज के फाइनल के लिए और बहुत ज्यादा वोकल है। एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है ग्राउंड के अंदर। पावर प्ले के इख्तिताम का इशारा फैसल आफरीदी की जानिब से। फ्लेमिंगो स्टेप्स। मरीना, कहाँ जाता दिख रहा है आपको ये मैच? यहाँ पर बहुत टाइट सिचुएशन है। देखिए इस पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा इंहिसार करेगा। कंपैरिजन अगर आप देखें, विकेट दोनों की एक गिरी थी, लेकिन कराची स्लाइटली अहेड था। ऑब्वियसली बैटिंग लाइनअप है, फ़खर अगर अटैक करना शुरू कर देते हैं कैलकुलेटेड रिस्क के साथ तो ये सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आई स्टिल फील कि थोड़ा सा शेल में जा रहा है एबटाबाद। एक बड़ा ओवर या एटलीस्ट पॉजिटिव इंटेंट के हर ओवर में एक बाउंड्री ज़रूर आए। आफ्ताब इब्राहिम को गेंद दी है असद ने, शायद आरिफ याकूब को दूर रख रहे हैं जब तक फखर मौजूद हैं। एक सबसे लीडिंग विकेट टेकर हैं आपके, ये इस पे क्या सवाल हो सकता है मरीना? आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होगा। आखिरी जो ओवर आए उसमें भी ज़्यादा रन्स नहीं आए, अटैक करने जाएंगे ये आफ्ताब के लिए, लेकिन आई थिंक आरिफ को अभी फ़िलहाल इस इक्वेशन में ना लाया जाए तो बेहतर है। अगर थोड़ा सा मज़ीद टाइम गुजार सकते हैं असद आरिफ के साथ तो वो ज़्यादा आइडियल रहेगा। पावर प्ले
उतना धमाकेदार रहा नहीं एबटाबाद के लिए जितना कल था। और क्या लाजवाब कैच लिया आजम ने, सज्जाद को चलता किया, फखर को लकी बाउंड्री मिली। अच्छा कंट्रोल स्ट्रोक, ज्यादा एक्शन देखने को मिला नहीं। बैट और बॉल की जो कश्मकश है वो बड़ी इंटेंस है। जोरदार अपील और आउट हो गए कामरान गुलाम। आफ्ताब इब्राहिम ने कराची को ब्रेक थ्रू दिलाई। अच्छा फैसला साबित हुआ कप्तान असद शफीक का और कामरान गुलाम वापस हुए। कामरान गुलाम ज्यादा शेल में जा रहे थे, ये वो लेंथ थी जिसको अमूमन ये ड्राइव कर देते हैं, ऑन दी अप भी खेल जाते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़े शेल में थे, बहुत ज्यादा कॉन्शियसली, इसलिए बल्ला आगे निकला नहीं। एक बार फिर आई थिंक थर्ड की तरफ एंगल करके ये सिंगल हासिल करना चाह रहे थे। देखिए ऑन द क्रीज ट्रैप किया है, बिल्कुल भी लेंथ को पिक नहीं किया। अमूमन इस लेंथ को अच्छा खेलते हैं, लेकिन कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। दाद देनी पड़ेगी, अंडर प्रेशर आफ्ताब इब्राहिम ने डिलीवर किया है। और एक और झटका कामरान गुलाम की सूरत में एबटाबाद को 12 रन बना के वापस 32 पे 2 एबटाबाद। यंग बॉलर को जिम्मेदारी दी थी असद शफीक ने। अमूमन पिछले मैचेस में दानिश अजीज जो हैं वो इस ओवर की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन अच्छा आगाज और अच्छा इंतखाब असद का। थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा बॉल हवा में बाहर की जानिब निकला और पड़ के वो लाइन उसने होल्ड की। कामरान क्रीज पर ट्रैप हुए। बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। विकेटें गिरने से कराची की टीम मैच में रहेगी। फिर विकेट टू विकेट, लेकिन रन बचाने में कामयाब नहीं हुए। भारी जिम्मेदारी अब फखर जमान पे। अपना सारा एक्सपीरियंस, टैलेंट, पोटेंशियल, टेम्परामेंट यहाँ पे शो करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा इनिंग्स को। अगर फखर के जहन में आ रही होगी कि शायद वो वक्त आ रहा है कि हाथ खोलें, विकेट गिरने से उन्हें थोड़ा सा बैकफुट स्टेप उन्होंने लिया होगा। और जैसे आप कह रही हैं कि उनकी जिम्मेदारी उन पर है। जब आप नेशनल टीम में खेलते हैं तो आप एक ही एबिलिटी के काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं। रीजनल टीम्स में जो लोअर ऑर्डर जाते हैं आपकी एबिलिटी कम होती जाती है, तो मेन प्लेयर की हैसियत से ज़्यादा जिम्मेदारी है और उसको अभी तक निभा रहे हैं जिस तरह वो खेल रहे हैं। एबिलिटी से ज़्यादा मेरे ख्याल है फ्रीडम कम हो जाती है, लेकिन आई स्टिल थिंक कि अगर उनके जोन में जो भी बॉल आ रहा है उसको अवॉइड ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर वो भी ये अवॉइड करने लग गए, बहुत ही बैकफुट पे चले गए, तो कराची वाइड जो है वो हावी हो जाएगा। और यहाँ कराची को क्रेडिट देना होगा क्योंकि उन्होंने फखर को लूज स्टफ नहीं कराई, उनके जोन में ज़्यादा बॉल नहीं कराए। फखर को वो मजबूर कर रहे हैं कि वो हार्ड वर्क करें अपने रन्स के लिए। तो इसीलिए ये मुकाबले की इंटेंसिटी बहुत शानदार है कि दोनों टीमें बेहतरीन खेल पेश कर रही हैं। अंदर आती हुई गेंद, फिर थोड़ा सा बल्ले का रुख मुड़ा। इस दौरान अच्छा ओवर किया अभी तक आफ्ताब ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, विद इन स्टंप्स रखा है। आप पांचों की पांचों गेंदें देखें, जो कामरान गुलाम की भी विकेट हासिल की थी वो इसीलिए की थी कि रूम नहीं दिया। थोड़ा सा स्किड होता हुआ बॉल नजर आ रहा है आफ्ताब का, लेकिन गेंदाज देनी पड़ेगी। अच्छा ओवर फिनिश करना है, एक लाजवाब ओवर होगा आफ्ताब का, विद इन स्टंप्स, बेसिक रखी है चीज। जो ही कराची का एक अच्छा स्पेल आता है, ग्राउंड में तमाशाइयों का शोर जो है वो ज्यादा ऊपर की जानिब चला जाता है। अच्छा यहाँ रूम दिया, लेकिन गेंद थर्ड मैन तक कैरी नहीं करेगा। अच्छा ओवर यहाँ पर आफ्ताब का, 7 के बाद 34 पर 2। ज्यादा खुश लग नहीं रहे थे आफ्ताब, कैच यकीनन नहीं था, ड्रॉप शॉट हो गया था, आगे गिर गया था। लेकिन अच्छा ओवर, बहुत ही नपीतुली बॉलिंग की है, जिम्मेदारी दी थी आफ्ताब को। देखें रूम इस बार जरूर मिला था, लेकिन आगे आए थे हबीब, लेकिन कैरी नहीं किया था। कहीं से भी कैच नहीं है, लेकिन हर फास्ट बॉलर ये चाहता है कि हर बॉल पे उसका कैच हो। नहीं, थर्ड मैन पर इतना फ्लैट बॉल जाए तो वो जज नहीं होता, और काफी दूर गिर गया था आफ्ताब। जाहिर है एक विकेट उन्होंने हासिल किए, एड्रेनलिन रश है, क्राउड है, और
चाह रहे हैं कि वो जितना इम्पैक्ट डाल सके वो डालें। एक्सपीरियंस्ड अनवर अली, जो नया इन्होंने अंदाज अपनाया छोटे रनअप से, इस टूर्नामेंट में अच्छी कामयाबी मिली है उन्हें। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अब 9.3 पे चला गया है। इस पर नजर रखनी पड़ेगी। एबटाबाद को इतने खुले और इतनी आसानी से कराची नहीं रन्स देगा। मिडिल ओवर्स में भी दानिश हैं, अभी आरिफ हैं। ये अनवर अली के छोटे रनअप की बात कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा 8-10 कदम का रनअप है। और यहां से अब देखा आपने ऑफ कटर किया, चांस है, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो थी रादर। बहुत तेजी से बैटर आए थे, क्लोज है ये चांसेस लेने पड़ेंगे इन्हें। रोटेशन और स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो एबटाबाद उससे भी जाएगा तो फिर बिल्कुल ब्लॉक डाउन हो जाएगा। आई थिंक इन दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अहम होगी। फ़खर और अफाक की, दोनों अच्छे बैटर्स हैं। ये वो चांस अनवर अली अमूमन बहुत अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो एक और नुकसान उठाना पड़ जाता। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया अनवर ने। अभी भी फिट और एथलेटिक हैं। अभी बार बार मैं शायद मुझे चांस मिले तो मैं पूछूंगा रनअप छोटा करके क्या वो हासिल करना चाह रहे हैं। ज्यादा कंसिस्टेंसी आ गई है, एनर्जी बचा रहे हैं अपनी, और वेरिएशंस जो है बोल्ड कर दिया यहां। स्लोअर ऑफ कटर, फखर जमान की विकेट अनवर अली ने हासिल की और कराची की मैच में वापसी हो गई है। वेरिएशन की आपने बात की थी, हमने ये बात करते आ रहे थे कि अनवर अली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं और फखर का उससे ज्यादा अहम रोल था एबटाबाद के लिए। अटैक कर सकते थे लेकिन इस बार चूक गए। अटैक करने गए जरूर थे लेकिन अनवर अली ने ये बैटल विन कर ली। शानदार बॉलिंग। इस मर्तबा नो बॉल के जरिए बचत नहीं होगी फखर की, और उनका वापसी का सफर मुकम्मल तौर पर डिसीव कर दिया अनवर अली ने अपनी ऑफ कटर से। और सेलिब्रेशन का अंदाज आपको बता सकता है कि इस विकेट की कितनी अहमियत थी। फखर वापस हुए बोझल कदमों के साथ। 21 बनाए 24 गेंदों पर, 36 पर 3 एबटाबाद। इंटरनेशनल सितारे यहाँ मौजूद हैं जिनको क्राउड देखने आए हैं, और कुछ अब जाना शुरू हो गए। फखर जमान की फैन फॉलोइंग काफ़ी। अहमद खान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन पे अब आन पड़ी है और आसान नहीं होगा कराची वाइट के बॉलर्स के सामने। बहुत ही क्रूशल ब्रेक थ्रू, और रन रेट भी बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पर एबटाबाद का रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 10 को टच करने लग गया। अब मुश्किल में पड़ गई है एबटाबाद। सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स, खालिद उस्मान एक हैं और यासिर शाह, इन दो पे निसार करना पड़ेगा एबटाबाद को। लेकिन अभी भी मुस्कुराहट मौजूद है यासिर शाह के चेहरे पे। अनवर अली जो एक्सपेक्ट किया था वही डिलीवर किया उन्होंने। ये अक्सर पेस बॉलर्स की वेरिएशन वो स्लोअर डिलीवरी होती है। इस छोटे रनअप के बाद अनवर की वेरिएशन उनकी तेज डिलीवरी है। बिल्कुल, आई थिंक ज्यादा प्रिडिक्टेबल होना नहीं चाहिए और ऐसे ही किया अनवर अली ने। अहमद जो हैं वो तैयार थे शायद स्लोअर वन के लिए, लेकिन इस बार तेज गेंद किया, तेज बाउंसर किया। बिल्कुल स्कोरबोर्ड ऐसा लगता है जैसे थम गया एक जगह पर। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम 8 के बाद एबटाबाद 37 पर 3।
What a ball. What a ball. Swung away from the left-hander, no pace on it, hitting top of off. Everything perfect about it. Completely deceiving the star batter. Down on one knee, hand on the turf. You just feel embarrassed when you get out like that. Completely missing everything about it. Ahmed now, who's the next batter, and I'm told he's played Pakistan under 19, Ahmed Khan. And both the batters now just 4 deliveries old on this pitch. And what that is doing is it's not allowing that run rate to go up from 4.5 from that word go from the first over. Seem to have protection everywhere. They're bowling to their field. 3 batters, Sajjad in form, Fakhr Zaman from the last game in form, and Kamran Ghulam through the tournament in form are back in the dugout. From here on, it's Karachi's game to lose. Yes, one thing they've done well from the very start is they did not let Abbottabad get off to a good start. Kept Fakhr very quiet, was never comfortable throughout his stay. And with those runs not given away, wickets have come their way. Now in this pressure situation, it's up to these youngsters. If they can absorb that pressure and do well for their team. Yeah, won't take a chance on Anwar Ali's arm. He's a gun fielder. Struggling with that calf, but he still is Anwar Ali and a half. Yes, definitely the experience he brings in to this team is worth gold. And the variations in his bowling, absolutely tremendous. Shot. He's found the gap, he's found the timing. Good shot, young man. At this time, a bit of pace on the ball, used that pace and played it a bit late, which helped him in getting it into the gap. Good shot, that one. Let the ball come onto the bat. And away it went. Good captaincy today. Allowed Sohail to bowl 3 overs. It was necessary. He was swinging the ball, making it tough for Fakhr. Why not bowl him another over? End of the 9th, 44 for 3. Yes, I'm sure they have realized a few things from last game. That is what they did when Sohail was really swinging the ball, keeping things down, putting the batsman under pressure. They took him off. Yeah, the cameramen in front of us in the balcony were absolute loners. They made friends with each other throughout the tournament, but today they're cramped for space. A lot of traffic with people moving around even in front of us. The National Bank Stadium. It looks good, the night sky, a shining white roof. And good to have a couple of stands full with the spectators for this final. All here to see a bit of Fakhr's batting didn't happen, to see a bit of Azam's batting didn't really happen. Of course, most of them would be, I'm assuming, wanting home team to win. But there are some star names, so they want to see, because all are from Pakistan. Here is the star bowler who's been amongst wickets through the tournament. Arif Yaqub, and he's been hit for a boundary. No, it's a good stop. It's a different Karachi fielding today. Young Ahmad Alam. Brilliant stuff. Spring, you can see the spring in their fielding. And that is because of those 3 wickets they have taken.
They really want to win this final. Brilliant dive, well timed. It's live wire. Catch it is a Corbin, might sail over. He's got enough on it. It's gone for 6. They will try to attack the bowler who's amongst wickets. That's the way to do it. Stay in the competition, stay in the fight, stay in the chase. So I'm sure the captain would be much more comfortable bringing on Arif now at this stage. Once Fakhar Zaman has gone, look at that one. A bit of flight and slog swept. 6. Because if you remember last night, 2 left-handers playing and Arif only bowled 2 overs. He was a bit skeptical in bowling him when left-handers are on. 50 is up. Well, I don't know how much you agree with it, but these conventional ways of matchups where off-spinner will bowl to a left-hander and a leg spinner will not bowl to a left-hander. I mean, he has got a good googly, a good wrong on as well, but yeah, he didn't give him the ball, and then of course with the that's high in the air, sticks, some catching. Umair bin Yusuf tried really hard. In fact, that's Aftab there. Good work done by him that the catch wasn't coming, putting his body behind the ball so that it doesn't go for 4. Yes, talking about matchups as you said, and this one tried to play over covers, very close call, very good fielding there. Talking about matchups, it's only possible if a bit of turn there. Matchups are only effective when there's a specialist bowler. Last night you saw when Asad Shafiq brought himself up because of that, trying that matchup, it just didn't work. He went for 20 runs in that over. After 10 overs, it's 57 for 3. There's the comparison. That is where Karachi has kept Abbottabad down. They were 43 for 1 in the power play and only 32 runs for Abbottabad. And it's 25 for 2 so far. It's not 4 wickets for Karachi, which fell in between over number 7 and 15. That impact had them scoring only 39 in the last 5. There was some good fielding and great bowling from Abbottabad bowlers. Danish Aziz has been brought into the attack. He's been amongst wickets. He's been turning the odd one. And he's bowling from that far end. Ahmed has looked good for a couple of shots. One square drive, square cut, and then one slog for a 6. It's needed, required, they need runs. That has helped them to just bring that run rate a little bit up. 5.7 now from 4.9. (17 of 12). Within the stumps, that'll be the key. If you look at Arif Yaqub's last over, I think he's bowling a bit quicker. He's flatter through the air today. That's a great stop there at the boundary by Ramiz. Definitely stopped 2 runs for his team. So about Arif Yaqub, he's trying to bowl a bit quicker. I hope that the captain explains to him that he wants wickets from him.
21 wickets in the tournament to his name. Shahab got 4. He's leading wicket taker now from Abbottabad, but Arif has 3 overs if he gets them to maybe exceed. There he is. Hit for 13 in the first over. Catch it, ready? Catch it is a call. Should be taken. Yes, it is. Danish Aziz strikes in his very first over, and what do you know? It's Ahmad Alam again. Wicket number 4 walks back to the dugout. Well, a happy dugout for Karachi now. With that 4th wicket down, Afaq. He has been quite effective in that position for Abbottabad in the previous matches. It's quite a big wicket for Karachi. Trying to force it in that gap at extra cover. Only ended up holding to Ahmad Alam. Afaq gone for 11. Eleven overs bowled, 62 for 4. New batter in, Shahab. Already now down to the bowlers. He's the highest wicket taker in the tournament. Got 4 today. Now he's got a job to do with the bat. Well, the balance Danish brings to this batting lineup. Of course, he's quite effective with the bat as well, but these 4 overs he bowls, very, very important for the Karachi team. Not only stops the runs, but also takes crucial wickets at crucial moments. Shahab Khan, look at that strike rate, 159. I think that is why he's been sent up to hit a few here and there and bring that asking rate down. Tapal Tea has the Tapal Tea Lounge, enjoying a good final here of the National T20. Surely there's no timeout here because the new batter has not faced the ball yet. He came with a cap, then saw Sohail Khan coming, so he's asked for a helmet. Well, I'm sure Karachi won't appeal for that sort of a dismissal. They're in a good position now, no need for that. Got Anwar Ali back. Good captaincy today from Asad Shafiq, using his bowlers well, and he's mixing them up, getting them in the right time, understanding what's happening in the game, and he's been a little more brave today. Yes, absolutely. We did mention and pointed out a few things he was unable to do last night, and it's very good to see that they have picked that up and worked on it, and they are getting the fruit for that. 62 for 4. He's been so good, Anwar Ali. With his limitations, he's really understood what he can do for the team as a bowler. With that very, very short run-up, the ball he bowled to Fakhr Zaman, it had every single ingredient to fox a batter. Is more amazing about him is that the
2-3 games that he's played after that injury. With his limitations, he's just perfected the art of bowling from that short run up within the stumps and also using his skill and experience to make the ball talk. At that pace to swing, and then the lengths, and then of course the variations. This was a slightly slower one which swung, hit top of off, everything in that. Have a look at this. Where does it start and where does it finish? It's completely bamboozled. Had a sheepish smile on his face, Fakhr Zaman. High in the air, should be out. Catching's been good today, and it remains that way. Once again, another catch taken by the young man. Looks like this ball is chasing Ahmad Alam. It's going where he's standing. The very, very good wicket. Once again, foxed the batter with that slow one. No pace at all on the ball. Trying to go for that big hit. Look at that. Rolling the fingers on the ball. No pace at all. Went straight up in the air. Ahmad Alam made no mistake. Mohammad Shahab was sent in to up the run rate. He's gone for a duck. Etizaz Habib is the new batter in. 10 matches, 81 runs. Nothing much to show as a batter. Very, very difficult situation his team is in at the moment. Oh, that's timed well. First ball to Etizaz, bit on the leg stump, full in length, put away to the boundary, a rare boundary after 14 balls. I think that's the commentator's curse for the bowler this time. Talk so much about the bowler and how effective he's been, and he bowls this half volley on leg stump to the new batter. Easy pickings for him. Worked away, down to third, will earn another boundary. Back-to-back fours to end the over. It is 71 for 5. गेम चेंजिंग ओवर अभी भी बन सकता है। अनवर अली विकेट हासिल करने के बाद बैक टू बैक चौके फिनिश करने के लिए 9 रन बने इस ओवर में, 48 गेंदों पर 85 दरकार। तो अगर चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालें, आधे के करीब रन्स पूरे होने को हैं, आधे से जायद ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन 5 विकेट्स गिर चुकी हैं। शहाब को ऊपर भेजा था तेजी के साथ रन्स बनाने के लिए, लेकिन वो जल्द आउट हुए। टॉप विकेट टेकर थे, हमसे 1 घंटा पहले तक फील गुड फैक्टर भी उनके साथ मौजूद था। ये रोक। अहमद की सूरत में अभी भी उम्मीद की किरण है, लेकिन इससे पहले मोहम्मद शहाब आउट होकर जा चुके हैं। अनवर अली की इस शानदार स्मार्ट बॉलिंग के नतीजे में काल स्ट्रेन के बाद उन्होंने अपने रनअप को मुख्तसर किया, लेकिन वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बना। कदमों का इस्तेमाल करके ऊंचा खेल दिया, नीचे खैमाजन हो गए कैच करने के लिए, और एक और कैच। अहमद आलम इधर भी उधर भी, इनसे गेंद नहीं बचेगी। एक और कैच और एक और विकेट दानिश की। अहमद की उम्मीद भी खत्म। कराची ऑन द टॉप, 71 पे 6 एबटाबाद।
एबटाबाद इज क्लूलेस। बैटर्स को कुछ समझ नहीं आ रही कि उस टाइम क्या करना है, क्या रिक्वायर्ड है। अटैक ज़रूर करने जा रहे हैं लेकिन फील्ड प्लेसमेंट ध्यान में नहीं है, बॉलर को नहीं पिक कर रहे। अब ज़्यादा दोष दे भी नहीं सकते इन यंगस्टर्स को, लेकिन अहमद एक टाइम पे लग रहा था कि शायद थोड़ी सी जिम्मेदारी लें और इस चेस को डीप लेके जाएं, लेकिन दानिश के और इरादे। अच्छी बॉल एक बार चार्ज किया लेकिन एलिवेशन हासिल की, फासला नहीं। एक और आसान कैच अहमद आलम का अंडर प्रेशर। आज बहुत अच्छी कैचिंग की है अहमद आलम ने। 19 बना के वापस 71 for 6। खालिद उस्मान बैटिंग के लिए आए हैं। उनकी सूरत में अभी भी कुछ ना कुछ करने को मौजूद होगा। दूसरी तरफ मौजूद हैं मर्दान के एतजाज़ हबीब, लेकिन उनको अब तक हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। और अहमद जो कि कर सकते थे, उन्होंने दानिश के खिलाफ वाकई चार्ज करने की कोशिश की अपने जिस्म से दूर गेंद, और दानिश की एक तरफ से अनवर दूसरी जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा पेश करते हुए हर एक ने विकेट कमाई हैं, सुहेल और आरिफ याकूब के अलावा। खालिद उस्मान सिर्फ एक वाहिद एक्सपीरियंस प्लेयर है, बच चुके हैं, जो थोड़ी बहुत बैटिंग में कमाल शायद कर सकें, लेकिन सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कराची की बॉलिंग लाइनअप। और इसी चीज का सवाल मैंने यासर शाह से टॉस पे भी किया था जब उन्होंने ऑप्ट किया था चेस करने का, कि इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट आप चेस फाइनल में कैसा देख रहे हैं। उन्होंने ये जवाब दिया था कि बैटिंग कराची की ज़्यादा स्ट्रांग है। लेंथ मिल गई थी लेकिन ज़्यादा मिडल कर नहीं पाए, इस बल्ले को डिस्टेंस हासिल नहीं कर पाए। अहमद वापस डगआउट में। 5 गेंदों की स्पेस में ये 2 विकेट्स गिरी हैं। तो इन 6 खिलाड़ियों को आउट करने के लिए हर एक ने अपना किरदार अदा किया। सुहेल खान को 3 ओवर इब्तिदा में करवाए पावर प्ले के अंदर, जो कि खतरा था, उन्होंने मोल लिया इस बात को रियलाइज़ करते हुए कि ये ओवर्स शायद 20वें एंड तक नहीं जा पाएंगे, उस वक्त तक गेम अलाइव नहीं रहेगा। गो के वो विकेट ना ले पाए लेकिन प्रेशर डाला। ये कहना गलत नहीं होगा कि एबटाबाद के 3 बैटर्स का मुकाबला कराची के 6 बॉलर्स के साथ था, क्योंकि जब आप पूरी नज़र डालते हैं एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है फास्ट और स्पिन बॉलर्स का। यहाँ पे कोई वीक लिंक नजर नहीं आता कराची की बॉलिंग में, इसलिए आसान होना नहीं था। एक हद तक लग रहा था कि एबटाबाद ने कंट्रोल कर लिया है, ये चेजेबल होगा, लेकिन मुश्किल होनी थी अगर टॉप ऑर्डर ना क्लिक करता। सजाद अली आउट होने वाले पहले बैट्समैन थे जिन्होंने ऊपर खेला, और ये वो लम्हा था जो कि इधर भी ले जा सकता था उधर भी, लेकिन ये वो शानदार कलाबाजी थी जिसके बाद कराची ने ना अपनी फील्डिंग में ना अपनी बॉलिंग में मुड़ के देखा। अपना पहला ओवर करने के लिए आए थे आफ्ताब और उन्होंने शानदार इन स्विंगर के साथ विकेट हासिल की। अनवर अली का छोटा पेस और इसके साथ साथ मुख्तसर रन वो चकमा देता गया, बैकफुट पे जाकर ऊंचा खेलने की कोशिश की थी आफाक ने, लेकिन फिर अहमद आलम की कैचिंग का सिलसिला शुरू हुआ। गेंद उनके पीछे आती रही और उनके महफूज हाथ किसी गोंद की तरह गेंद को उनके साथ चिपकाते रहे। एतमाद के साथ कैच किया और कराची के पलड़े को भारी किया, और एक मरतबा फिर अहमद जो कि खासी देर से कोशिश में थे फील्ड को क्लियर करने की, वो भी अहमद आउट हुए और गेंद गई अहमद आलम के हाथों में। तो अब 6 विकेट्स गिर चुकी हैं, 42 गेंदों में 83 रन, जो कि बनते हैं 200 के स्ट्राइक रेट के साथ या 12 रन पर ओवर, और इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए। जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनी अनवर अली की ये इंजरी या प्रॉब्लम, जो कि काफ स्ट्रेन के बायस उन्होंने पहला स्टेज मिस किया इस टूर्नामेंट का। इस सुपर 8 की स्टेज में वो आए थे गेंद करने के लिए, वो बेहतर साबित हो गया कराची के लिए और अपने तजर्बे का पूरा इस्तेमाल किया, और हो सकता है कि अनवर अली अपने बाकी मानदा करियर में इसी अंदाज को जारी रखें। और कराची के लिए अगर जो अब तक बेहतरीन बॉलर शुमार किए जाएंगे इस टूर्नामेंट के, वो इस दौड़ में आगे भी निकल सकते हैं। आरिफ याकूब वो गेंद करने के लिए आए थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली लगता है कि उनको अब हटा लिया और बज़ाहिर फास्ट बॉलर के साथ गेंद करने के लिए जा रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग कॉल है। अनवर अली का जिक्र आपने किया, आसान नहीं होता, एक तो इंजरी से वापस आना, उसके बाद जब आपके रनअप में डिफरेंस आता है तो वो कंट्रोल, वो रिदम और स्पेशली एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल होता है। यही बात अभी अर्ली ऑन सिकंदर वक्त भी यही कर रहे थे
कि ये इनको दाद जाती है कि इतने लिमिटेड रनअप के साथ इतनी एक्यूरेट बॉलिंग, और वो बॉलिंग जो इनके लिए फ्रूटफुल रही है उसको लेके आना इतनी जल्दी, अडेप्ट करना और डिलीवर करना परफेक्शन के साथ, ये सारा क्रेडिट जो है वो अनवर अली को जाता है। आफ्ताब को एक बार फिर जिम्मेदारी दी गई। अच्छा ओवर, छठा ओवर जो था इनिंग्स का इन्होंने किया था, और दोनों हाथों से ना सिर्फ ग्रैब किया इस मौके पे बल्कि लिव अप किया अपने कप्तान की एक्सपेक्टेशन पे। आफ्ताब वो हैं जिन्होंने शायद उन तमाम मैचेस को जो कि इससे पहले कराची ने कई मरतबा फाइनल खेला, 5 मरतबा पहुंचने में कामयाब रही है नेशनल T20 चैंपियनशिप के फाइनल्स तक, एक मरतबा भी नहीं जीत पाई, वो लाइव नहीं देखे होंगे, लेकिन इस ख्वाब को कराची के पूरा करने के लिए उन्होंने अहम बॉलिंग की। और एक और खूबसूरत इन स्विंगर, बड़ा गैप दे दिया था, गेट से गेंद निकल भी गई थी लेकिन एक तरफ इनसाइड एज और दूसरी तरफ स्टंप्स के ऊपर से गई। अच्छा बॉल कट होता आ रहा है आफ्ताब का, हमने देखा है पहली ही डिलीवरी से जो उन्होंने पहले भी कराई थी जब स्टार्ट किया था आगाज का, ये भी बहुत शार्प कट हुआ। कामरान गुलाम को जो बॉल पड़ा था वो भी कट होके अंदर आया था, इसलिए वो पिक नहीं कर पाए। अच्छे रिदम में अच्छी एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करते नजर आए, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर के लिए। यस, परफेक्ट अंदाज से, गो के इतने लंबे कद काट के नहीं है लेकिन जो उनका लैंडिंग एरिया है, जिस अंदाज से ये अपने आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, टांग सीधी रहती है। तमाम बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं किसी फास्ट बॉलर के लिए, और ख़ास तौर पर अभी 19-20 साल की इनकी उम्र है, जिस अंदाज से अपने आप को, जो कि फेमसली आप कहते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए, कि वो अपने मसल्स, शोल्डर्स और अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे। और अगर करियर के इब्तिदा में आपको ऐसे क्राउड के सामने इस बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में परफॉर्म करने का मौका मिल जाए तो उठान ही अलग मिल जाती है। अब बैटिंग के लिए आए थे, इम्प्रोवाइज करके उन्होंने 2 बाउंड्रीज पे हासिल की थी, लेकिन एज अ बॉलर उन्होंने आज शानदार करके दिखाई है। डिजर्व करें शायद एक और विकेट, बड़ी हिट की ज़रूरत है, सन्नाटा तारी एबटाबाद पे। एक और अच्छी गेंद, सिंगल दस्तयाब नहीं है। एबटाबाद जिसने पहली दफ़ा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, दाद देनी पड़ेगी। फील्डिंग में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, यंगस्टर्स ने स्टैंड अप किया, बॉलिंग जहां तक फास्ट बॉलर्स का जिक्र है वहां पे डिलीवर किया, लेकिन ये डिसीजन कितना सही और कितना गलत है ये अंदाज़ा हो चुका होगा एबटाबाद को, क्योंकि जब आप सामने नज़र डालते हैं कराची की बॉलिंग लाइनअप, उसके अगेंस्ट चेस करना कभी भी आसान नहीं होता। दिन कराची की तरफ रहा। क्या फील्डिंग की आज कराची ने, कोई भी गेंद ऐसी नहीं थी जो कि हाथों से बच के गई हो, तमाम कैचेस हासिल किए और क्राउड भी जाग रहा है अब तक, अपने होने का एहसास दिलाया उमर बिन यूसुफ को बैकअप करने के लिए। बहुत अच्छे फील्डर हैं उमर बिन यूसुफ, एजाइल हैं, एथलेटिक हैं, जल्दी रीड करते हैं, एंगल्स को भी कट करते हैं। इस मरतबा एक और झलक दिखाई इन्होंने, अच्छी फील्डिंग की, और ये खुशाइन बात है, यंगस्टर्स इंपॉर्टेंस देते हैं फील्डिंग को, क्योंकि स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में एक एक्सीलेंट फील्डिंग एफर्ट जो है वो मैच पलट सकती है। बड़ा लंबा चेज है, बाउंड्री लाइन से एक तरफ आ रहे हैं हासिल करने के लिए, दूसरी तरफ से असद भी आए थे, आरिफ को गेंद लेने का मौका मिलेगा तो 5वीं मरतबा कराची फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा है। कभी फैसलाबाद, कभी कराची के अपने होम ग्राउंड पे, कभी रावलपिंडी में उनको इस लेवल तक पहुंचने का मौका मिला, लेकिन वो कभी भी जीतने में कामयाब ना हो सके। और कराची डॉल्फिन के नाम से खेलने वाली टीम, जो कि पहले सुपरस्टार्स की मौजूदगी में, जिसमें इससे पहले अनवर अली, असद शफीक, खालिद लतीफ़ तमाम खेल चुके हैं, लेकिन फेमसली इसकी शाहिद आफरीदी ने क़यादत की, और उस टीम का अब तक इस टूर्नामेंट को ना जीत पाना एक सवालिया निशान ज़रूर था, लेकिन अब इस ख्वाब के करीब है। खालिद उस्मान ने स्मार्ट वर्क का मुजाहरा किया, गेंद मुसलसल ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे थे, लेकिन परफेक्ट अंदाज से बैट को ऊपर से नीचे लाए कट किया, और ऐसे कई शॉट्स की जरूरत है एबटाबाद को। ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अभी भी रेजिलियंस है एबटाबाद में, और स्पेशली जैसे मैंने मेंशन किया था, ये एक ऐसे एक्सपीरियंस बैटर हैं जो कि लंबा लेके जा सकते हैं। ऑफ साइड पे आके शफल किया और मजीद रूम को अवेल करने में कामयाब रहे इस कट शॉट और चौके से। तो आप एबटाबाद की जर्नी की मरीना बात कर रही थी, गो के उनका सफ़र फाइनल में बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले सुपर 8 तक पहुंचना बजाते खुद, और उसके बाद वहां पर पेशावर जैसी टीम को शिकस्त देकर जिस अंदाज से इसके नौजवान खिलाड़ियों ने लिव अप किया है वो बड़ी रिमार्केबल कोशिश थी। और अगर आप इंस्पायर करना चाहते हैं उन लोकल क्रिकेटर्स को जो कि मर्दान, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, उन तमाम इलाकों में, और उसके साथ साथ शायद उन बैकवर्ड रीजन्स में जहाँ पर खेलने के लिए या फिर ग्राउंड्स की सहूलियत उस अंदाज से मैसर नहीं होती हैं,
तो इससे बेहतर जर्नी नहीं हो सकती। गो के ख्वाब अभी भी उनके पास मौजूद है पूरा करने के लिए, लेकिन इसके अलावा इनके तमाम खिलाड़ियों, ख़ास तौर पर एतजाज़, आफाक, अहमद, शहाब, इन सब ने दिल खोल के परफॉर्म किया। एक मरतबा फिर हाई वाइल्ड स्विंग के साथ फील्ड को क्लियर करने की कोशिश किया, 2 गेंदों में 2 चौके मिल गए एबटाबाद को। कुछ ना कुछ रमक जरूर दी है इन शॉट्स ने, एतजाज को हाथ खोलने का मौका मिला। चिपटे बल्ले के साथ इस बार एतजाज ने डिसाइड किया कि इस लेंथ को जो उन्हें ऑफर हुई है, जैसे आपने कहा हाथ खोलने का मौका मिला, उसको अवेल किया है। रेजिलियंस है, जैसे मैंने पहले भी कहा, पॉजिटिव इंटेंट है, जितना डीप लेके जा सकते हैं जाएं। एक मरतबा फिर बिट दिया है, लेकिन बहुत दूर थी ये गेंद, बाउंड्री उस तरफ मुख्तसर है और गेंद चौके के लिए चली गई। एबटाबाद के लिए चौकों की हैट्रिक मुकम्मल। रमीज इससे पहले डीप में अच्छी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मरतबा गलती कर बैठे और फिर से धड़कना शुरू किया एबटाबाद ने कराची में। 3 गेंदों पे 3 चौके, पिछले ओवर की आखिरी गेंद में चौका और ये 2 लगातार चौके। ओवर रन कर गए थे और उसके बाद बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कवर करने का लाइन को। मुख्तसर बाउंड्री है जिसकी तरफ टारगेट किया था, स्मार्ट वर्क का मुजाहरा किया है अब तक एतजाज ने, जिन्होंने 2 बाउंड्रीज हासिल की। इस मरतबा किस्मत ने भी यावरी की थी और अच्छा कमबैक किया दानिश ने। गेंद इससे पहले भी उतनी खराब नहीं की थी। अपने तीसरे ओवर के लिए मौजूद हैं और इन बॉलर्स को आजमाने से इनके ऑप्शन अब वाइड ओपन है। सोहेल खान को भी ला सकते हैं 1 ओवर के लिए, अनवर अली का 1 ओवर बाकी है, आफ्ताब इब्राहिम को रोक के रखा है, 3 में 14 दिए। स्मैश करने की कोशिश की है कवर्स की जानिब, लेकिन अब सेफ हैंड्स में गई है। 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। इस 1 रन की वजह से खालिद उस्मान अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं। ऑलरेडी 9 रन आए हैं इस ओवर में, 2 गेंदें बाकी हैं। क्या इसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। डीप ले जाना चाहते हैं एबटाबाद। आखिरी लम्हात में वो कोशिश के लिए अपने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को हासिल करना चाह रहे हैं जिस पे बड़ी स्लिपरी स्टोप रहेगी चढ़कर खेलने के लिए। शफीक बड़े एक्टिव हैं कल से, जिस अंदाज से उनके अपने कुछ दरमियान में लैप्सेस थे, खुद गेंद करने के आने के फैसले से लेकर पिछले सेमीफाइनल में आरिफ याकूब को कम इस्तेमाल करने का, आज उन्होंने परफेक्टली अपने बॉलर्स को इस्तेमाल, स्पेशली पावर प्ले में इस्तेमाल करना। बेहतर ओवर था एबटाबाद के लिए, लेकिन ऐसे कई ओवर चाहिए मेहमान टीम को। 11 रन बने इसमें, 89 पीछे। कंपैरिजन रहा है कराची वाइट्स और एबटाबाद के दरमियान, मिला जुला पावर प्ले कह सकते हैं आप। कराची फिर भी थोड़ा अहेड था, विकेट्स दोनों की एक ही गिरी थी, लेकिन जो डिफरेंस आया वो मिडल ओवर्स में आया। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया कराची वाइट्स ने, 5 विकेटें गंवाई। एबटाबाद ने रन्स का मार्जिन भी ज़्यादा है और ये एक्सपीरियंस बॉलिंग की अक्कासी करता है जो कराची वाइट्स के पास मौजूद थी। अच्छी प्लानिंग रही है, अच्छा रोटेट किया। जब असद शफीक की कैप्टनसी की बात करते हैं, जैसे आपने तस्करा किया पिछले मैच में, कह सकते हैं कि आर्ग्यूबली कुछ ऐसे लम्हात थे, कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिन पे बात की जा सकती थी, लेकिन आज बहुत क्लिनिकल नजर आए। और साथ ये नहीं भूलना होगा कि असद शफीक का ये पोटेंशियली आखिरी गेम भी हो सकता है। देखना होगा कि क्या वो फैसले को जल्द लेते हैं या नहीं, लेकिन इस बात को अनाउंस किया जा चुका है कि शायद वो मुख्तलिफ रोल में पाकिस्तान की क्रिकेट में अपना किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे और उनके जहन में ख्वाब चल रहा होगा। ये उस टीम का हिस्सा थे जो कि पुराने फॉर्मेट में कराची डॉल्फिन के नाम से खेलती थी। उस ख्वाब को इतने बड़े गैप के बाद पूरा कर पाएंगे, दहानी आ रहे हैं करने के लिए। बिल्कुल ये शानदार, अगर ये फैसला लेते हैं और मूव ऑन करते हैं तो ये शानदार इख्तिताम होगा इनका। अगर अपनी टीम को ये, अगर नहीं यकीनन ये कराची वाइट्स को ये टाइटल जितवाने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद मूव ऑन करते हैं, तो ये हर कैप्टन का ख्वाब है। कराची वाइट्स की बॉलिंग की बात करें तो सुहेल और दहानी ने स्टार्ट किया और अनवर, आफ्ताब, आरिफ, दानिश, कोई भी ऐसा लूप होल नज़र नहीं आता जहां ज़्यादा रन्स एबटाबाद बना पाता। वंस अगेन कोई विकेट नहीं दिए और सिर्फ 1 रन के लिए खेल पाए। तो
जो पहले एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या यहाँ पे ड्यू मौजूद है सेकंड नंबर पे बैटिंग करने वाली टीम के लिए नहीं, और अब तक आप नहीं कह सकते कि ऐसी कोई नमी है हाथ में। हार्डली कुछ घास के ऐसे टुकड़े हैं जो कि चिपक रहे हो, जो कि वैसे ही आप अगर जोर से रफ करेंगे तो आपके हाथ में आ जाएंगे। तो एबटाबाद के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जो कि बॉलिंग साइड को सपोर्ट ना करे। ग्राउंड्समैन को दाद देनी पड़ेगी, इन्होंने काफ़ी एफर्ट की है, कंडीशंस को जहाँ तक न्यूट्रल कर सकते थे किया है ड्यू स्प्रे के साथ। एतजाज ने एक मरतबा फिर शार्पली सिंगल लेने का फैसला किया है। वो कि मुख्तसर बाउंड्री है दोनों राइट हैंडेड बैटर के लिए ऑन साइड पर, उसको बांध के भी रखा है, लेकिन इतना डीप ले जाना शायद एबटाबाद के हक में ना जा सके। ये फाइनल है, ऑल और नथिंग, ये सिंपल स्ट्रेटजी इनके सामने अब होनी चाहिए, जिसके लिए अगर इतना गहरा ले जाना कोशिश करेंगे, 27 के अंदर 64 रन ऑलरेडी दरकार है, तो सिर्फ और सिर्फ वो खाली हाथ ही वापस आ जाएंगे और तशनगी रह जाएगी। ज़रूरत है अपने मोमेंट्स को पिक करने की। लेकिन अच्छी बात कराची के लिए है कि दहानी ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ही बरकरार रखा है, कोई विट नहीं दी, बैक ऑन डिलीवरीज किया जो कि हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है एबटाबाद को। वाइल्ड स्विंग के साथ, लेकिन एक मरतबा फिर फील्डर मिड डीप में मौजूद है, एक ही रन बना पाएंगे। अगर थोड़ा सा नज़र डालें हम एबटाबाद की जो इंटेंट थी चेज में, ये कहना गलत नहीं होगा कि बीच में जब फ़खर और कामरान गुलाम खेल रहे थे तो बहुत ज़्यादा शेल्फ में चले गए। ये एक्सपेक्टेड था, इनको आइडिया था कि दे आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड ऑफ द टूर्नामेंट। एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट टेकिंग की महारत रखते हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक कि वहाँ पे शेल के अंदर चले जाना और उसके बाद वहाँ से कम बैक करना बहुत मुश्किल हो गया था और कराची ने मज़ीद मुश्किल बनाया। कट किया है और चौका हासिल। एतजाज को एक मरतबा फिर हल्की सी विट मिली, क्विक बैट स्पीड, फौरन इस विट का पूरा फायदा उठाया चौके के लिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप आप किसी भी बल्लेबाज को रूम देंगे जिसको थोड़ी बहुत बैटिंग आती होगी तो वो भी इस शॉट का फायदा जरूर उठाएगा। खड़े खड़े सिर्फ हाथों का इस्तेमाल किया, जैसे आपने तस्करा किया, बैट स्पीड बहुत मानी रखती है, लेकिन बिठा के खेला, ये परफेक्ट कट था। यहाँ पे धानी सिर्फ अपने आप को दोष दे सकते हैं इस चौके के लिए। विद इन स्टंप्स रखें और लेंथ को कैलकुलेटेड रखें। लोकल फेवरेट हैं शाहनवाज अली धानी, जिन्होंने सेमीफाइनल से लेकर फाइनल तक अच्छी बॉलिंग की है। चौके के बाद शायद हौसले पर जरूर हुए हों। स्लो वन इसको पिक किया, लेकिन एक मरतबा फिर महज एक रन के लिए। फाइनल अब भी एबटाबाद के लिए कुछ उम्मीद बाकी, लेकिन 24 पे मुश्किल 58 दरकार, 58 पे 6। $99 on the board, 6 wickets down into the 17th over. Ramiz, who's in for Khurram Manzoor, who's injured, so he's fielding throughout the overs of the Abbottabad innings. This is exceptional from Anwar Ali. His mix-up of pace and slower and more slower deliveries have been very hard for the batters to hit and time. And he is certainly someone who has been the key for the destruction caused to the batters by the Karachi bowlers. His slower ones absolutely disturbing for a lot of batters, especially Fakhar Zaman. He even lost his balance while trying to go hard at him. And now we see Khalid Usman not happy with the lack of pace.
swinging it hard, but he has nothing that he can call pace on the ball. And look at those figures of Anwar Ali, 3.3 overs, 2 for 18. Middle overs are very important, Sikandar. We remember we were talking about the first 6, the last 6. But this match was just decided more in the middle overs than the power plays. Might push for the second one. Yeah, no. Ahmad has been so good today. He's been patrolling that boundary, that long off area, like he owns it. Yes, we have also at times spoken about the captaincy of Asad Shafiq, and at times he has lacked some things, but today has been really good. He has kept the good fielders in the hot spots where it really matters. We've seen Ahmad Alam in hot zones catching 3 important catches and making sure that they go to the best fielders. And even Azam Khan, he was the man who kicked it all off with that brilliant take, running backwards and also shouting that it's mine. The confidence that he showed underneath that high ball was of immense importance to the whole team. That kind of a fielding effort lifts the whole side. Got hold of that. Might beat the fielder. Yes, beats everything. Nothing that Umair bin Yusuf could have done. Maximum to end the over. Just got a little too predictable with the slower ones. 17 gone. 108 for 6. Yes, this one again lacking pace but also lacking length, and length is what allowed the batter to free his arms and hit it away for a 6. So Anwar Ali finishes his quota, brilliantly bowled, but just the last ball not finding his length. It's very important that Karachi do not lose any sort of intensity. They now have 1 over from Dhani, 1 over from Sohail Khan left, and 1 other from somebody else. And the equation is now what India required against Pakistan in Melbourne. 48 of 18, but somebody has to do a Kohli for Abbottabad. And that isn't easy. With Abbottabad having, with Karachi having 2 best bowlers to bowl 2 overs inside those 3. And here it is, the bowling card of Karachi White. Sohail Khan, 3 overs, 24 for none. Dhani, 3 overs, 12 for 1. And then Arif can bowl 1, but I'm not sure whether he will. Definitely Aftab, I think he will be the one to bowl the 3rd seamer. You do not want the spinners to bowl in the end. Where's the impact? Where he's given him? I was saying where's the impact, but it was way too full. Maybe on the off stump. Khalid Usman has been sent back. Yes, the key was the length. Full, absolutely yorked him. And Khalid Usman was looking for length. The way he stationed himself with his feet. Now just check of the front footage is perfectly fine. Now when we come back to the batter, just see, goes back and across, wanting a length. And that can be something which is debatable, but the umpire gives it out, and that's good enough for Karachi. They will take it. Dhani, the credit for this bowling this length goes to him. And I think Khalid Usman made it clear to the bowler that I'm looking for a length, the way he stationed himself, but now he's gone. 10 of 11 he got, and further treble for Abbottabad. Captain walks out, Yasir Shah. The moment it hit Khalid Usman's pad, just had a feeling that the impact is outside. And with my 1,500 rupees specs, I could tell the impact is outside. He's a little unlucky there. That means
You do not need expensive glasses to make decisions after watching the replay. To make good decisions. After the replay. Well, I felt, that's what I said. I said I felt the impact was outside because the way he went across and out. Yes, but the point is that umpire doesn't have the luxury of a replay here, and also no DRS available. So at times, it's not easy to make out. We have this luxury to watch the replay and then comment on it. Dhani, important that he finishes this over really well. Gone. Captain goes. First ball. Eyes wide shut and a wild swing. Is this the moment? Whatever was left, the hope for Abbottabad, probably walks back with Yasir Shah. Yes, absolutely wonderful scenes here for Karachi and Dhani. He's bowling within the stumps and the very... See, oh, well, has he overstepped? We'll have to double check that. It seems as if he has overstepped, or has it just landed inside the line? I think he has landed. So he is clear of that, but very, very minute margin here. Thankfully for Karachi, it won't be a no ball, and Yasir Shah is gone. Bowling within the stumps means you miss, I hit, and that's exactly what happened. And I thought if Dhani was appealing for this after getting him bowled, that's how excited he is. And Sikandar, this is what a good crowd does to a game. It gets the players excited, and the whole Karachi team is pumped up. They have been brilliant in this game and throughout this season. If we talk about the Karachi team and their season, they've played all the three finals, all three formats, 4 days, 1 days in Pindi, and now here in the National T20, they're on the verge of winning another final. They could have been a hat-trick had they won that one-day competition final, but 2 in 1 season and playing 3 finals speaks volumes of how well they have done throughout the season. Their players, their sports staff, the coach, they all must be a very proud bunch of their performance. Shahnawaz Dhani on a hat-trick, will be the second one in the tournament. Nisar got one in the Super 8, and here Shahnawaz Dhani has an opportunity coming round the wicket to the new batter Yasir. Captain, give him a slip. It's a hat-trick chance. Goes down to third. Coming back to Yasir Shah's dismissal, I just feel a slightly irresponsible, wild swing. You have a batter batting on 35 of 20 balls, Etisaz at the non-striker. And notice, Salman, his reaction once he saw his captain losing his wicket. Because he's dying to come on strike and do something for the team. Just keep watching the non-striker. Yeah, and he has a very valid reason to do that. This gesture comes from knowing that you are hitting the ball well. You're already on 35, watching the ball like a football, and then your most senior player, your captain, decides to take charge himself on the very first ball. Makes no sense at all. That is extremely well bowled. How good Dhani has been with his line and length. It has been a pleasant surprise. And he has improved everything starting from the 4-day season till now. And 46 more required of the 14 balls. 2 balls left for Dhani to bowl. And Karachi required 2 wickets to win this game. I'm just being told that Karachi Whites will have their first ever win in a National T20. They've been in the finals 5 times. Karachi Blues have won it, but it's first time for Karachi Whites. So it will be 5th time lucky for them. Well, now it's 13 balls and 15 runs. 111. Nelson is the score of Abbottabad for 8 down, and Etisaz, the set batter, 36 of 21 is facing. Yeah, he wants to keep strike as it's the last ball of the over. Now he's got 12 balls. How many of them can he face?
and what damage can he impose. 112 for 8. I am not sure how do you look at it, but I'm not a big fan of chasing in an all-important final. It just doesn't go well. If your strength and your weakness is batting or bowling, whatever, as a captain you understand, I feel it's more condition-dependent decision that you will go out and chase. In a final, why wouldn't you go out there and post a total and put them under pressure? Yes, I agree with that to an extent. If you have a batting like England, then it's fine. Then you prefer your powerhouse to go and deal with the pressure. But in case of Abbottabad, with a very fragile young batting lineup, dependent largely on how Fakhar Zaman and Kamran Ghulam go, then that decision in a final puts them under pressure once you have a decent score on the board and you have the likes of Sohail Khan and Dhani bowling with the new ball. Which more the reason then? Now he's put them under pressure, the fragile lineup, to chase. Well, that's what I mean. He should have thought well before taking that decision. He had a chance after winning the toss, but he chose something else. Karachi, we've seen a couple of seasons ago in the PSL, 95% of the sides playing that evening game were winning chasing, and it was an absolute no-brainer. The record was saying, so the captains were following the same trend, and it was heavy dew because of a different time of the year. But last night's dew today brought both the captains with such clarity that they want to chase if they win the toss. It's in Karachi, it's never sure shot, because the moment wind starts to blow, then the dew is going away. At the moment, Abbottabad need a 4 of every ball from here onwards. Well, that will go to the boundary. That's the first one out of the 11 that you're asking for. But Sohail Khan, with the seam up, has been brilliant. He's been accurate, he's been swinging the ball and not allowing any room to the batters. Then suddenly he tries to bowl a leg spinner. And this is something which has been struck today. When you are bowling a slow one and you're short in length, the batters have put it away easily. So he needs to avoid that for the next 2 or 3 deliveries, and Karachi will be safe. They already are, but you don't want to give in any sort of hope in the last over, knowing that a youngster will be bowling the last over. Ten balls, 40 runs. He'll go for one. He wants to come back on strike. He'll take the chance. No, the partner says no. Direct hit. He's appealing for it. But the bails are on. It's not the direct hit. He's appealing for obstructing the field, and that's more of a naughty appeal than a serious one, because the batter ran back and he did not have the time to see where the ball was coming. And now Azam Khan is serious with that appeal, and the umpires are going to deliberate. And this will be interesting, because Azam thinks that the batter deliberately came between the ball and him. Well, since he's appealed for it, the umpires have the duty to have a look. If you don't appeal, they won't. So this is for obstruction. If he's ball watching the batter, then he's in trouble. But if he's got his back towards it, then he has all the right to get back into his crease. So the batter Fayaz, he definitely awaits the decision whether he is going to play or not. And there it is, the run between the wicket. There we see Atazaz call for the second, then turn it down, and look at just... No, I think Fayaz was just trying to save himself from the ball rather than obstruct the ball. That seems as if it's not intentional at all. Yeah, the umpire gives it not out. It was pretty clear. High in the air and it's very straight and very strong. Maximum there. Fayaz pulls one out of nowhere. That is huge.
That is powerful, and that is straight as an arrow. Hits the screen. What a great shot. Where have you been, Mr. Fayaz? Abbottabad has been needing this kind of stroke making since long. Right in the slot. And Fayaz, to everybody's surprise, puts it over the head of the bowler for a straight 6. 33 of 8. How about he gets a boundary or two in the remaining balls of the over? If you take the 50 from Khurram Manzoor out of the equation, there are quite a few performers in this for a player of a match. Oh, again! What's happening here? In the slot, and it's been put away. It's even longer. Again, this time a touch shot, but it makes no difference. A beautiful swing of the bat, hits it in the middle and puts it away into the stands. Fayaz is showing some talent with the bat over here. Something Karachi would not have known. And I'm sure a lot of the people in the ground here today are witnessing some special hitting from Fayaz. It's not easy to hit a bowler like Sohail Khan at this time, under pressure. But look at his head, so still, eyes on the impact. A beautiful bat swing, like a golfer. The over started with a dot ball, then a boundary, a single, then a 6 and a 6. Can he finish it off with one more and leave as less as possible for the last over? Pulls one away. Oh, just drops short. And he will keep strike, Fayaz. So the last over now, right in front of us, with 26 to get. Full marks to Abbottabad, the way he's fighting it down to the wire, keeping the interest alive, although 26 will not be easy at all. He will require to do the unexpected. He will be required to do something extraordinarily special, something miraculous. But see those 2 sixes, put some life back in the game. Wonderful straight shot, and then one over long on. Both brilliant hits, and one longer than the other. Stunning Sohail Khan. He did not expect this kind of treatment from a guy batting at number 10. The 19-year-old has been given the responsibility to bowl the last over. He's got to safeguard 26 runs in the all-important final. Shahnawaz Dari is done with his overs. So is Sohail Khan, and so is Anwar Ali. One thing is for sure, the way he has played those strokes, he's going to look to go straight. So they need their best fielders, and they have them. Anwar Ali on long on, Ahmad Alam on long off. The cow corner is Umair bin Yusuf. The 3 best catchers and ideal fielding. Now the bowler just needs to bowl that off-stump Yorker line. And if he gets it right, he will make it very tough for the batter. Now he's bringing in Anwar Ali. So there is no long on. He's pushed back third. That means he will be bowling wide Yorkers now. That is what the field suggests. Swings hard, goes maximum. First ball, pressure on the 19-year-old. Are we watching a miracle happen over here for Abbottabad? What supreme hitting this by Fayaz. He's on to 21 of 6 balls, and last 4 balls he's hit 3 sixes, and all straight. 1 over mid-off, 1 over long on, 1 straight over the bowler's head, and all very strong and big hits. And then look at the strike rate. 350 is the strike rate. He is going great guns, and Abbottabad do require great guns. Nothing short of that they require. And Fayaz, he's definitely got the momentum going. The execution of the Yorkers will be very important. Slower one. No ball. Oh, chance for a run out. They're coming back for the second. Oh, this is really, really untidy from Karachi Whites. Feeling the pressure, and a no ball here. The young man is feeling the nerves.
Well. The game is on now. It's 3 runs off this ball and a free hit now. Somebody needs to keep talking to the young boy. Every ball. Anwar Ali is doing that. The captain needs to calm down. Definitely overstepping, and good on the umpire. Under pressure, he took that decision by himself, not the third umpire. So this is good umpiring. And Abbottabad having the presence of mind to run to. Anwar Ali did not back up. He was the fielder at long on, and he stayed where he was, allowing the second run to be taken. 17 to get off 5 balls, and this is a free hit. Go on, swing. Missed. Rare dot ball. He's looking for a wide. He's asking for a question. They're running for runs again. I don't know if the ball was dead. Was Azam Khan trying to go for a run out? No. Well, I think that's a dead ball. And the umpires have now both started consulting, and I'm sure that they will call the batter back. And it's going to be a dot ball. Still 17 required of 4 balls. So it's just the perfect line according to the field. This is the line and the length that he needs to bowl. Once again, here is the ball. Outside off, and there we see it was a dot ball, and Azam Khan just throwing the ball, and it's all dead by then, surely. And the batter trying to take advantage, which wasn't on. Yeah, the ball before that, umpire Faisal Afridi sent the 12th man back, refused the change of gloves. Immediately when Fayaz missed that ball, he started pleading for a fresh pair. He's got one now. He's got a big edge. Where's that going? Where's that going? Into the hands. Dismissed. Wicket. Danish Aziz takes the catch, and a sigh of relief for the Karachi captain. It's taken finally. Fayaz goes after a cameo, bringing life to the game again. But this time the youngster Aftab takes his wicket, gets his second of the game, and also ensures some... It's fine, Sikandar, everything is fine, relax. The foot is fine. And he succeeded because the line was good. It was according to the field that he had set, bowling it outside, going across the batter. A gentleman, I think he has got more helmets. Goes for 23 of 9 balls. Brilliant hitting from him, and now it's 3 balls, and they require another 17 runs. Yeah, the new rule tells you that the new batter will face. There's no crossing. So Etazaz on 42 of 25 remains at the non-striker. And this is the last wicket. What would the bowler be told? The game is within reach. Do not overstep. I think everybody coaching now needs to go away. Leave him alone. You just can't pour too much information on a youngster. All right, he got hit for 1 ball, 6, but then I think he's recovered well. Just bowl within the stumps now. You miss, I hit. He can do that. That was very close to that wide indicator line. But he just needs to bowl within the stumps. Do not try anything special, or do not try to bowl very fast at the moment. Yeah, rightly so. The umpire, it was right on the line. Swings just over the fielder at short third. Will go for a boundary. Just over. So they've kept us interested till the very last ball. 2 sixes of 2 balls required now for the Abbottabad team to do the miracle. And it's just the length. It's just the length which is not okay. Aftab needs to bowl full. It's a tail-ender batting. With the third man up, if you bowl length, then there's every chance that this happens again. Thick edge going over him. "12 of 2.
Hits it straight, hits it very straight. Ahmad Alam comes across, just a one. They need 11 of the last ball. So technically Karachi are the champions now. If nothing bad happens in terms of a wide or a no ball in any case, or in any big hit case, Karachi will be the champions. It is National T20 Cup 22-23, and for the first time Karachi Whites are on the verge of lifting this trophy, and they've had special performances from a number of players. Khurram Manzoor, the guy playing since the start of the National T20 Championships in Pakistan, scoring the 50 in this game. Last ball, swings it, over cover. There is no boundary, and the National T20 2023 is being lifted by Karachi Whites for the very first time after making 4 attempts before that, and they have finally emerged victorious. Played like champions in Karachi Whites after being in the final of the 4-day and winning it in the final of the 1-day. Couldn't make it all the way, but in the National T20 they have played like champions and won it in front of the home crowd here at the National Bank Stadium. And what a performance by their bowlers and fielders to defend not so high total, and they have managed to save it by 9 runs tonight here in Karachi. Great scenes there, a side winning a trophy for the first time. Look at these happy faces. Whole team, whole sports staff are together, and why not? They've played like champions and they've defended like champions today. They've taken great catches, made good decisions, and the bowlers have backed up with good line and good length, resulting in a victory, which is special to Karachi Whites. It is their first time, their 5th time lucky, playing the final 5 times, and eventually the 5th time they've ended up as the winners. Look at that. Their sports staff, the coaches, the analysts, all players are happy, and they have been marvelous throughout this season. They've won the Qaid-e-Azam trophy. They were in the finals of the Pakistan Cup, and National T20 champions. They've emerged as champions again. So they won 2 out of 3 big competitions of the domestic cricket this season, and that certainly is a brilliant performance. Both the teams shaking hands now, and everybody has a smile on their face, which is great to see. In the end, cricket wins. All these players represent Pakistan every now and then, here and there, and the spirit of put in this season, and obviously camping before that. And now Dhani has all the people, all the cameras after him. He loves taking pictures, and now there's every reason to keep taking them. Champions Karachi Whites will have a celebration, of course, and why not? Asad Shafiq has led them well, and they will lift their captain up. He's at the twilight of his career, and he's played so much cricket for Pakistan. 10 years at a stretch, the test side, still got a lot of cricket in him. I wonder if Azam was leading, how many people will try fancy picking him up like this? This is because of his lightweight that everybody is fancying lifting him. I guess he'll Great pick scenes everyone. there, getting ready for the team huddle, and definitely a moment of joy for the whole staff and the players. And look at Azam Khan, he is jubilant, he is enjoying to the fullest, and why not? He has been an integral part of this campaign of the Karachi Whites team, played brilliantly, won them
the games with his bat and with his keeping. And look at him dancing in the middle. So is this some Sindhi dance going on, or the Karachi special cultural dance or something? Oh, that's a dance of his own. He's created that just now. But yeah, surely have all the reasons to celebrate every moment of it. That's brilliant. That is wonderful to see, and rightly so. Congratulations to the whole city of Karachi, because the home crowd came in, wanted their home team to win, and they have responded like champions, winning this tournament in style. And now the winning calling card of the champions. Sohail Khan 4 overs 42, Dhani 4 overs 16 for 3. That was a special spell. Anwar 4 overs 26 for 2, and he picked up Fakhar Zaman, which was the wicket to take. Aftab 4 overs 30 for 2. They were all brilliant. Arif bowling 1 over, and Danish 3 overs 18 for 2. All were exceptional, defending a total which wasn't very much. Let's go down for the flash interview to Dhani, who was special tonight. Well, what a thriller of a final this was between Karachi and Abbottabad, with Karachi coming out on top with the trophy. And I've got one of the players from the champions team here with me, who bowled an absolutely brilliant bowling spell, taking 3 brilliant wickets at Shahnawaz Dahani. सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो. इस वक्त आपके इमोशंस और एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली बहुत हाई हो रहे होंगे, तो ज़रा वो हमारे लिए डिस्क्राइब करें. जी बिल्कुल, बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि कराची कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में का भी चैंपियन बना और नेशनल T20 का भी चैंपियन बना, और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, और चैंपियन बनने इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती. डेफिनेटली. अच्छा, शुरू में आप लोगों का थोड़ा सा रफ स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप लोगों की बॉलिंग और जो फील्डिंग थी सेकंड इनिंग्स में, उसने मैच का रुख बिल्कुल ही बदल दिया आप लोगों की तरफ. टू बी ऑनेस्ट, रन्स ऑन द बोर्ड इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन यही था कि अर्ली सर्कल में हमें विकेट्स लेने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें सक्सेस मिली. और हमने बैड बॉलिंग नहीं की, काफ़ी अच्छी फील्डिंग की है, और ये क्रेडिट सारी बॉलिंग लाइनअप को जाती है और फील्डिंग को, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से हम चैंपियन बने हैं. अच्छा, विकेट पे अभी भी मॉइस्चर था, हमने देखा था, तो बॉल अभी भी स्विंग करी थी, उसमें मूवमेंट थी, तो वो उस चीज़ ने आपको हेल्प किया? कैसे हेल्प किया? जी बिल्कुल, हार्ड लेंथ में बहुत मुश्किल बल्ले पे आ रहा था बॉल, और ये था कि 10 ओवर के बाद रिवर्स अच्छा हो रहा था, और उनमें हमने विकेट्स ली और अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन बने. अच्छा, लास्टली ये ऑब्वियसली आप लोगों ने अपने कैप्टन को गिफ्ट दिया उनकी रिटायरमेंट से पहले, असद शफीक की रिटायरमेंट से पहले, तो आप लोग अब कैसे सेलिब्रेट करेंगे? जी बिल्कुल, असद भाई के कैप्टनसी में बहुत मज़ा आया, और बिल्कुल वो लेजेंड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ खेलते हुए बड़ा एंजॉय किया. टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मैंने, और सारा टीम जेल था. ये उसी का नतीजा है, क्योंकि आपका जो लीडर होता है वही सब कुछ मैनेज करता है, इन द फील्ड आउट द फील्ड, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा माहौल दिया हमें, और माशाल्लाह आज चैंपियन बने.
चलिए वेल मैं आपको और देर नहीं रखूंगी, आप जाइए सेलिब्रेट कीजिए और फिर से आपको बहुत बड़ा बिग कंग्रेचुलेशंस ऑन टेकिंग दिस थैंक यू ट्रॉफी। सो मच, थैंक यू सो मच। So here we are. They're going to honor their captain who was playing his last tournament. It was his last game and he's ended up on a high, winning the tournament for Karachi Whites as captain. It is a very proud moment for him and it's an honor for any player when his teammates stand up and salute his efforts, and that is brilliant to see. Asad Shafiq deserves all of that, playing wonderfully for Pakistan and for Karachi and for every team that he has featured for. These are great scenes and great honor. Now we'll move towards the highlights, how Karachi became champions. You'll just see in moments. The umpires showing the new ball. And then Sohail Khan started and came down Fakhar Zaman, but then came the wicket. This brilliant take lifted the Karachi efforts. Look at that. That was a great catch. And then Fakhar Zaman, who was pretty edgy tonight, a couple of boundaries here and there, but it did not deter the Karachi bowlers. And then we saw some fine swing bowling, getting wickets, and this was special. Slower one, Fakhar Zaman down on his knees, losing his wicket, and then the wickets just kept coming, and Ahmad Alam was special with his catching tonight. He caught 3 catches, one of the best fielders. And then some resistance at the end, some boundaries, another wicket fell, and this time again it was Ahmad Alam. And you just could not keep him out of the game. And then Khalid Usman cutting a couple, Etazaz playing some good strokes. And then another wicket fell. This one, leg before, Dhani bowling full and straight and getting the reward. And then Yasir Shah missing one completely. And the boundary started to come. And here came Fayaz with his another powerful display of hitting. 4 sixes, bringing life to the game. And then eventually caught at deep covers, ensuring that Karachi had this victory. It was all brilliant from Karachi. The whole season, they have been outstanding in all the 3 formats and eventually finishing on a high, winning this tournament. And then we saw this dance. I don't know where it came from, but certainly Azam Khan leading the way and the whole team enjoying every bit of great performance that they put on. And in the end, it was an honor for Asad Shafiq, given to him by his teammates. And then the match summaries on your screens now. Karachi Whites batting first, scoring a moderate 155 for 9. But on this pitch, it was a decent score with their bowling in the end proving too much for Abbottabad team. And Khurram Manzoor, probably the most experienced player in the circuit, 50 he scored in the final. Umair was 36 of 30 and Danish a valuable 22 at the end. And Shahab once again took 4 wickets, which was brilliant on his part. 2 each to Adil and Fayaz. And then Etazaz in the end 43 got. Fayaz was impressive and also a surprise package. But in the end, these runs proving too much for Abbottabad. And now we will take a break and be back for the presentation.
Hello and welcome to the post-match presentation of the final of the National T20. And what a game we've had, and eventually, for the first time, Karachi Whites will lift the trophy in a while. They won this match and beaten Abbottabad by 9 runs here at the National Bank Stadium. Got a long list of awards and I've got a long list of guests alongside me. And start introducing them from my left. Mr. Junaid Zia, SGM, Domestic Cricket, Pakistan Cricket Board. Next to him, Mr. Nadeem Umar, owner, Quetta Gladiators. Mr. Wahib Aslam, Regional Business Head, South Jazz Super 4G. Mr. Ramzan Ali, Managing Director, AH Group of Companies. And Mr. Amir Nawab, President, Abbottabad Region. I'll request Mr. Junaid Zia to please step forward and give away the medals to the match officials. I'll name you out, and one by one you can please come and collect your medal. Starting with the match officials, field umpires, Mr. Faisal Afridi and Mr. Imtiaz Iqbal. The TV umpire, Mr. Waleed Yaqub. And the fourth umpire, Mr. Imran Javed. Thank you, Junaid. I'll now request Mr. Amir Nawab to please step forward and give away the remaining medals to the match officials. And I will request Mr. Iftikhar Ahmed, the match referee, to please step forward. Salman Hussain, the official scorer. And Syed Imran Ali, the press scorer. Thank you, Mr. Amir Nawab. Now I'll request Mr. Ramzan Ali to please come forward and give away the AH Group Outstanding Performance Cash Award for this final. That's 25,000 rupees to Anwar Ali for his 4 overs, 26 runs and 2 wickets. Brilliant performance from Anwar Ali, bowling those valuable 4 overs, defending not so big total. Now I'll request Mr. Wahib Aslam to please come and give away the Jazz Super 4G Player of the Final Match and Trophy Catch Award of 50,000. And that goes to, well, I haven't even announced the name. Shahnawaz Dhani. 3 wickets and 16 runs. दानी आपको पहले से पता था कि आप प्लेयर ऑफ द मैच है, मैंने तो नाम भी अनाउंस नहीं किया आपका. कैसी रही परफॉर्मेंस आज के इस फाइनल में? जब हाफ वे थ्रू गए, इतना बड़ा टोटल नहीं था, क्या इंस्ट्रक्शन थी कप्तान को बॉलिंग यूनिट को? जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन हमने बॉलिंग करने से पहले हमारे कैप्टन असद भाई ने हमसे बात की कि अर्ली विकेट्स थ्रू हमें विकेट्स मिलने चाहिए, तो तभी वो टीम को हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन अच्छी थी. तो बिल्कुल हमें सर्कल में विकेट्स मिली, तो उन पे प्रेशर आता रहा और हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की माशाल्लाह, विकेट टू विकेट, और बहुत अच्छी फील्डिंग की माशाल्लाह. आपकी जोड़ी जो सोहेल खान के साथ नए बॉल में पावर प्ले में बनी हुई, अच्छा कॉम्बिनेशन रहा आप दोनों का, दोनों एंड से बराबरी की बॉलिंग की है. जी बिल्कुल, मैंने 7 मैचेस खेले और सोहेल खान के साथ माशाल्लाह वो बहुत ही बड़े बॉलर हैं और उनके साथ मुझे सीखने का भी काफ़ी मौका मिला, और बिल्कुल उनसे बात होती रही और विकेट टू विकेट बॉलिंग की, जहाँ पे विकेट हमें सपोर्ट कर रही थी, तो उस लेंथ पे हमने हिट किया तो हमें सक्सेस मिली. 16 रन भी बनाए, 3 विकेट भी ली. मुझे लगता है कि आप क्राउड का वेट कर रहे थे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के लिए. जी बिल्कुल, थैंक यू. शानदार परफॉर्मेंस, वेल डन. ओके, दैट्स द प्लेयर ऑफ द मैच. More awards to be given away in terms of the tournament awards. I'll request Mr. Ramzan Ali to please present the AH Group Best Wicketkeeper of the Tournament Trophy and Cash Award of 250,000. That's to Sajjad Ali Jr. for 441 runs and 10 victims, representing Abbottabad. 441 रन और 10 खिलाड़ियों को आउट करने में उन्होंने मदद की. Sajjad Ali Jr., Best Keeper of the Tournament. I'll again request Mr. Ramzan Ali to please present the AH Group Best Bowler of the Tournament Trophy and Cash Award of 250,000 rupees.
And that goes to Shahab Khan from Abbottabad for his 25 wickets all round. He was the second highest before this match, but he took 4 wickets today and crossed Arif Yaqub. I will now request Mr. Nadeem Umar to please step forward and present the Mughal Steel Best Batter of the Tournament Trophy and Cash Award of 250,000. And that goes to Sahibzada Farhan for his 492 runs in the tournament for Peshawar. And the gentleman from Karachi Whites will collect it on his behalf. Shandar performance 492 runs Sahibzada Farhan tournament mein. Now requesting Mr. Wahib Aslam to please present the Jazz Super 4G Player of the Tournament Trophy and Cash Award of 250,000. And that goes to the captain of Peshawar, Iftikhar Ahmed. 395 runs and 18 wickets to his name, and Aftab will collect it on his behalf. Once again, I'll request Mr. Ramzan Ali to present the AH Group Runners-Up Cash Award of 25 lakhs and a trophy to Yasir Shah, the captain of Abbottabad. It's the first time Abbottabad made it to the finals, and well led by Yasir Shah. Wasn't the day today, couldn't finish on the winning side, but a very well led side with quite a few youngsters in it. Yasir se baat bhi karenge. Yasir, शानदार परफॉर्मेंस रही, खास तौर पे आपने टॉस जीत के जब बॉलिंग का फैसला किया, हाफ वे थ्रू ऐसा लग रहा था कि आपने पकड़ लिया है, क्योंकि ये स्कोर गेटेबल था। स्कोर तो गेटेबल था। यहाँ पे जिस तरह हमने हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, ज़बरदस्त बॉलिंग की, और जो प्लान दिया था उस पर बॉलिंग की ज़बरदस्त। आज खास तौर पे फील्डिंग पे भी काफ़ी जोर लगाया टीम ने। जो आपने ओवर नंबर 13 से 14 में 3 विकेट्स लिए, 3 कैच हुए हैं, पूरा मैच पलट गया था। हाँ, ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हम पूरे टूर्नामेंट में। अगर देखें तो हमारे प्लेयर्स अच्छा खेले, हमारे सारे काफ़ी प्लेयर्स नए प्लेयर्स थे जिसके इस टूर्नामेंट में डेब्यू हुआ है, लेकिन सब ने अपनी फील्डिंग भी इम्प्रूव की और देखा है फाइनल में कोई प्रेशर भी नहीं लिया। जिस तरह उन लोगों ने फील्डिंग की, ज़बरदस्त रहा। दोनों कैप्टन्स ने टॉस पे कहा था कि हम चेस करना चाहते हैं, क्योंकि कल ड्यू देखी गई थी। आपको लगता है कि ड्यू आज नहीं आई, ये फैसला शायद थोड़ा सा गलत हुआ पहले बॉलिंग का? नहीं, फैसला गलत नहीं है। स्कोर इतना नहीं था, 156 रन। अगर आप T20 में देखें तो जहाँ पे अगर आप देखें ड्यू था आज, इतना वो मतलब ज़्यादा नहीं था, लेकिन कम था, लेकिन था ड्यू। लेकिन ठीक है, 156 हमें चेस करना चाहिए था, लेकिन होते रहते गेम का हिस्सा है। एज कप्तान, मैंने अभी जिक्र किया कि एबटाबाद पहली बार फाइनल में आया, आपने लीड किया और आपने खुद मेंशन किया कि यंग साइड है। ओवरऑल एक्सपीरियंस एज कप्तान कैसा रहा, और कोई ऐसे प्लेयर्स जो आपको लगे कि बहुत आगे जाएंगे? ज़बरदस्त रहे, क्योंकि हमारे जो नए प्लेयर्स आए, आदिल नाज है फास्ट बॉलर, फयाज़ है, और शहाब ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, साथ में बैटिंग में अफाक ने जिस तरह खेला है, अहमद खेला है, और जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, फ़खर जमान, कमरान गुलाम, ज़बरदस्त रहा है, गुड रहा। बहुत शानदार कप्तानी, और आपकी टीम को मुबारक हो, फाइनल तक आए। हार्ड लक टुडे, बट ब्रिलियंट क्रिकेट, रियली एंजॉयड यू गाइस वाचिंग प्ले। थैंक यू। यासिर शाह, कप्तान एबटाबाद के, रनर अप in the National T20. Now I will request Mr. Wahib Aslam to please present the Jazz Super 4G Winners Cash Award of 50 lakh rupees to the captain of Karachi Whites, Asad Shafiq. Shandar performance, Asad Shafiq as captain, of course, the team winning the cup for the first time. We'll give you the trophy. आपसे पहले बात करेंगे, बल्कि इससे पहले कि आप जाए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। नदीम उमर साहब ने मुझसे अभी कहा कि आपके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ऑल राउंड सर्विसेज पाकिस्तान के लिए, आज की जीत, आपने अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे आए हैं, वो आपकी सर्विसेज के लिए आपको फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड उमर एसोसिएट्स आपको 10 लाख रुपए का अवार्ड दे रहे हैं। यू कैन गो एंड शेक हैंड्स इफ यू वांट। थैंक यू नदीम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। असद, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही, सेल्फ बिलीफ नज़र आया टीम में। हाफ वे थ्रू बात हो रही थी कि शायद 20-15 रन कम है। जी बिल्कुल, जब मैच स्टार्ट हुआ था और हमने बैटिंग शुरू की थी तो हमारे माइंड में यही था कि अराउंड 170 अच्छा होगा टोटल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में जो है वो बैक टू बैक विकेट्स गिरी, उसकी वजह से जो है वो हम अचीव नहीं कर पाए। लेकिन जाने से पहले हमने यही बात की थी कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, अगर हम अपने फुल पोटेंशियल पे बॉलिंग करेंगे तो हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। की फैक्टर आपकी नज़र में क्या रहा आज की इस जीत में, जब हाफ वे थ्रू हो चुका था मैच? देखें, नए बॉल से हमने जिस तरह बॉलिंग की है सोहेल खान ने और दानी ने, क्योंकि हम अगर उनकी टीम को देखें तो ऊपर से रन जो है वो ज़्यादा हो रहे थे इनकी टीम में,
तो हमारा ये प्लान था कि अगर हम ऊपर से आउट करते हैं नए बॉल से तो हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा काम। तो स्टैंड अप किया हमारे फास्ट बॉलर्स ने और सज्जाद को आउट जो किया हमने, तो वहाँ से जो है थोड़ा बैकफुट पे हो गए वो लोग। आज आपकी कप्तानी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रही थी। वी सॉ कि आपके पास जो भी डिसीजन आप ले रहे थे इट वाज वर्किंग, बॉलिंग चेंजेस हों या उसके अलावा आप बैटिंग ऑर्डर में भी तब्दीलियां थोड़ी आगे पीछे आई, तो एक दिन आप कहेंगे ऐसा होता है कप्तान का कि कुछ गलत नहीं कर रहा होता। जी जी ऐसा होता है कोई कोई दिन, लेकिन देखें जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी, जो विकेट डिमांड कर रही थी, वो स्पिनर्स का बॉल जो है वो बेहतर आ रहा था बैट पे। तो यही मैंने प्लान किया कि फास्ट बॉलर का बॉल थोड़ा सा स्विंग भी हो रहा था, हल्का सा कट भी हो रहा था, तो फास्ट बॉलर्स को हिट मारना मुश्किल हो रहा था। तो आफ्ताब से जो है फिर वो ओवर करवाया, फिर साथ हमारे फास्ट बॉलर जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, जबकि थ्रू आउट हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते जा रहे थे, लेकिन आज के दिन को उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि आज के दिन स्पिनर्स के लिए कोई ख़ास नहीं था। कराची वाइट्स ये ट्रॉफी पहली बार जीता है, ये महज इत्तेफाक नहीं है, एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। 4 डे में फाइनल खेला, 1 डे में फाइनल खेला और यहाँ भी फाइनल खेला। इसका सहरा किस चीज़ को देंगे आपके, ये कंसिस्टेंसी अक्रॉस फॉर्मेट्स टीम दे रही है? जी इसका सारा किसी एक बंदे को नहीं जाता, इसका सारा पूरा KCCA को जाता है। जिस तरह से KCCA ने थ्रू आउट हमें सपोर्ट किया, इसका सारा सारे प्लेयर्स को जाता है कि सारे प्लेयर्स ने जिस तरह स्टैंड आउट किया। यंग प्लेयर्स थे हमारे 2-3 की प्लेयर्स जो पाकिस्तान की टीम के साथ बिजी थे, तो हमने यही बात की थी कि नए लड़कों के लिए आज जो है इस टूर्नामेंट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और यहाँ पे परफॉर्म करें। तो सब ने स्टैंड अप किया और सब ने शोकेस किया कि व्हाट टैलेंट दे गॉट। आपका ज़बरदस्त करियर रहा है पाकिस्तान के लिए भी, ऑफ कोर्स आप डोमेस्टिक भी अभी खेल रहे हैं। हाउ डू यू फील लिफ्टिंग दिस ट्रॉफी एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ एंड ऑफ कोर्स द पीपल हु स्टेड बैक टू सपोर्ट यू एंड योर टीम? जी बिल्कुल, कराची में और नेशनल स्टेडियम में आके फ़ाइनल खेलना और फिर ट्रॉफ़ी जीतना और कराची की कैप्टनसी करना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि मैं कैरियर में थ्रू आउट मुझे सपोर्ट मिलती रही है कराची की तरफ से, और एक तरह से हैप्पी एंडिंग कहूँगा मैं इसको। खास तौर पे नजर आता है कि किस तरह विनिंग कॉम्बिनेशन रही। आप लोगों ने काफ़ी प्लेयर्स अपने लूज़ किए जो नेशनल ड्यूटी पे चले गए, तब भी इस टीम ने वो मोमेंटम लूज़ नहीं किया जो आज नज़र आ रहा है ट्रॉफी की शक्ल में। जी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यंग प्लेयर जिस तरह उमैर बिन यूसुफ है, अम्माद आलम है, आफ्ताब है, इन्होंने जिस तरह बैटिंग की, बहुत मैच्योर बैटिंग की। 2020 में जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट्स थी उस तरह से बैटिंग की, किसी एक मोड में बैटिंग नहीं की। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं ईज़िली जा सकता हूँ टीम छोड़ के, क्योंकि मुझे लगता है कि कराची की क्रिकेट बहुत अच्छे प्लेयर्स के हाथ में है। चलिए अब आपको और आपकी टीम को और वेट नहीं करवाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर वाहिब असलम को तो प्लीज कम फॉरवर्ड, और असद प्लीज आप जाइए एंड यू टेक एंड पिक अप द डिजर्विंग ट्रॉफी एंड मिस्टर वाहिब असलम विल प्रेजेंट द जैज़ सुपर 4G winners trophy to the captain of Karachi Whites, the champions of season 2023-24. Karachi Whites lift the trophy, winning this final by 9 runs against Abbottabad, and a moment to celebrate for the whole side in the home ground, and we'll let the whole team enjoy that. Played brilliant cricket all round throughout and emerged victorious out of the 18 teams that participated in the tournament. And finally, Karachi Whites at home winning this trophy, and they've done a consistent performance, lifting the Quaid-e-Azam trophy, runner-ups in the Pakistan Cup, and the national T20 belongs to them. We'll let them enjoy, and we'll let you enjoy the winning moments of this side, Karachi Whites.
There's Umar bin Yusuf with 401 runs. Most definitely, they deserve this trophy more than ever. Coming into the finals 5 times in the competition, but making it to the finals and winning this one. Right then, it is all we have for you from this season of Pakistan Cup, Pakistan Cricket Board Domestic Season 2023. It is goodbye from us. Thank you for joining. आलम ने इस मरतबा खतरनाक अंदाज से खेला और आउट हो जाए। High in the air, you can't drop these, it's the final, and he's taken that, wow! जोरदार अपील और आउट हो गए कामरान गुलाम। आफ्ताब इब्राहिम ने कराची को ब्रेक थ्रू दिलाई। Down the wicket. बोल्ड कर दिया यहाँ, स्लोअर ऑफ कटर। Last ball, swings edge, over cover. There is no boundary, and the National T20 2023 has been lifted by Karachi Whites for the very first time after making 4 attempts before that, and they have finally emerged victorious.